समझिए कि मैं शुरू से कह रहा हूं कि जो रेडिकलाइजेशन हो रहा है मेजॉरिटी कम्युनिटी में, इस पर कोई यकीन नहीं कर रहा है। बराबर रेडिकलाइजेशन हो रहा है। अगर बीजेपी चुनाव पे चुनाव जीतते जा रही है और इस मसले को बीजेपी नहीं देख रही है तो बीजेपी देश की खिदमत नहीं कर रही है। ये कौन है? अगर ये जो कल जो लोग हत्या किए, अगर इनका ताल्लुक उत्तर प्रदेश सरकार से नहीं है, मैं सवाल उठा रहा हूं, मुझे नहीं मालूम है नहीं है, अगर नहीं है तो फिर ये रेडिकलाइज कैसे हुए और इतना वेपन उनके पास कहां से आया? ये कोई कट्टे नहीं थे, एक साथ मारे जा रहे हैं और कहीं पर भी वेपन ब्लॉक नहीं होता उनका हाथ देखिए आप। ये रेडिकलाइज एलिमेंट से अगर ये उत्तर प्रदेश की सरकार से नहीं है तो ये रेडिकलाइज, हाईली रेडिकलाइज्ड है और बीजेपी इसको ब्रश असाइड करती है। नहीं कुछ हो नहीं रहा है। अरे भाई कैसा नहीं हो रहा है? देखो ना ये लोग कौन है। गोली मारकर कौन सा रिलीजियस नारा क्यों लगाते आप? इनको आप आतंकवादी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? देशभक्त कहेंगे इनको आप? क्या इनको आप फूल का हार पहनाएंगे ले जाकर ये लोग? और जो लोग टीवी के स्टूडियोज में बैठकर जश्न मना रहे थे एनकाउंटर का, शर्म से डूब मरो तुम लोग वल्चर्स हो। अब खाओ उन लाशों को जो पड़ी हुई वहां पर। आप जश्न मना रहे थे ना एनकाउंटर का, अब देखिए क्या हो रहा है। ये क्यों आप भूल रहे हैं कि आज बीजेपी सत्ता में, कल कोई और होगा तो यही नंगा नाच चलेगा, यही इंसानियत के ऊपर ये बर्बादी होगी। जब क्या करेंगे आप लोग? जश्न मना रहे थे, मनाइए जश्न आज आप। हम यही कह रहे थे कि जश्न मनाओ जब जमहूरियत कामयाब होगी, जश्न मनाओ जब कोर्ट सजा देगा, जश्न मनाओ जब संविधान और मजबूत होगा, लोकतंत्र मजबूत होगा। मगर आप लोग जश्न मना रहे हैं कि हो गया एनकाउंटर। अब देखिए, पहले जब तक लाइव विजुअल्स नहीं आए थे, कई टीवी चैनल चला दिया, एनकाउंटर हो गया उन लोगों का। उसके बाद जैसे ही मीडिया के सामने पिक्चर्स आए कि मीडिया की मौजूदगी में एनकाउंटर हुआ, वो पूरे जो चील कौवे हैं खामोश बैठ गए। उनको समझ में नहीं आया कि अब कैसा उसका दिफा करें, कैसा उसको जस्टिफाई करें। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप समझिए इस बात को, एनकाउंटर सलूशन नहीं है, बल्कि मैं आपके जरिए से देश को याद दिलाना चाहता हूं कि यही इस तरह के सिलसिला शुरू हुआ था जब विश्वनाथ प्रताप सिंह के भाई की हत्या हुई थी 89 में। 1989 से सिलसिला चल रहा है जब ये टास्क फोर्स बनाई गई थी। हर किसी को आप मार देंगे गोली, तो फिर कोर्ट किस लिए भाई? अदालत किस लिए? अरे जो लोग जश्न मना रहे हैं, जो लोग एनकाउंटर पर भरोसा करते हैं, अरे भाई तुम सोचते क्यों नहीं हो कि गांधी के कातिल को कोर्ट मिला, इंदिरा गांधी के कातिल को कोर्ट मिला, राजीव गांधी के कातिलों को कोर्ट मिला, बेन सिंह के कातिलों को कोर्ट मिला, और आप एनकाउंटर कर रहे हैं। ये जो कल हत्या हुई है, इसकी पूरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर आयद होती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री में अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जिंदा है तो उनको अपने पद को छोड़ना पड़ेगा। और देश के प्रधानमंत्री से हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की जो आप बातें करते हैं, मुझे तो याद आ रहा है एक अंग्रेजी का एक है कि प्रधानमंत्री पॉन्टियस पायलट की तरह एक्ट कर रहे हैं। ही इज एक्टिंग लाइक ए पॉन्टियस पायलट। मेरी गाड़ी पर हमला हुआ, मैं जो कल देखा हूं नजारे को, पूरा मुझसे ऐसे हुआ था, पूरा उसी तरह के नारे लगा रहे थे वो लोग, उसी तरह से गोली चला रहे थे। यह अलग बात है कि मेरा टाइम नहीं था उस दिन, मगर हम समझ नहीं रहे हैं। हम खुशी मना रहे हैं कि मरने वाला मुसलमान है तो कोई बात नहीं, मरने वाला कोई और है, पॉलिटिकल अपोनेंट है, कोई बात नहीं। अरे भाई आप मारकर संविधान को, रूल ऑफ लॉ को कमजोर कर रहे हैं। आप हमेशा सत्ता में नहीं रहने वाले हैं, तारीख गवाह है।
जब आप सत्ता में नहीं रहेंगे कोई और रहेगा और उसी तरह की शैतानियत कोई करेगा तो तब आप क्या करेंगे? रोएंगे, पुकारेंगे। तो हम यह डिमांड करते हैं कि ये पूरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर आती है, क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में खड़े होकर कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे। देखो, आपने ये कहा ना, ये कोई जबान है एक देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री की, जो बीजेपी के लोग उनको नरेंद्र मोदी के बाद या उनसे पहले प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। शायद 2024 में बना देंगे या 29 में, नहीं मालूम, या प्रोजेक्ट कर देंगे। ये जबान है, एक मुख्यमंत्री की जबान होती है क्या? बताइए आप। नहीं, एक मिनट सुनिए, मुझे मुकम्मल करने दीजिए। हम डिमांड ये करते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। दूसरा में डिमांड करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक इन्वेस्टिगेशन टीम को बनाए, सुमोटो सुप्रीम कोर्ट ले, हम प्लीड करते सुप्रीम कोर्ट से। ये उसी वक्त रुकेगा जब नहीं रुकेगा, वरना ये चलता रहेगा। 4 दिन 5 दिन के बाद फिर शुरू हो जाएगा। और वो इन्वेस्टिगेशन टीम में सुप्रीम कोर्ट उन लोगों को रखे जिनका ताल्लुक उत्तर प्रदेश से ना हो, क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक इसमें लोग होंगे। कहां से इनको हथियार आया, किसने कहा उनको वहां पर जाओ, किसने उनको इस तरह की बातें कही, ये सब चीजें निकलनी चाहिए, टाइम बाउंड। और दूसरी चीज, संविधान में आर्टिकल 311 है और आर्टिकल 311 के तहत उन तमाम पुलिस ऑफिसर्स को निकालना चाहिए नौकरी से। सस्पेंशन नहीं, बल्कि अंडर संविधान के आर्टिकल 311 के तहत उनको सर्विस से निकालना चाहिए। जब इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट आ जाएगी टाइम बाउंड मैनर में, सुप्रीम कोर्ट के पास ये एक्स मुस्लिम एक्स एमपी गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट की जिम्मेदारी है, स्टेट ने देखिए क्या क्या हो गया स्टेट की मौजूदगी में। तो ये हमारा डिमांड है और हम उत्तर प्रदेश के बीजेपी की गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि जो मुस्लिम एक्स एमपी का हत्या की गई है, उनके 2 बेटे जुवेनाइल होम में, उनको छोड़े आप। आपके पास राइट है उनको छोड़ने का, ताकि वो अपने वालिद के, मरहूम वालिद के तदफीन में शामिल हो सके। इतना तो आप कर सकते हैं ना। दूसरा 2 तो खैर उसको बेल लेना पड़ेगा, कोर्ट भी जाना पड़ेगा। जुवेनाइल होम में है 2 बच्चे, छोड़िए उन लोगों को आप। ये ठीक नहीं हो रहा है, हम बोल रहे हैं बार बार, ये उत्तर प्रदेश के लिए ठीक नहीं है, देश के लिए ठीक नहीं। आज हर वो भारत का नागरिक, मुसलमान के साथ जो भी भारत पर फख्र करता है, वो अपने आप को कमजोर और गैर महफूज समझ रहा है। सर, आपसे कहा कि जो कल मंजर लाइव देखा गया, वो सबने देखा, लेकिन 1.5 दशक या 2 दशक पीछे जाइए तो इलाहाबाद की फिजाओं में अतीक अहमद के मुतालिक से इस तरह के कई वाकये देखे गए। एक वर्ग ऐसा है जो ये मानता है कि ठीक है सरकार की फेल्योर है, लेकिन ये काउंटर भी है जो उस समय हुआ, वैसा ये उसका काउंटर रिएक्शन है। पुलिस फेल हुई, लॉ एंड ऑर्डर फेल हुआ, वो अलग बात है, लेकिन जो इन्होंने काम किया था 1.5 दशक 2 दशक पहले, जो इलाहाबाद में महीने दर महीने इस तरह की घटनाएं इनके मुतालिक से, इनके गैंग, इनके गुर्गों ने किया, ये उसका काउंटर भी हो सकता है। क्या कहना? तो एक काम करिए ना, हम सब लोग अपने आप एक एक आंख को मार के अंधे हो जाते हैं। हम अपना, आपने कान काटा मैं कान काट लूंगा, आपने मेरा सर काटा मैं अपना सर काट लूंगा, आपने मेरी उंगली काटी मैं आपका हाथ काट दूंगा। कर दीजिए, और क्या रहेगा फिर? रूल ऑफ लॉ तो नहीं रहेगा। अगर कोई किसी का जुल्म हत्या किया है तो सजा दिलाइए उसको। आपको कौन रोक रहा है? स्पेशल कोर्ट बनाइए, टाइम बाउंड मैनर में इन्वेस्टिगेशन करिए। पॉलिटिकल पार्टीज क्रिमिनल का उनका पैटर्नाइजेशन ना करें, चाहे वो क्रिमिनल, चाहे मुसलमान हो, ठाकुर बरादरी का हो, यादव बरादरी का हो, या कोई बरादरी का हो, आप सबको लीजिए। अगर कोई एक आंख किसी आंख पे मारेगा तो हम दूसरी आंख ले लें क्या? फिर देश ऐसा ही चलेगा, मुल्क ऐसा तरक्की करेगा। और G20 का हम बोल रहे हैं कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी है भारत,
तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी में अगर हम जस्टिफाई करेंगे कि इन्होंने अतीक अहमद ने अपने जमाने में ये हुआ था उनके जरिए से, तो हम ये कर रहे हैं, तो भाई ये तो वो तो वाइल्ड वेस्ट भी नहीं होगा ये तो। नहीं, ये आप कह रहे हैं कि इसका जवाब है। अगर इसका ये जवाब है तो फिर संविधान को बंद कर दीजिए। क्यों बाबा साहब के पुतले पर जाकर फूल चढ़ाते हैं भाई? क्यों कॉन्स्टिट्यूशन डे हम मनाते हैं? क्यों हम हमारे आजादी के मुजाहिदीन को हम खराज अकीदत क्यों पेश करते? हम क्यों गांधी को इतना बड़ा नेता मानते? फाउंडिंग फादर ऑफ द नेशन, सबको खत्म कर दीजिए ना। आपने सर मेजॉरिटी कम्युनिटी के रेडिकलाइजेशन की बात की है, लेकिन माना यह जा रहा है कि रिवेंज किलिंग है, लेकिन आप कह रहे हैं कि मेजॉरिटी कम्युनिटी के रेडिकलाइजेशन। रिवेंज किलिंग, देखिए रिवेंज किलिंग हो कुछ हो, ये आप कैसा बता सकते रिवेंज किलिंग है? एक आदमी सुप्रीम कोर्ट को गया, एक मुस्लिम एक्स-एमपी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये स्टेट की कस्टडी में, स्टेट की जिम्मेदारी है, और स्टेट के कस्टडी में कैसे उन लोगों को पता चला कि ये 2 लोग वहां पर आ रहे हैं, और जो लोग वहां पर आए हैं अगर उनका ताल्लुक उत्तर प्रदेश की सरकार से नहीं है या है मुझे नहीं मालूम, अगर नहीं है तो फिर इतना वेपन कैसा लेकर आते और कैसे इतना करीब पहुंच के? ये तो कोई आम आदमी नहीं कर सकता ना कि रिवेंज अगर कर रहा है, ये तो प्रोफेशनल कोल्ड ब्लडेड मर्डर है ये, कि करीब जाकर सर पर गोली मारना, दूसरे के गर्दन पे मारना, और फिर गोलियों पे गोलियां चलाना, और उसके बाद एक रिलीजियस स्लोगन को लगाना और फिर कहना सरेंडर सरेंडर। अरे पुलिस एक गोली क्यों नहीं चलाई? एक गोली नहीं चलाई पुलिस। एक गोली मैंने क्या है भाई? इसका मतलब यह है कि आप किसी को गोली मार दो और बोलो सरेंडर सरेंडर, उसके बाद आप अपना स्लोगन लगा दो। भीड़ बहुत ज्यादा थी। हाँ भीड़, हाँ यही तो। अरे देखिए भीड़ बहुत ज्यादा थी तो आपके पास हैंड वेपन है, 20 सेकंड में कहां इस्तेमाल करेंगे सर? बिल्कुल करेंगे। आपको ट्रेनिंग दी जाती है, आपको नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम ट्रेनिंग दी जाती उसकी। 20 सेकंड में बिल्कुल बिल्कुल ट्रेनिंग दी जाती, आपको ट्रेनिंग दी जाती है। अतीक अहमद के खिलाफ जब 70 मर्डर केसेस है, एक प्रिजनर है, आपको तो मालूम, और आप खुद ने पूरा एहतमाम किया था ना। मर्डर 20 सेकंड में होता प्यारे, मर्डर 1 घंटे में नहीं होता। असैसिनेशन आपके गाड़ी पे गोली नहीं चली, मेरी गाड़ी पे चली। वो कितनी देर का था? कितनी देर का था? क्या कोई डायलॉग मारता आके? कोई गाने चलते क्या उसमें? क्या उसमें कोई बिजलियां खड़खड़ाती हैं क्या? कोई म्यूजिक आती है क्या उसमें? असैसिनेशन जो होता है, हत्या होती है, वो सेकंडों में होता है। उसी के लिए तो आपको रखते हैं ना वहां पर। 10 सेकंड 8 सेकंड में मामला खत्म हो जाता। जिस तरीके से आप वेपन चला रहे हैं, अब गिनिए कितने सेकंड लगे उसमें। वही तो आपको काम करना है ना, उसी के लिए तो आपको रखा गया है ना। आपको कोई इसलिए रखा गया कि दिखाया जाए कि दूल्हे की बारात जा रही है और पूरे बाराती साथ हैं। आपका काम तो वो है। सर, उत्तर प्रदेश की सरकार के 2 मंत्रियों ने इस घटना के तुरंत बाद बयान दिया है। स्वतंत्र देव सिंह ने बयान आपने देखा होगा, एक खन्ना साहब ने उन्होंने कहा कि आसमानी फैसला है। इस पर आपका क्या? और सर, पुलिस को दाद देने की भी बात उन्होंने कही। हाँ बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे। अब आप बोलिए, आप तो हमारे भाषण पर आप लोगों ने 6 बजे और रात के 9 बजे जो महाशय बैठते हैं, वो तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे हमारे बारे में। ओवैसी ने ये कह दिया, आप बोलिए अब क्या बोलेंगे इसको आप? आपकी सरकार है, आपकी सरकार की कस्टडी में एक प्रिजनर है, आप लेके जा रहे हैं और वो मर जाता है आपकी वजह से, और आप कह रहे हैं, आप जश्न मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, उसको आसमानी फैसला कह रहे हैं। अब इससे बढ़कर अब क्या बोल सकते हैं? इसीलिए कह रहा हूं कि कंपैशन एंड ह्यूमैनिटी इन लोगों में नहीं आएगी। इसीलिए हर वो भारत का नागरिक जो हिंसा के खिलाफ है, जो क्रिमिनल्स के खिलाफ है, जो माफिया के खिलाफ है,
जो रूल ऑफ लॉ में कोर्ट पे भरोसा करता वो अपने आप को गैर महफूज और कमजोर समझ रहा है। बिल्कुल सच कह रहा हूं आपको। अभी मायावती जी का एक ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि एनकाउंटर प्रदेश बनता जा रहा है उत्तर प्रदेश। बहन जी ने कुछ कहा है तो बहन जी कहेंगी या उनके पार्टी के लोग कहेंगे? सर, कल जो ये लोग 3 लोग आए थे, मीडिया के कर्मी ऐसा वो वैसे आए थे, तो क्या आप एक मांग करेंगे सर, एडिटर्स गिल्ड हो या प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया हो या फिर जो बॉडी से जर्नलिस्ट का, क्योंकि अतिक ने कहा था कि मीडिया की वजह से मैं बच गया पहले, और कल जो है ये मीडिया नहीं, कल तो ANI का एक रिपोर्टर जख्मी भी हुआ ना, भी हुआ है, तो क्या? अरे भाई, अगर गोली आर पार हो जाती तो क्या ये नहीं सुनिए, अगर गोली आर पार हो जाती और किसी मीडिया वाले को लग जाती, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता, कौन पूछता आप लोगों को? आप जो नौकरी कर रहे हैं आपकी कोई अहमियत नहीं है। आप लोग बाइट लेने के लिए दौड़ते हैं। अगर आपको कुछ हो जाएगा, कोई माने बुरा मत मानिए, कोई महल्ले का कोई आके नहीं पूछेगा तुम्हारे को। जो तुम लोग इतनी वफादारी करते हो ना, नमक हलाली करते हो, अगर कुछ हो जाएगा तो कोई पूछ, मैं जानता हूं, देखा हूं ना, बड़े बड़े हीरो को देखा हूं, आज कोई पूछता नहीं उनको। बीमार पड़ गए अस्पताल में नहीं पूछते, मैं देखा हूं कोविड में। अतीक सर कन्विक्ट हुए थे, आप वो पूर्व सांसद रहे हैं, कन्विक्ट भी हुए हैं, आप बार बार उनके रिलीजन का जिक्र कर रहे हैं। एक मुस्लिम, हाँ, मुस्लिम एक्स MP है क्या? नहीं, क्यों इसमें? अरे नहीं, इसमें बुरी बात क्या है? वो मुस्लिम नहीं थे क्या? लेकिन इस नहीं, बिल्कुल थे। आरोप लग रहा है, छोड़ दीजिए, नहीं, कोई पोलिटिसाइज नहीं कर रहे। अतीक क्या थे? क्रिमिनल थे सर, बिल्कुल थे, कन्विक्ट हुए। मुस्लिम नहीं थे क्या? नहीं थे मुस्लिम? नहीं, मुस्लिम नहीं थे। अपराधी का कोई धर्म नहीं। हाँ, अच्छा, नहीं, वो अब आप बोलेंगे तो अब अपराधी का धर्म नहीं होता तो फिर ये जो गोडसे के फोटो लेके हैदराबाद में लोग नाच रहे थे प्रोसेशन में, जो गोडसे की फोटो लेके नाच रहे थे हैदराबाद में, ये दुम छल्ले जिनको कहते हैं, सबसे बड़े कमजोर और बुज़दिल लोग, कौन से जुलूस में नाच रहे थे गोडसे की फोटो लेके, जैसा कि इनके बाप की फोटो थी गोडसे की? सर, आपने जो मांग करी उस मांग में आपने कहा कि पुलिस कर्मियों को बर्खास्त किया जाना चाहिए। राज्य सरकार ने 17 लोगों को सस्पेंड किया है, और आप इसके लिए पुलिस महकमे में किसको जिम्मेदार मानते हैं? नहीं, मैं देखिए मेरा मानना यह है कि जिन्होंने हत्या की, ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर था। इन लोगों ने एक नहीं बल्कि कम से कम मुझे लगता है कि उन्होंने 1000 से 2000 राउंड चलाए होंगे पहले, क्योंकि उनका हाथ देखिए आप, हाथ हिलता नहीं है उनका। हमको भी वेपन पकड़ना आता है। ये प्रोफेशनल लोग थे और इनको मालूम था कहां पर मारना और कितनी तेजी से मारे वो लोग। और वैसे ही असैसिनेशन जो होता है मिनटों में होता है, चाहे आप किसका भी लिए, जॉन एफ कैनेडी का लेकर जो बड़े बड़े असैसिनेशन हुए हैं, नहीं, बड़े बड़े जो हुए हैं, बड़े बड़े जितने असैसिनेशन हुए हैं जिसमें पढ़ाया जाता है, आप देख लीजिए, सेकंड्स में काम खत्म हो जाता है। तो उसके लिए ये लोग कौन है? ये लोग इतने रेडिकलाइज कैसे हो गए? अगर इनका ताल्लुक स्टेट से नहीं है तो ये रेडिकलाइज कैसे हुए? कौन सी ताकतें इनके पीछे हैं? किसने इनको हथियार दिया? कहां से आए ये लोग इतना अचानक, इतना? और अच्छा, और एक यूपी तक चैनल का एक वीडियो है जो मैं देखा हूं, अभी आप बोले तो सुना दूं आपको, जिसमें वहां पर रिपोर्टर उन लोगों से पूछ रहा है, जनता जो खड़ी हुई है, वो कह रहे हैं कि ये तो पुलिस की गाड़ी से उतरे थे ये लोग जो थे ये पुलिस की गाड़ी से उतरे। तो अगर वो लोग खुद जो पब्लिक वहां पर आई विटनेस है वो कह रहे हैं यूपी तक चैनल में, मेरे को नहीं मालूम। 3 बाइक वहां पे बरामद। सुनिए तो सही, इसीलिए तो हम कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बाइक वो भी आया है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसको सो मोटो ले ले, एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाए, टाइम बाउंड मैनर में बनाए, उसमें उन लोगों को रखे जिनका ताल्लुक उत्तर प्रदेश से ना हो, क्योंकि उन्हीं के प्रदेश में हुआ है, और उसके बाद एक्शन ले। बल्कि मैंने कहा ना कि संविधान के आर्टिकल 311 के तहत
और हम देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी आप कुछ बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। प्रधानमंत्री भाषण में बोलते हैं कि मेरी सुपारी ली गई, अब बताइए क्या हो रहा है आपके प्रदेश में जहां से आप एमपी हैं, क्या हो रहा है बताइए ना। G20 होने जा रहा है देश में, क्या ये हर भारत का वो नागरिक अपने आप को गैर महफूज और कमजोर समझ रहा है कल के इस वाकये के बाद। नहीं, आपकी सरकार है, आप ही की सरकार की मौजूदगी में ये हत्या हुई है, तो कैसे आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ये मुस्लिम एक्स एमपी, आपको तकलीफ हो रही बोल रहा हूं, मुस्लिम एक्स एमपी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट गए थे। हम सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाएगी, टाइम बाउंड मैनर में करेंगे, क्योंकि आपकी सरकार में हुआ है, आप क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे। आपके तो मुख्यमंत्री ने तो विधानसभा में खड़े होकर ऐलान कर दिया ना कि मिट्टी में मिलाएंगे। और एक बात, उनके 2 मंत्री कल के वाकये के बाद तो वो तो शाबाशी दे रहे हैं ना पुलिस के लोगों को। फिर अब ये क्या होगा, ये प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। सर एक सवाल है, सीबीआई उत्तर प्रदेश अक्सर जाते रहते हैं और ये सवाल इसलिए भी अहम हो जाता है कि आप पे एक बार हमला हो चुका है, फिर हो सकता है, इतना याद रखिए। हम तैयार हैं, मरने को तैयार हैं। नहीं, अगर नहीं, मैं मरने को, देखिए मैं मरने को तैयार हूं, मैं मरने को तैयार हूं। मुझे मालूम हो सकता है करेंगे वो लोग। वो देखिए, आप जब तक रेडिकलाइजेशन को नहीं रोकेंगे, चाहे किसी समुदाय का हो, आप रेडिकलाइजेशन को रोकिए, वरना याद रखिए रेडिकलाइजेशन इस दीमक की तरह इस मुल्क को कमजोर कर देगा। किसी समुदाय का रेडिकलाइजेशन हो मुल्क के लिए ठीक नहीं है। सवाल पूरा नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश जाएंगे आप? बिल्कुल माहौल में क्यों नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। जब प्यार किया तो डरना क्या, जाएंगे बराबर। मेरे मुकद्दर में जो फैसला अल्लाह लिख चुका है वो होगा, होके रहेगा। मेरी जिंदगी की हद उसी वक्त तक है जब तक अल्लाह फैसला करेगा। जब जिस दिन अल्लाह फैसला करेगा मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। मगर मैं डर कर घुट घुट कर अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकता। और यकीनन मैं जाऊंगा, अपनी पार्टी का काम करूंगा। मगर ये क्या है, आप समझ रहे हैं कि किसी को गोली मार देंगे और इस तरह करेंगे तो कोई डर के खामोश हो जाएंगे। ये वक्त तो इन लोगों के खिलाफ बेखौफ होकर मुकाबला करना है, देश के लिए करना है। ऐसे लोगों के खिलाफ उठकर बोलना और लड़ना जरूरी है, वरना याद रखिए हमारी जो आने वाली नस्ल है, ये जो छोटे बच्चे कल इस भारत के मुस्तकबिल है, जो भारत को लेके जाएंगे, वो हमसे पूछेंगे कि जब रूल ऑफ लॉ को बर्बाद किया जा रहा था और गोलियों से रूल कर रहा था तो आप लोग खामोश क्यों बन के बैठ गए। तो हमको अपने देश के लिए, संविधान के लिए, नेचुरल जस्टिस के लिए हमको बेखौफ होकर इनके खिलाफ बोलना पड़ेगा। So that's an elaborate press conference taking place by Asad Owaisi of the AIMIM and targeting Yogi Adityanath government. Now BSP chief Mayawati has also spoken up. BSP chief Mayawati is also questioning Yogi Adityanath. Remember, of course, political rivals in the state of Uttar Pradesh. Former Chief Minister of UP, Mayawati has said, I quote her here, Atiq shot dead openly in police custody. Uttar Pradesh is becoming an encounter site and an encounter state, says Mayawati. And the statement coming in on social media site, Mayawati has said that this is clearly an encounter that's taken place this is becoming an encounter state, Uttar Pradesh. And he was shot dead openly in police custody. Abhishek Mishra gets us what Mayawati has said. Do tell us briefly, Abhishek, what exactly has the former Chief Minister, BSP Supremo Mayawati has said?
Well, certainly, Pooja, Mayawati, the former Chief Minister of Uttar Pradesh, has clearly targeted the UP government, Yogi Adityanath, and in her tweet, he has clearly said that with the incident which has happened of, targeting Atiq Ahmed, shutting him down openly is a question over the encounter state. She referred Uttar Pradesh as an encounter state instead of a state of law and order, and that was something she's also asked about investigation that to be by in division of the Supreme Court, so that everything should have an answer as far as Atiq Ahmed open shootout is concerned. Well, it is very natural, Pooja, that all these, the opposition leaders will now target Yogi government over these policy. Earlier, they have been very, very vocal about the fact how Asad and Ghulam encounter was done. The encounter policy has already been a hard point for the opposition to target Yogi Adityanath's So government. Mayawati is asking that, yes, the Supreme Court should also take cognizance of this matter. Abhishek, stay on with me. So there's, of course, a political showdown. But I want to take our viewers back to what unfolded late last evening, the shocking development. India Today reporters were on the ground. Joining me now this morning is one of those reporters who was tracking every detail of what happened. Arvind Ojha joins me in this live telecast. Arvind, you also pointed to a very noticeable, what appeared to be a dummy camera and a microphone. The fact ये जो assailants थे 3, इन्होंने मीडिया पर्सन बनकर ये बीच में घुसे और इन्होंने फिर ये शूट आउट किया. हमें एग्जैक्टली बताएं कल रात को क्या हुआ, किस तरह से आगे पुलिस इसका संज्ञान ले रही है. बिल्कुल, देखिए, इंडिया टुडे पर हम क्राइम सीन को फिर से रिक्रिएट करते हैं और हुआ कैसे. दरअसल ये अस्पताल का एंट्री गेट है और यहाँ से आज अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को लेकर पुलिस टीम आती है और ठीक इस जगह पर इंडिया टुडे की टीम मौजूद रहती है. इंडिया टुडे की टीम ने अतीक से क्वेश्चन किया कि वो अपने बेटे के जनाजे में क्यों नहीं जा पाया, और जब तक वो जवाब देता पॉइंट ब्लैंक जीरो रेंज से एक जो शूटर है वो कनपट्टी पर बंदूक रखता है और फायरिंग शुरू कर देता है. उसके बाद बाकी 2 और शूटर है वो अशरफ और अतीक पर निशाना गोली चलाना शुरू कर देते. स्पॉट पर ही अतीक और अशरफ की मौत हो गई थी. इसमें सबसे हैरानी वाली बात यह है कि जो पुलिस टीम थी उनमें से कई के पास वेपन्स थे और उनको बकायदा ट्रेंड किया जाता है इस तरह के सिचुएशन में कि कैसे रिस्पॉन्ड करना है, मिनिमम टाइम में कैसे रिस्पॉन्ड करना है. लेकिन क्विकली रिस्पॉन्ड नहीं किया गया. अगर क्विकली रिस्पॉन्ड किया गया होता तो शायद कम गोली लगती, शायद अतीक और अशरफ को बचाया जा सकता था. नंबर 1. नंबर 2, बकायदा मल्टीपल थ्रेट अलर्ट था अतीक और अशरफ को लेकर. खुद यूपी पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जब असद का इनकाउंटर हुआ था और यूपी पुलिस ने क्लेम किया था कि झांसी में पुलिस टीम पर अटैक करके अतीक को छुड़ाने का प्लान था. उसके अलावा अतीक और अशरफ के कई क्रिमिनल गैंग से दुश्मनी थी, वो गैंग भी अटैक कर सकता था. तो क्यों इतनी मिनिमम फोर्स लेकर यहाँ पर लाया गया? जो अटैकर्स थे वो फर्जी पत्रकार बनकर आए थे, डमी कैमरा उनके पास था, डमी माइक था. अब एक और फ्रेश डेवलपमेंट मैं आपको बताऊं, जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है इंटरोगेशन की इंडिया टुडे को, वो ये है कि जो तीनों अक्यूज्ड है वो प्रयागराज के रहने वाले नहीं है. एक बांदा का है, उत्तर प्रदेश के बांदा, एक हमीरपुर का है और एक कासगंज का है. और तीनों की पुरानी क्रिमिनल हिस्ट्री रही है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जो तीनों अक्यूज्ड है इन पर पहले भी इनके अलग अलग जहां ये रहते हैं वहां पर इनके खिलाफ मामले दर्ज है. और इंटरोगेशन में, इनिशियल इंटरोगेशन में ये बता रहे हैं कि इन्हें बड़ा माफिया बनना है, फेमस होना है, इस वजह से इन्होंने मर्डर किया. हालांकि जो ये मोटिव है जो वो बता रहे हैं उसको पूरी तरह से पुख्ता करने की कोशिश यूपी पुलिस की टीम कर रही है. लेकिन ये काफी चौंकाने वाली शॉकिंग डिटेल्स है. तस्वीर एक बार हम ये जरूर दिखाना चाहते हैं कि ये मर्डर एक्चुअली में हुआ क्या है. हाँ. ये अस्पताल है जहां पर काफी भीड़ होती है और यहाँ पर अतीक और अशरफ को गोली मारी गई और जो अक्यूज थे वो प्रॉपर रेकी करके यहाँ पर आए थे और उसके बाद उन्होंने फायरिंग की है. लेकिन सवाल पुलिस पर है क्योंकि दोनों बिल्कुल अरविंद, पुलिस को जवाब तो देना ही पड़ेगा. He was a high profile prisoner. There were even commandos around him at one time when the convoy was being taken. Why were there such few personnel late last night? अरविंद, अब हमें बताएं, since this incident there have been varied reactions coming in. एक तरफ सवाल उठ रहे हैं योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट पर कि क्या जो ऑपोजिशन कह रही है तो प्री प्लान्ड है, ये गलत है, ये एनकरेज नहीं करना चाहिए. दूसरी तरफ जिन लोगों ने
वो क्रिमिनल टाइम देखा है अतीक अहमद का, उनके भाई अशरफ का, उनके हिसाब से माना जाता है कि कोई एक्शन कभी नहीं लिया गया इनके खिलाफ और उनके लिए ये भी जस्टिस है। तो हमें ये वेरिड रिएक्शंस बताएं, क्योंकि जो क्रिमिनल पास्ट रहा है अतीक अहमद का, वो भी आज काफी लोग सामने उस बारे में आके बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए, प्रयागराज के कई लोगों से हमारी बात हुई। हालांकि अतीक और अशरफ के नाम पर इतना खौफ है कि वो ऑन कैमरा आकर कभी नहीं बोलेंगे, लेकिन उनका कहना है ये आतंक का अंत है। लेकिन इंडिया टुडे का ये कहना है कि आतंक का अंत कम से कम इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि आप कानून को अपने हाथ में ले लें। लेकिन ये बिल्कुल सच्चाई है कि जो अतीक और अशरफ है, और अतीक के खिलाफ 100 से ज्यादा मामले इसी प्रयागराज में दर्ज है। 1168 तकरीबन 1000 करोड़ वर्थ की जो प्रॉपर्टी है वो सीज की जा चुकी है। अब तक करोड़ों रुपए कमाए। वो एक गुंडा था प्रयागराज का, और उस गुंडे के दम पर वो विधायक बना, वो सांसद बना, और 100 मामले दर्ज से पूजा। आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि एक भी मामले में किसी ने गवाही देने की हिम्मत नहीं की, और जिसने गवाही देने की हिम्मत की 1 महीने पहले उसका क्या अंजाम हुआ, वो सीसीटीवी फुटेज पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से उमेश पाल को चेस करके गलियों में गोली मारी गई। जो 2 पुलिसकर्मी थे उनको भी गोली मारी गई, बम मारे गए। ये तस्वीर पूरे देश ने देखी। यहाँ तक कि अभी भी जो कस्टडी में था अतीक, वो पुलिस वालों को थ्रेट ही कर रहा था, उसकी हेकड़ी कोई कम नहीं हुई थी। तो अतीक अहमद की बात की जाए तो अतीक अहमद कोई छोटा मोटा बदमाश नहीं था, पॉलिटिकल सपोर्ट भी था उसको, इस वजह से वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस नजर आता था। इंडिया टुडे की टीम ने कई बार उससे बातचीत करने की कोशिश की थी, जब साबरमती जेल से उसको लाया जा रहा था। एक बार समर्थ श्रीवास्तव हमारे कलीग हैं, उन्होंने बातचीत की, एक बार मैंने बातचीत की। उसमें पूरी तरह से वो बेधड़क बात करता था, पूरी तरह से वो कॉन्फिडेंस रहता था। तो आतंक जैसा का अंत कहते तो भी हुआ हैं प्रयागराज की जनता अरविंद, कह रही क्योंकि है, सवाल तो उठेंगे, इंडिया टुडे उत्तर प्रदेश पुलिस पे भी सवाल उठेगा, सरकार पे भी उठेगा। इतना बड़ा अगर हाई प्रोफाइल प्रिजनर था, क्यों और सिक्योरिटी नहीं थी? बट देयर इज आल्सो दिस मेटाफर दैट्स ऑफन सेड, लिव्ड बाय द बुलेट, डेड बाय द बुलेट एज वेल। अरविंद हमारे साथ बने रहें, और ब्रेकिंग न्यूज हमारे पास आ रही है। रिमेंबर वी आर बीइंग टोल्ड that these shooters, as Arvind is also mentioning, were not from Prayagraj. The ones who killed Atiq Ahmed and his brother were from nearby areas outside. But one of the family members of one of these 3 shooters, Lavlesh, the family member has spoken up. We are being told he's the father. Let's listen in to what he has to say. ये बताइए, ये लवलेश कौन है? आप लड़का है। आपको कुछ जानकारी हुई है कि कल एक शूट आउट हुआ है, उसमें लवलेश का नाम बताया जा रहा है? हाँ, टीवी में देखा। कैसा है ये लवलेश, और किस तरह से ये कैसे वहाँ पहुँच गया, कुछ जानकारी है आपको? हमें कोई जानकारी नहीं है ना, हम लोगों से इससे कोई मतलब नहीं। ये क्या घर में नहीं रहता ना? अच्छा, कब से प्रयागराज में रह रहा है ये? हमें नहीं मालूम। अच्छा, यहाँ नहीं, ये घर में आखिरी बार कब आया था? ये 7-8 रोज 5-6 रोज पहले था। हमसे घर से किसी कोई चीज से मतलब गज नहीं आता था। अपना नहा धो के जब भी 4-6 रोज में आता था, नहा धो के अपना निकल जाता था। अच्छा, ना किसी चीज से मतलब था। अच्छा, प्रयागराज ये आता जाता था, ये आपको बताता था कभी? ना कभी हमसे बातचीत नहीं हुई। पूरा मोहल्ला बता सकता है, पूरा घर बता सकता है, हर आदमी के हमसे लोगों से कोई मतलब गज नहीं थे। सालों से बोलचाल बंद है। जब उस लड़की की थप्पड़ मारा था, उसका एक केस चल रहा है। कौन सा केस? अरे एक बुढ़िया को थप्पड़ मार दिया था इस चौराहे में, उसका मुकदमा चल रहा है। फिर क्या हुआ था? उसमें जेल गया था? हाँ, उसमें जेल गया था। तो जमानत से कब छूट के आया था? अरे हमको याद नहीं, 1-1.5 साल पहले की बात है। अच्छा, अभी ये 5-6 दिन पहले यहाँ घर से निकला है जी। क्या करता है वैसे, क्या काम है इसका? कुछ नहीं, काम में नशा करता है। नशेड़ी आदमी, इसीलिए मेरे को सब लोगों ने त्याग दिया घर बहुत पहले से। अच्छा, कितने भाई बहन हैं ये? 4 हैं। बहन नहीं है। ये सबसे बड़ा है? नहीं, तीसरे नंबर का है। अच्छा, ये बताइए कि अभी आपको जो ये जानकारी कैसे हुई कि कल ये भी साथ मिलता छोटा? टीवी देख रहे थे अभी। कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या करेंगे हम कि जैसे उसने जो वारदात को अंजाम दिया है? क्या कहेंगे इसमें, हम कहने लायक क्या है? सब जन के हमारे पास कुछ पढ़ाई किया था इसने?
हाँ इंटर किया। इंटर के बाद छोड़ दिया? हाँ बीए कर रहा था, बीए में फेल हो गया। इस समय कुछ नहीं करता था? कुछ नहीं। क्या किसी लोगों के साथ इनकी संगत थी जो ऐसे लोग और आते रहे हों इनके साथ? लड़का है कहा, जब हमसे कोई मतलब गजने तो हम कहा बताएं कि किससे संगत थी, कौन सा कौन। ये ऐसी संगत में कैसे? यज्ञ कुमार जी, यज्ञ कुमार। So that's the father, one of the shooters, and not saying much, understandable for the family as well. But we'll continue to track all the latest coming in from Prayagraj and the political showdown of it. This is the biggest story right now. I'm heading into a very short break. Stay tuned. Thank you for watching. You are watching India Today. हमारे पूर्वज कौन थे? हमारे संस्कार, संस्कृति, इनका उद्गम कहां से हुआ? भारत की पहचान है भारत की आध्यात्मिक विरासत। भारत में समाज जीवन को जोड़ना, समाज जीवन को समयानुकूल परिवर्तन करने के लिए प्रेरित करना, इन सब में हमारी सांस्कृतिक धारा का बहुत बड़ा योगदान है। आज जो कुछ भी काम हो रहा है उसमें धार्मिक गतिविधि के लिए सरकारी खजाना उपयोग नहीं जा रहा है, व्यवस्थाओं के लिए विकास किया जा रहा है, ताकि मेरे देश के नागरिक का जो हक है, जो सुविधा पाने का उसका अधिकार है, उसको अधिकार मिलना चाहिए। और आज लाभ ये हो रहा है कि इन सारी चीजों ने भारत के टूरिज्म को भी एक बहुत बड़ा मदद दिया है। महाकाल लोक में लौकिक कुछ भी नहीं है, शंकर ये सानिध्य में साधारण कुछ भी नहीं है, सब कुछ अलौकिक है, असाधारण है, अविस्मरणीय है। जय जय महाकाल। सदियों बाद पावागढ़ मंदिर में एक बार फिर शिखर पर ध्वज फहराना। बर्फबारी के बीच भी मेरे हमारे श्रमिक भाई बहन जो पहाड़ों के नहीं थे, बाहर से आए थे, वे ये ईश्वरीय कार्य मान करके बर्फ वर्षा के बीच भी, माइनस टेम्परेचर के बीच भी काम छोड़ करके जाते नहीं थे, काम करते रहते थे। May 2022. A normal day that changed to an abnormal day. She was cut into 35 pieces. उसने मल्टीपल वेपन्स का यूज किया. Up against a psychotic butcher and a web of savagery. Now her father fights to put pieces of justice together. This is the story of Shraddha and her father. जब तक इसको फांसी नहीं होगी तब तक मैं इसका अंतिम संस्कार भी नहीं करूंगा. My daughter Shraddha, coming soon.
Today Group wins the prestigious Ramnath Goenka Excellence in Journalism Awards. For the category of investigative reporting for 2019, the winner in broadcast, Milan Sharma. in the category of reporting on politics and government for 2019, The winner in broadcast is Bipasha Mukherjee from India Today TV. in the category of Hindi for 2019, In broadcast, Ashutosh Mishra from Aaj Tak. Shines bright with 5 awards. India Today Group, the gold standard in journalism. It is tech giant Apple's big India bite. Apple is all set to open 2 retail stores in the country. The first retail store in India, scheduled to come up in Mumbai at Geo World Drive, will throw open its door to consumers on April 18. Apple CEO Tim Cook is expected to attend the launch of the Mumbai store. The store is located here in the newest mall of the city, the Geo World Drive. The barricades have already gone up with their vibrant colours, and the theme of the store seems to be inspired by the cabs of the city, the Kali Peaks. The second store in Saket, Delhi, will open on April 20. Apple Retail will help consolidate the tech giant's position further in India. Until now, Apple has sold iPhones and other products in the country mostly through resellers, e-commerce websites and large format retail chains. The move isn't surprising given Chief Executive Tim Cook in February called India a major focus for Apple. Apple has been on a steady expansion in India. Its share in the smartphone market is projected to grow from 1% in 2019 to 5% in 2023. It is no secret that Apple has been growing its manufacturing base in India. Making iPhones and then selling them in India ensures a smooth supply chain. India is at forefront of Apple's effort to decouple from China's factory floor. Apple Inc. partner Foxconn Technology Group also plans to invest about $700 million on a new plant in India, underscoring an accelerating shift of manufacturing away from China. It's clear that Apple's playbook is evolving as India emerges as hub not just for manufacturing but also demand. With Rachna Dhanrajani, Bureau Report, India Today. Why does this happen? Let me tell you the science behind it. For more informative videos like this, keep watching India Today News. More exclusive details coming in on Atiq Ahmed shooters. 3 young men, assailants who had shot dead Atiq Ahmed, gangster turned neta, and his brother Ashraf. Shooters came from outside of Prayagraj and they were on a bike. So they had taken a 2-wheeler, and the moment they landed up, you can see there on the site, and the bike was registered under the name of one Abdul Manan Khan. Shooters came to Prayagraj with the intention very clear, and the intention was to ensure that Atiq Ahmed and his brother were shot dead. Because remember, it was not about a random 1 or 2 shot. They shot at least 18 to 20 rounds of fire, ensuring till the last moment that both of them were dead. So were they also trained shooters who had ensured that this killing takes place? Then they put their hands up and are taken in by the cops. So we have more news coming in. They were not Prayagraj locals. They had come from nearby areas. But they precisely knew that he's going to be at that moment there because he was taken for medical examination earlier as well. While speaking to India Today reporters, these 3 men immediately intervened. They were posing as media persons. And while Atiq Ahmed and Ashraf were reacting and giving out statements, they were shot dead by these 3 men who had come on a bike with a very clear intent.
So that's the big news coming in. Remember, these three men with details that are now coming in about their names and more. We are being told that 18 rounds of fire were shot. And of course, questions are being raised. Shouldn't there have been much more security around Atiq Ahmed and Ashraf? Clearly, both of them very high-profile prisoners. And now, after Asad was killed in an encounter, Atiq Ahmed and his brother have been shot dead as well. We'll play the sequence of what exactly happened. The 18 rounds of fire that these three men shot, ensuring that there was absolutely no scope left, that Atiq Ahmed and Ashraf would be just left injured. They came with an intent on the bike, posing as media persons, and ensured that they were killed. Ashraf, आप लोग कुछ कहेंगे? कुछ कहेंगे आप? कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहें भैया, किस बारे में कहें? सर कुछ कहेंगे? किस बारे में क्या कहें? आज आपको जनाजा हुआ था, आज आप लोग वहाँ गए थे कि नहीं? आज जनाजे में आप लोग गए थे कि नहीं? क्या कहना आप? कुछ कहना चाहिए? मेन बात ये है कि गुड्डू मुस्लिम अशरफ, आप लोग कुछ कहेंगे? This is what happened. These two men, although chained by the cops, and a very normal scenario otherwise, that some of the media persons who have been tracking Atiq Ahmed since the moment he's been brought in from Sabarmati prison in Gujarat to Prayagraj in Uttar Pradesh. And this was in many ways a routine affair for media persons. India Today colleague Samar Srivastav and our camera person Neeraj were there on the spot right now. They were asking questions, he was answering. He said something about Guddu Muslim, and there came a gun. 18 rounds of fire that were made by these three assailants, ensuring till the last minute. It took barely about 5 seconds, if not more, to shoot both of them dead. The cops immediately taking them into custody. But many would want to ask, why were only these many cops not as well armed and trained? With them, where was another security? But remember, they were gangsters too. The past of criminal history that many people who have suffered, specifically in areas like Prayagraj. And to them, those victims are also hailing and calling this encounter justice. Many, of course, as specifically in the opposition, are asking, how can this be allowed? This is complete lawlessness. So there are, of course, varied reactions coming in on this killing of Atiq Ahmed. Those who have suffered, those who have been their victims and have been victims of their criminal past, to them, this is justice. And now I want to bring in this live telecast my colleague Samar Srivastav, who was right there on the spot. He's an eyewitness. He's also a survivor. Remember, 18 rounds of fire. One bullet could have hit any of the media persons, specifically my colleagues Samarth and Neeraj, who were there. Samarth, so it's been, of course, a long sleepless night for you as well. You tell us now what exactly happened, what was the scenario like, and how unexpected was this? Well, Pooja, I must say that was quite unexpected, and we never imagined something like that. Or though we covered many post-shootout crime events, but it was nothing like that came to us, because shootout happening in front of us, and with Atiq Ahmed, gangsters like Atiq Ahmed, Ashraf standing right next to us, and suddenly firing from three shooters happening, that has been such a nightmare as a reporter for me. And I must agree with the cameraman Neeraj, he could also have that thing, that horrific moment, which would be within us, I guess, for the months to come, for the years to come, because 17 rounds of fire. First of all, we thought that once the firing began, we thought some crackers burst. But once we saw blood coming from Atiq Ahmed's head, because it was on the backside of his head, first bullet was fired and it just went crashing down to his head, and blood came out from his head, and it was like, it was all around, it's blackish, in front of my eyes, it's a blackish thing, something blackish came in, and I just tried to came a bit back, and I also got suffered, and I in a way, I got unconscious at some for some moment, and I must congratulate cameraman Neeraj for the thing, because he was there and his recorder was completely on. Though he also faced jerks at a time, because we saw many backlashes, because everyone around was started moving, roaming. They were fleeing from the spot. Some went to other ways, some went to that way.
while shooters, after completing the shootout, just started surrendering that we are surrendering, we are surrendering. So did you see while the these cops three who were men, present there, yes, around you earlier? Were they loitering around? Did they come out of nowhere? Because I want to point out to a viewer as well, when you see that image of Atiq Ahmed walking in the black t-shirt is Samarth Srivastav. He is standing next to Ashraf, which means he was in the line of fire when these gunmen shot at both of them. So clearly it was a very near miss for you as well, Samarth. But do tell us, did you see them around? Were they new? How did they manage to come in? Pooja, it seems it's a second life, I must say. It seems like a second life since that particular incident happened. I'm living in the second life, and also my cameraman Neeraj Kumar. Because as you said, I was standing just next to Ashraf, and we were pointing out questions, and suddenly the fire broke out. And I had no idea like what's happening out here. And at that moment, though it is clear now that it was a targeted killing, that they only targeted those two persons out there, those two gangsters. But for that moment, we had no idea that it is a targeted incident, that it is a targeted event. So it could have been like crossfire around that particular area, killing and hitting out everyone. We were the only team from Lucknow who came there. Though I was also joined by some Prayagraj stringers there of various channels, of three channels. They also tried to flee from the spot, and we were the only carrying the live source, and then we did also live on the India Today TV. But that incident, in a way, I can say it gave a shock wave to me and my cameraman as well. But suddenly we gathered courage and confidence at the same time, because we knew that as a reporter, it was something big on camera, and being present with a live source at that particular event, seeing Atiq Ahmed and Ashraf lying in front of me and capturing all the movements of like the bullet fire, surrendering, police grabbing those accused, those shooters, and then that particular thing, it was a massive thing for me. So Samarth, I understand, and as a television news reporter, I want to point out that it does take a lot of courage to even be in that position. It was a near miss for Samarth and Neeraj. But remember, television news is also about team effort, the ones you do not see, the ones behind the camera. Neeraj was rolling throughout, despite three men firing non-stop. He chose not to switch off the camera and run away. He chose to continue to roll, and Samarth also was reporting. Is it possible, Samarth, if I can have Neeraj also? And I would like to show the viewers and maybe get in a word from him. And it's very pertinent. We want to acknowledge our video journalists as well, because they may not be seen usually, but it's time like these. Well, Pooja, I have been joined by my cameraman. Lovely, go ahead. I have a question for him, Samarth. I'll just... Sure. लगा आपको भी देख के कि आप सेफ हैं, और मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या वो मोमेंट था, क्यों आपने डिसाइड किया कि मुझे अभी निकलना नहीं है, भागना नहीं है, मुझे कंटिन्यू करना है, रोल कैमरा? तो ये जो मोमेंट था, आपने कैसे डिसाइड किया? नीरज, इंडिया टुडे से पूजा का सवाल आपसे है कि उस वक्त आपने ये डिसाइड कैसे किया कि आपको वहां से निकलना नहीं है, बल्कि वहां रहकर उन पिक्चर्स को, उन तस्वीरों को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करना है? नहीं, हालांकि वो स्थिति बहुत वैसी थी, लेकिन इतने साल हो गए काम करते हुए, तो लगता है कि जो काम हम कर रहे हैं उसके प्रति एक डेडिकेशन भी होता है कि वो चीज़ें ना हो, और एक जो हम काम कर रहे हैं एज अ प्रोफेशनल, वो एक जुनून होता है कि हम कहीं कुछ हमसे छूटे ना। जो काम जब हम स्पॉट पे हैं, अगर हम स्पॉट पे हैं तो हम जो बेहतर कर सकते हैं वो करना चाहिए। तो उस समय जो सबकॉन्शियस माइंड में जो था कि मुझे अपना बेस्ट करना है, तो ऐसा कोई बहुत, हालांकि स्थिति आप भी जान रहे हैं, सभी तितिर बितिर थे, लेकिन एज अ प्रोफेशनल मुझे ये लगा कि मुझे यहाँ डटे रहना चाहिए और मुझे हर वो शॉट कवर करना चाहिए जो मैं कवर कर सकता हूँ। डर नहीं लगा? हाँ, डर जैसी कोई चीज़ थी नहीं, और वो टाइम भी इतना शॉर्ट था कि इससे पहले कि आप कुछ सोचते वो एंड हुआ। और क्या बोलते हैं आप, मैं क्या बोल सकता हूँ, आपके सामने ही सरेंडर, हमारे सामने ही सरेंडर हो गया, तो लगा तुरंत चीज़ें कंट्रोल में आ गई। कंट्रोल में नहीं आ गई, जिस तरह से तीनों तरफ से फायरिंग चल रही थी, आप भी देख रहे थे, जिस तरह से तीनों तरफ से फायरिंग चल रही थी, तो वो गोलियां कहीं भी जा सकती थी। पीछे से चली, मैं अशरफ के बगल में था, आप उधर खड़े थे, पीछे से एक बंदा आया। बिल्कुल वो पीछे से गोली चली, और जिस पोजीशन में जैसे हम यहाँ खड़े हुए थे, तो पीछे से फायर हुआ, और पीछे से फायर होकर वहीं से फायर होना शुरू हुआ। तो वो फायर हमारी तरफ था, मतलब मान लीजिए कि वो यहाँ पे पड़ा है, लेकिन फायर ऐसे हो रहा था, तो वो ऊपर भी हो सकता था, नीचे भी हो सकता था। तो
3-4 कदम पीछे लिया मैंने, अपनी पोजीशनिंग करी, कैमरे को जो हम अपने उसमें जो बेहतर कर सकते हैं वाइड एंगल किया, उसको खोला, और जैसे जैसे मुझे लगा कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए उसके बाद मैं उसमें इंसिडेंट भी शेयर करी, क्योंकि मैं भी तितर-बितर हो गया था उस वक्त। आपको क्या लगा, आपने क्या फेस, क्योंकि मेरे दिमाग में कई ख्याल आपको लेकर मैं बताऊं क्या बोलते हैं, जितनी देर वो घटना चलती रही उतनी देर तो मेरा पूरा फोकस उस घटना पे था कि कैसे गोली चल रही है, कैसे उसने मतलब पूरा मेरा दिमाग उसमें था कि कैसे सरेंडर की पूरा प्रोसेस। और जैसे ही उन्होंने जीप में डाल के उसको यहाँ से निकले हैं और मैंने अतीक को देखा, उसके बाद मेरे दिमाग में एकदम से आया कि समर्थ कहाँ है, समर्थ कहाँ है। और मैं लाउडली चिल्ला रहा था, मतलब मैं ऐसा चिल्ला रहा था कि मुझे होश नहीं कि मैं कैसे चिल्ला रहा था। आप ये जहाँ देख रहे होंगे, ये घटना हुई है, इसके पीछे वाला एरिया है, पूरा ये अंधेरा था। मैं इस तरफ पीछे भागा और अपने कैमरे की लाइट जला के मैं किनारे किनारे चेक कर रहा था कि समर्थ को तो गोली नहीं लग गई है, और मैं चिल्ला रहा था। फिर मैं इस तरफ आया जब तक आपका फ़ोन आया कि तुम कहाँ हो। मैंने कहा मैं यहाँ हूँ। मैं कहा सही हो? बोला हाँ सही है। मैंने कहा चलो फिर तेज़ी में आते हैं। फिर हमने काम शुरू किया और जितना भी हम रिपोर्ट कर सकते थे वो हमने रिपोर्ट करी। भूल पाएंगे कभी इंसिडेंट? नहीं, ऐसा तो कभी मैंने देखा, जो मैंने कभी देखा नहीं उसको कैसे भूल सकते, मतलब जो आप इमेजिन नहीं कर सकते, जो हमने देखा उसको हम कैसे भूल पाएंगे। आपके बगल से गोलियां निकल रही हों, आपके सामने गोलियां चल रही हों, 2 डेड बॉडीज़ गिर गई हों। हमने शूट आउट के बाद कवरेज बहुत करी है, इनकाउंटर्स बहुत कवर किए हैं, मर्डर सामने शूट आउट, गोली लगना, खून, ऐसे फुटेज जो हम लोगों ने कुछ दिन पहले उमेश पाल हत्याकांड के देखे, तो वो सीसीटीवी के फुटेज थे। सामने से नहीं देखा था, सामने से नहीं देखा था, और सामने देख के और उसको कवर करना, एक एक एंगल पे कवर करना कि ये गिर गया, इसने पिस्टल चलाई, वो गोली चला रहा है, वो कवर करना, वो बड़ा एज अ प्रोफेशनल मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने ना इससे पहले कभी। घर वालों का फोन आया? बिल्कुल कोस आया। मेरे फादर कह रहे थे कि उनको थोड़ा प्राउड भी था कि तुम अच्छा कर रहे हो, लेकिन वो ये कह रहे थे कि यार क्या काम कर रहे हो, लेकिन एज अ प्रोफेशनल वो खुश हैं कि मैं हूँ। उनको ये अच्छा लग रहा है कि आज के बेटे का जिक्र हो रहा है, लोग उनको भी फ़ोन कर रहे हैं कि ऐसी जगह पे रह के बेटे ने इतना वैसे काम किया। हम प्रोफेशनल हैं, हमारा काम है ये, तो ये सब चीज़ें बहुत मतलब नाम और ये सारी चीज़ें मायने नहीं रखती, लेकिन काम तो करना होता है। पूजा, what I can get from this particular conversation is that duty comes first, for be it a reporter, be it a cameraman. And what story Neeraj shared, I also have one short story to share. When it happened, Neeraj was calling my name, Samarth out there. He even started searching with this flashlight, like I've been hit by a bullet. While I also had the same thought whether Neeraj has been hit by a bullet injury, because it was such a moment. Then I had no idea where to go. I was just around this particular place. I suddenly saw an area, a blood bank area, where there's a door. People were running inside that blood bank area and they were closing the door. And I just reached there and just looked back. I did not see my cameraman there. Yes. I thought that my cameraman would also be right there. But I hardly, I guess, 300 meters from the spot. And suddenly I dialed him. He did not pick my call. I thought there could be something. When he did not pick my call, I got really, I had no idea what's happening. Then again, within a second, I just again redialed him. Then he picked the call. Then he asked, "कहाँ हो तुम?" मैंने कहा, "आप कहाँ हो?" फिर वो यहाँ पर हम आए, बोले स्पॉट पे, मैं तुरंत स्पॉट पे पहुंचा, और यहाँ पर फिर there we started our coverage yet again, and that was such a moment for us, because at one time I must say about 10 seconds maximum where this was. And were there other, because it was a hospital, were there other people as well? There must have been other common residents also who were going into the hospital and saw the shootout around. So it was clearly a scary situation for everyone around. Not much, but there were few patients out there. So when this shootout happened, along with the local reporters of Prayagraj who were there, some patients also started running to save themselves, and that's what I'm talking about, the blood bank area, where they went inside and closed the door, and they were not allowing anybody else to enter inside that particular area. So that was one thing. So I also, because it was something blackish in around my eyes when this thing happened, and I started looking for my cameraman at the same time, because I was worried for him, my cameraman was worried for me, because we work as a team on ground. I can request Neeraj again to come into the cameras with you. I want to ensure both of you are acknowledged for the work that you've done, Samarth and Neeraj Kumar. On our screens right now, if we can have them again, both of them together. And this is, remember, they were at this spot where this incident has taken place, where Atiq Ahmed and Ashraf were shot dead. Both of them, remember, have been brave enough to not only face what happened,
They continued to report. They continued to face the situation and ensure that we had the visuals while they kept and ensured their safety as well. And this takes a lot of risk. Samar Srivastav, Neeraj Kumar, remember their names, and they had got us that visual. This was a scary situation. One bullet could have hit them as well. Leaving you with these visuals, heading into a very short break. Stay tuned. It's a continuous coverage that will be on after the break as well. Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com. Why does this happen? Let me tell you the science behind it. For more informative videos like this, keep watching India Today News Mo. Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com. Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com. Why does this happen? Let me tell you the science behind it. For more informative videos like this, keep watching India Today News Mo. Kerala's public health, all political parties traveling from different parts. Armed with facts, Looking at political back. she takes the news by its horns. Do you think the future of these students are not hampered?
Fierce, bold and direct, setting the tone for the biggest stories. From every corner and every angle. Expect nothing but the unfiltered truth. News first, niceties later. Watch me, Nabila Jamal, on India Today. You are watching India Today. Good morning and welcome. I'm Pooja Shali. Our big top story remains Atiq Ahmed, who was shot dead, and with his brother Ashraf right outside a hospital. 3 assailants have been taken into custody. Let's begin first with the headlines. Gangster-turned-neta Atiq Ahmed and his brother Ashraf shot dead live on camera. 3 accused have been taken into custody. All 3 have criminal history. They have confessed to becoming a big mafia ambition. Political showdown over Atiq Ahmed's murder. Yogi Adityanath holds a high-level meeting. Opposition calls the murder a staged incident. Owaisi seeks Supreme Court monitored probe and calls it a murder. In just a short while, Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal to appear before the Central Bureau of Investigation in the Liquorgate scam allegations. Aam Aadmi Party plans a massive show of strength before Kejriwal's CBI questioning. Congress gears up for Karnataka battle after multiple delays. Rahul Gandhi to storm Kolar today. Congress Chief Mallikarjun Kharge to join Rahul Gandhi's rally. Dissent, protests and ticket Nataka in Karnataka. Bommai says effort is on to retain Shettar. Shettar claims no reason yet for the ticket denial. In sports news, Royal Challengers Bangalore beat Delhi Capitals by 23 runs in the first game, while Punjab Kings beat Lucknow Super Giants by 2 wickets in the second match of the Tata IPL on Saturday. Yogi Adityanath, the Chief Minister of Uttar Pradesh, held a high-level meeting and has now ordered cops to submit a report every 2 hours. Chief Minister Yogi Adityanath has cancelled all the scheduled meetings. Meanwhile, in the state of UP is presently on a high alert. Police asked to step up vigil. Remember, with fear of disturbance of law and order and any protest that could break out, to ensure that peace prevails in the state. The state has been put on high alert. Section 144 has been imposed in several areas. Police have been asked to step up vigil. Large gatherings will not be permitted in UP, at least for the day. This is the aftermath of the killing of Atiq Ahmed, gangster-turned-neta, and his brother Ashraf. Both of them with criminal past, lived by the bullet and this time dead by the bullet as well. It's become a huge political showdown though. The opposition gunning for Yogi Adityanath government, calling this lawlessness. Let's go across now to Samarth Srivastav. Samarth Srivastav is that reporter on the ground with our video journalist Neeraj, who had been reporting exactly when this incident took place. They were asking a question to Atiq Ahmed live on camera when a gun appeared and one by one, almost 18 rounds of fire. Samarth, what is the current status with the government? Because opposition is gunning for Yogi Adityanath now. It's a political showdown. What is the government strategy right now? What initiatives and steps that are being taken right now? Well, Pooja, any such thing happening in Uttar Pradesh turns into a political thing. It's very normal, but as per the opposition leaders like Asad Owaisi, Akhilesh Yadav, BSP chief Mayawati are questioning this particular thing. How, under the tight police security, how the 3 shooters killed Atiq Ahmed and Ashraf, and that too in the police remand. So that's a big question coming in by the opposition parties. But BJP ministers, UP cabinet ministers like Suresh Khanna, Swatantra Dev Singh are saying that it happened for the good. We see the tweet of Swatantra Dev Singh. He said, Karm
he used the term "come" and then in a way just indirectly justified the killing of Atiq Ahmed and Ashraf. Though Yogi Adityanath, the Chief Minister of UP, hasn't spoken a single word over this particular update, but yes, he had made a 3-member judicial committee for the inquiry of this particular incident, and it's also likely Prayagraj police is soon going to file an FIR in this particular incident, because it is the Prayagraj police who is the party, which is the party in this particular incident, and that's why it is, as per the law, they have to register the FIR for this particular incident, and then only further arrestings will be justified, be it of those 3 shooters who launched firing on Atiq Ahmed and Ashraf. And that's why UP government is like also at one end patting their back with the killing of Atiq Ahmed, and though they have no hand in it, but still they are saying that he was something, that the dreaded criminal had more than 100 cases while Ashraf was having more than 50 cases. So that's why it has become a significant factor for the Uttar Pradesh police for in an indirect way, I must say. But Akhilesh Yadav has questioned and said that it is completely lawlessness in the state of Uttar Pradesh. Also Mayawati slamming the government. So that's a big thing coming in, and it's going to be worth seeing how the UP government reacts to all such like claims Atiq made by the Ahmed, who opposition. clearly had been claiming there was threat to his life, whether from rival gangs or anyone. He was even alleging that the government could kill him. But apart from that, why was there such a small level of security around him? Why were there what looked like constables only? Primarily, why weren't there commandos like there were with the convoys? And as Samar Srivastav continues to bring us these details, Uttar Pradesh presently is on a high alert. Questions are being raised, and it's likely that a report will be submitted to the government in just a short while. Remember, he was being taken to a hospital for a medical examination like had happened earlier as well. I'll go back to Samar Srivastav in just a short while. But here's what happened. If you're tuning in this morning, wondering what unfolded late last evening in Prayagraj. Gangster-turned-neta Atiq Ahmed and his brother Ashraf were shot dead in Prayagraj at about 10:30 p.m. Atiq Ahmed and his brother, and Ashraf, and remember whose son Asad was killed in an encounter on Thursday, they were then shot dead late last evening. The killing was caught live on television as our reporters were asking questions to Atiq Ahmed and Ashraf when they were being taken for a medical examination to the hospital. These are sensational visuals, maybe triggering as well. We advise caution to our viewers. And on your screen are those sequences, 18 rounds of fire. This is right outside Prayagraj's MLN Medical College, and where they were being taken for an examination as is protocol. There burst a sound of indiscriminate fire. They collapsed on the ground within seconds. A police personnel also sustained injuries during the incident. They have been taken into immediate custody. As details emerge, we are being told that 3 shooters have now been identified and have been apprehended by the cops. Chief Minister Yogi Adityanath held a high-level meeting, ordered a 3-member judicial commission to probe the shooting incident. Section 144 has also been imposed in the state. Cops carried out a late-night flag march at several locations in the state, fearing either protests or any other sort of disturbance of law and order. Atiq Ahmed और अशरफ की मौत हो गई है, ये बड़ी खबर यहां से आ रही है। जो मेडिकल कॉलेज जहां पर मैं हूं, यहां पर मेडिकल चेकअप के लिए आ रहे थे, और ये देखिए यहां पर पिस्टल्स मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां पर बाइक लुढ़की पड़ी है क्योंकि मीडिया यहां पर थी। कैमरे यहां पर देखिए गिरे हैं, टूट गए हैं, माइक आईडीज टूट गई हैं, और ये खून से लथपथ जो कपड़े हैं, जो अंगोछा है और ये पिस्टल्स हैं, वो यहां पर लगातार हैं। पुलिस कर्मियों से भी सवाल जवाब होंगे कि आखिर किस सिक्योरिटी में यहां पर लाए थे कि इस तरह का इस तरह की घटना यहां पर हुई है, ये भी पूछना पड़ेगा। तो सर ये किस तरह से कैसे हो गया सर, प्लीज इस तरह से घटना हुई है। यहाँ पर पुलिस जो है कुछ नहीं बोल रही है, आप देख सकते हैं तस्वीरें। यहाँ से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। सर गोली किसने चलाई सर? अनआइडेंटिफाइड लोग थे, किसने चलाई, क्या लगता है प्रथम दृष्टया आपको? सर प्रथम दृष्टया क्या लगता है आपको? तो देख सकते हैं पुलिस जो है वो सवालों से पूरी तरीके से यहाँ बचती आप देख सकते हैं नजर आ रही है। और यहाँ पर जमावड़ा था कई मीडिया पर्सन्स का। उस वक्त ये ताड़ातड़ गोलियां चलनी शुरू हुई, जहां पर अतीक अहमद और अशरफ दोनों को यहाँ पर दोनों की मृत्यु हो गई है, दोनों खत्म हो गए हैं। और ये बड़ी खबर आपको हम दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से कि किस तरह से यहाँ पर ये तस्वीरें मैं आप दिखा रहा हूं। चप्पल जो है वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर पड़ी हुई है। और लगातार यहाँ पर इस पूरे गेट को यहाँ से कुल 3 लोग बताए जा रहे हैं, 3 लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए थे, जो सूचना मिल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेडिकल कॉलेज जो है, इस अस्पताल को बंद कर दिया गया। हाँ
So Samar Srivastava was right there asking a question when suddenly there were 18 rounds of fire. Remember, even for our colleagues on the ground, both for our reporter and video journalist, it was a near miss. They were in the line of fire when they were asking that question, standing next to Atiq Ahmed and Ashraf. Samar joins me right now. Samar, what is the status around the hospital? Has that area been barricaded? Because there must have been other people also apart from them. And also, if you can hear me, Samarth, I was asking that what currently is the status around? What is the police saying? What sort of action has the government taken in this regard? I'll get in a word also from Abhishek Mishra, because Abhishek also is at that hospital premises, exactly at the spot where the shooting had taken place. So Abhishek, what are we expecting via the government? Are we expecting any sort of press conference statement? Owaisi early morning decided to charge at Yogi Adityanath government and held a press briefing. Mayawati has given a statement. Akhilesh Yadav has also given a statement, and that's important because Atiq Ahmed was an MP MLA from the Samajwadi Party. So go ahead, tell us what is the government plan and the political showdown of it. Hello. Well, absolutely expected. Now, because we have clearly seen how the government is so far not responding. Officials who were there, they were not saying anything. Yes, only the thing which was confirmed that three of the Abhishek, I'll just come back to you in just a short while, because at this point, remember, a lot of developments are coming. In India Today's cameras were rolling when Atiq Ahmed and his brother Ashraf were shot dead. Here's a full sequence of what happened. Samarth sending us live report. Nehru Mandaliya Chikitsalaya Prayagraj, which is commonly called Calvin Prayagraj Hospital by the people of Prayagraj. And once the jeep was stopped here, Atiq Ahmed and Ashraf. Number one, Ashraf came out first from this jeep, and then Ashraf, being a younger brother, gave support to Atiq, his hand, and then Atiq came in along with Ashraf. Then, moving from this point, come along with us. This was the point when Ashraf this side and Atiq to his right side. They started moving step by step inside this particular hospital where I am currently moving inside. So once after reaching at this particular point, India Today TV asked Ashraf and Asad. India Today TV confronted Asad and Ashraf right over there and questioned about his unavailability in the final rites of his son Asad. To which Atiq replied, "Nahi jane diya to nahi gaye." This was not the end. 2 seconds after Atiq's statement, Ashraf started saying, taking the name of Guddu Muslim, and suddenly a gunfire happened. A shooter came from behind and smashed a bullet inside the head of Atiq Ahmed right over there. And then 2 other shooters came from this point of this area and they started bullet fire. 17 rounds of fire as per the police, and Ashraf and Atiq Ahmed dead right there. India Today TV cameraman Neeraj Kumar was right there along with me, Samar Srivastava. It was around 10:40 p.m. right there. It felt like a cracker bursting on a festival of Diwali, but seconds after we realized it is no cracker, it is the bullet gunfire firing. We had no idea at that moment that it is a targeted killing, that they are only targeting those 2 gangsters. We thought that fire could spread anywhere. Few local reporters along with patients started running here and there. And there, what we got to know, they came in a form of a journalist carrying a dummy camera and the mic ID. And this is the circle where the camera, the dummy camera, was put in, was dropped in, and mic ID right there, and various circles you must be seeing. These are the points in the crime scene, crime area. These are the points where the bullets which were fired were placed. So this was the big thing. While I gathered courage in front of it was a complete blackish screen in front of my eyes. I just saw people running around, and there was a blood bank area right there, and people started hiding at that particular area. Closed the door.
When I reached there, I got concerned about my cameraman Neeraj, where he is. I had a thought, hadn't he suffered any bullet injury, and I rushed back and called him. He did not pick my call. But by the second time, he picked my call and said, I am at the spot. And I was hardly 200 meters from the spot, and I rushed here and we started recording our walkthroughs, started giving lives to the India Today TV. While my cameraman was also concerned about me because I was nowhere out there, because when this thing happened, we started sprinkling around areas. My cameraman started shouting my name, Samar, thrice, but he could not see me. Then he started his flashlights and went around this area. He used his flashlights. He thought whether I have suffered any bullet injury, and that's why I'm not replying to his call. And he started, because it's quite dark here, and even in night it was a complete dark area. So he used his flashlight to identify me whether I'm lying down here suffering a bullet injury or not. But suddenly he received my call, and we were having that horrific moment, and we gathered courage yet again, filed reports from here, the first channel to file the first ground report showing Atiq Ahmed and Ashraf with the injury, and the first channel, India Today TV, going live from the crime scene right there. Then within that moment, the shooters surrendered, police gathered courage and arrested them, and later entire commissioner, various senior officers reached the spot and things went normal. But I must say, it was the courage of my cameraman Neeraj Kumar who gathered those recordings, those visuals, because without him it was not possible to show you the exact ground report, ground reality for which India Today TV is known. With cameraman Neeraj Kumar, Samarth Srivastava for India Today. आज जनाजे में आप नहीं थे कि नहीं, क्या कहना आप कुछ कहना? Exactly. मेन बात ये है कि गुड्डू मुसलमान आज जनाजे में आप नहीं थे कि नहीं, क्या कहना आप कुछ कहना? मेन बात ये है कि गुड्डू मुसलमान आज जनाजे में आप नहीं थे कि नहीं, क्या कहना आप कुछ कहना? मेन बात ये है कि गुड्डू मुसलमान About to say about Guddu Muslim, it will never be known. But this, remember, was what appeared like a routine affair. Media persons trying to get a statement from Atiq Ahmed or his brother when they were being taken to the hospital. And there came a gun. And what started were 18 to 20 rounds of fire. These shooters ensured that both of them were killed there on the spot. And then they put their hands up and surrendered. Arvind Ojha, my colleague, was also there on the ground. Here's a report that he sent. पुलिस ऑफिशियल है, उसमें वो लोग शामिल हैं जो जब जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, जहां अतीक और अशरफ को गोली मारी गई थी, यहां स्पॉट पर मौजूद थे। उसके अलावा धूमनगंज पुलिस स्टेशन जहां कस्टडी में रखा गया था, वहां की कुछ पुलिस ऑफिसर है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये जो माइक आप देख पा रहे हैं, एनसीआर न्यूज लिखा हुआ है इसमें। ये एनसीआर न्यूज, ये प्रयागराज है, दिल्ली एनसीआर नहीं है। एनसीआर न्यूज का ये माइक है जो डमी बताया जा रहा है, और जो कैमरा है वो भी डमी है, उसमें बैटरी नहीं। जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है उन्होंने इस कैमरा और माइक को अपने कब्जे में ले लिया है। जो अटैकर्स थे वो यही कैमरा और माइक लेकर आया था, ऐसा सस्पेक्ट किया जा रहा है एफएसएल के टीम के जरिए और जो प्रयागराज पुलिस है उसके टीम के जरिए। तो इस वजह से इसको भी एफएसएल की टीम ने सीज किया। ये देखिए अपने साथ लेकर एफएसएल की टीम ये जो कैमरा माइक है इसको लेकर जा रही है। इसके अलावा 3 वेपन्स, वो देखने में सोफिस्टिकेटेड लग रहे हैं वेपन्स, वो रिकवर हुए हैं, जिसमें कुछ मैगजीन्स भी मौजूद थी। यानी जो अटैकर्स थे वो पूरी गोलियां नहीं चला पाए थे, उसमें काफी मैगजीन्स वो मौजूद थी, और वो रिकवर लाइव कार्ट्रिजेज जो है वो एफएसएल की टीम ने वो रिकवर किया है। लेकिन ये जो अब अगर देखेंगे, जो ये स्पॉट है, अब क्लियरली यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, एफएसएल की टीम ने यहाँ से सैंपल कलेक्ट कर लिए है। ये जो आप व्हाइट सर्कल में देख पा रहे हैं, ये वो चीजें हैं जहां पर कारतूस मिला है, यहाँ जहां पर गोलियां मिली है। इससे ये क्लियर हो रहा है कि कम से कम
कई राउंड यहाँ पर गोलियां चली है ऐसा लग रहा है, क्योंकि 20 निशान तो यहाँ पर बनाए गए और एफएसएल की टीम जो सैंपल है उसको लेकर जा रही है। और ये जरा क्राइम सीन को इंडिया टुडे पर हम रिक्रिएट करते हैं। ये देखिए, ये हॉस्पिटल का मेन एंट्री गेट है और यहीं से अशरफ और अतीक को लेकर बाहर आप देखिए यहाँ पर सिक्योरिटी पर्सनल कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर अब तैनात किए गए हैं। जब ये इस पूरे गोलीकांड की जानकारी मिली थी उसके बाद यहाँ से ये जो एंट्री गेट है, इस एंट्री गेट से अतीक और अशरफ को पुलिस अपने साथ लेकर जाती है एक रूटीन मेडिकल चेकअप के लिए। और यहाँ से जब लेकर जाती है तो ये ठीक एंट्री गेट है और एंट्री गेट के अंदर पहले मेडिकल चेकअप कराया जाता है। उसके बाद यहाँ पर अतीक और अशरफ वो मीडिया कर्मियों को बाइट देने लगते हैं। थोड़ा डिस्टर्बिंग विजुअल्स है क्योंकि ब्लड यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जब बाइट देने लगते हैं तभी अटैकर्स जो जर्नलिस्ट बनकर आए थे, और ये जो बाइक अगर आप देखें तो ये राउंड अप किया है पुलिस ने। ऐसा बताया जा रहा है कि इस बाइक से जो वो अटैकर्स थे वो आए थे और उसके बाद जैसे ही अतीक से इंडिया टुडे ने क्वेश्चन करने की कोशिश की कि वो असद के फ्यूनरल में क्यों नहीं जा पाया, और जैसे ही उसने बाइट देने की कोशिश की, जो अटैकर्स थे उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और घेर कर फायरिंग कर दी। So Arvind Oja telling us how these shooters were posing as media persons, carrying dummy microphone and a camera to mingle with the rest of the media persons who were trying to ask for a statement, as had been an affair for the past few days as well. Abhishek Mishra now joins me from Prayagraj. He's right there at the hospital premises, the site of the shooting that has taken place. Abhishek, I do have a question here because there are varied reactions coming in to this killing. There are, of course, questions being raised of how this was permitted. Is this lawlessness? We cannot call this justice at all. But for many who've been victims of the criminal clout of Atiq Ahmed and his brother Ashraf for the longest time, specifically in Prayagraj, which is erstwhile Allahabad, to them it is encounter justice. To them they believe that finally that justice have been delivered. So do tell us about how these varied reactions that are coming in from and that are with regard to the killing of Atiq Ahmed. Well, certainly, Pooja, there are mixed reactions as far as this shootout is concerned. Yes, on one hand, Mafia Atiq Ahmed and his terror in Prayagraj is quite evident. Only 100 cases is the number which we can verify as far as cases are concerned which are registered over him. But there are numerous cases which were never registered. Yes. Be at, taking illegal possession of any property, murder, threatening, so uncountable cases which were never registered, and that is the only reason that Atiq Ahmed had the identity of a mafia, of a don, of someone who has a very strong hold in the whole district of Prayagraj. So indeed, after this shootout, there are reactions also coming from the locals and from those people who were affected by his terror, saying that the justice has been delivered by nature, or or you say by the Almighty. But one thing is also very important, we have to look into the consideration, because the government, the UP administration, Prayagraj police has already been facing a lot of questions over the kind of security they provided. And the encounter speculation that has always been carried out throughout the week. As soon as Atiq Ahmed was brought from Sabarmati jail to here in Prayagraj, what about it? So that is also something which we need to take into the consideration. Also, on the other hand, if I talk about the sentiment at his bastion, at his area in Chakia and all those residential areas where he had a very sympathetic image, there for them it is something where we can certainly expect, because yesterday itself, when Asad's body was about to arrive, there were a lot of women who have gathered there, a lot of people who wanted to see Asad's face, but the police, because of the security, did not allow more of these people there. Only the known and the near ones and the relatives of the family were allowed for the cremation. So that's why I'm saying that there are mixed reactions, and it needs to be now taken into consideration. Politically, it has another story altogether. You have heard Asad Ahmed clearly slamming the UP government. Political showdown.
questioning and the policy, specifically the saying it's an Samajwadi unsafe Party, state. Abhishek, It because looks like it's it was from uncounted Akhilesh state. Yadav's party that this gangster had been elected as a member of parliament and an MLA for the longest time. His son Asad was with the BSP for a while, and therefore there is this political sheltering of the gangsters that also raised a question. Nevertheless, now questions will be put to the Yogi Adityanath government and Uttar Pradesh police as well about the lack of security, a security breach, because he was a high-profile prisoner, that and more. But I want to take you to the last moment. What were the last words that Atiq Ahmed was saying when these three assailants started to shoot? He was starting to talk about and said, the main point is about Guddu Muslim, and the firing started. Take a look at that. आज जनाजे में आप लोग क्या कहना, आप कुछ कहना हम दे देंगे। मेन बात ये है कि गुड्डू मुस्लिम आज जनाजे में आप लोग क्या कहना, आप कुछ कहना हम दे देंगे। मेन बात ये है कि गुड्डू मुस्लिम आज जनाजे में आप लोग क्या कहना, आप कुछ कहना हम दे देंगे। मेन बात ये है कि गुड्डू मुस्लिम जनाजे में आप लोग क्या कहना, आप कुछ कहना हम दे देंगे। मेन बात ये है कि गुड्डू मुस्लिम So who were these three men who killed Atiq Ahmed and Ashraf? They have been identified and their identities are as follows. Lavlesh Tiwari hails from Uttar Pradesh's Banda. Sunny is a resident of Himachal's Hamirpur, and also Arun Maurya from Uttar Pradesh's Kasganj, which means all three of them are not Prayagraj local residents. They then, after killing him and ensuring that both have died, decided to surrender. They put their hands up and surrendered to the police. Immediately, they were taken into custody. Sources are telling India Today that these shooters in the initial interrogation have confessed they basically wanted to become a big mafia. If you kill a gangster of that stature, you clearly get a ticket to get into the mafia domain at a higher level. All three of them have criminal history, according to police. Now, it is evident that they were criminals from the way they carried out the attack. It was point-blank range. It hit them in the head, on the body, 18 to 20 rounds of fire. And that precisely shows that they were trained with the attack and the intent was very clear. They came on a bike, posed as journalists, carried a dummy microphone and a camera. They carried fake identity cards as well. And as and when he was starting to interact with the media persons, when he was interacting with India Today's reporter on the ground, the firing started. अशरफ, आप लोग कुछ कहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे? कुछ कहेंगे आप? कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहें भैया, किस बारे में कहें? सर कुछ कहेंगे? किस बारे में क्या कहें? आज आपको जनाजा हुआ था, आज आप लोग वहाँ गए थे कि नहीं? आज जनाजे में आप लोग गए थे कि नहीं? क्या कहना, आप कुछ कहना हम दे देंगे। मेन बात ये है कि गुड्डू मुस्लिम India Today reached out to also the family of one of the shooters, Lavlesh Tiwari. This is what the family member, the father, had to say after he heard that it was his son who was one of the assailants. यज्ञ कुमार जी, यज्ञ कुमार यज्ञ कुमार यज्ञ कुमार यज्ञ कुमार ये बताइए, ये लवलेश कौन है आपका? लड़का है। आपको कुछ जानकारी हुई है कि कल एक शूट आउट हुआ है, उसमें लवलेश का नाम बताया जा रहा है? हाँ, टीवी में देखा। कैसा है ये लवलेश और किस तरह से ये कैसे वहाँ पहुँच गया, कुछ जानकारी है आपको? हमें कोई जानकारी नहीं है ना, हम लोगों से इससे कोई मतलब है। ये क्या घर में नहीं रहता था? ना। अच्छा, कब से प्रयागराज में रह रहा है ये? हमें नहीं मालूम। अच्छा, यहाँ नहीं, ये घर में आखिरी बार कब आया था? ये 7-8 रोज 5-6 रोज पहले था। हमसे घर से किसी कोई चीज से मतलब गर्ज नहीं, आता था अपना नहा धो के, जब भी 4-6 रोज में आता था नहा धो के अपना निकल जाता था। कोई ना किसी चीज से मतलब था। अच्छा, प्रयागराज ये आता जाता था, ये आपको बताता था कभी? ना, कभी हमसे बातें चीत नहीं हुई। पूरा मोहल्ला बता सकता है, पूरा घर बता सकता है, हर आदमी के हमसे लोगों से कोई मतलब गर्ज नहीं थी। सालों से बोलचाल बंद है। जब उस लड़की की थप्पड़ मारा था, उसका एक केस चल रहा है। कौन सा केस? अरे एक बिटिया को थप्पड़ मार दिया था इस चौराहे में, उसका मुकदमा चल रहा है। फिर क्या हुआ था? उसमें जेल गया था? हाँ, उसमें जेल गया था।
तो जमाना से कब छूट के आया था? अभी हमको याद नहीं, साल 1.5 साल पहले की बात है। अच्छा, अभी ये 5-6 दिन पहले यहाँ घर से निकला है जी। क्या करता है वैसे, क्या काम है इसका? कुछ नहीं काम, नहीं नशा करता है। नशेड़ी आदमी है, इसीलिए मेरे को सब लोगों ने त्याग दिया घर से बहुत पहले से। अच्छा, कितने भाई बहन हैं ये? 4 हैं। बहन नहीं है। ये सबसे बड़ा है? नहीं, तीसरे नंबर का है। 1 मिनट थोड़ा। अच्छा, ये बताइए कि अभी आपको जो ये जानकारी कैसे हुई कि कल ये भी साहब मिलता सूट आउट? टीवी देख रहे थे अभी। कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या कहेंगे हम कि जैसे उसने जो वारदात को अंजाम दिया है? क्या कहेंगे इसमें, हम कहने लायक क्या रहे शब्द हैं कि हमारे पास कुछ। पढ़ाई वढ़ाई किया था इसने? हाँ, इंटर किया। इंटर के बाद छोड़ दी? हाँ, बीए कर रहा था, बीए में फेल हो गया। इस समय कुछ नहीं करता था? कुछ नहीं। क्या किसी लोगों के साथ इसकी संगत थी जो ऐसे लोग और आते रहे हैं उनके साथ? लड़का है का, जब हमसे कोई मतलब है तो हम क्या बताएं कि किसकी संगत थी, कौन सा था। देखिए, हम इस वक्त बांदा जिले के शहर कोतवाली इलाके के केवटरा मोहल्ले में मौजूद हैं, जहां लवलेश तिवारी यानी जो कल प्रयागराज अशरफ और अतीक हत्याकांड में जो व्यक्ति शामिल था, उसमें बताया जा रहा है कि ये इसी इलाके का रहने वाला है। मैं कैमरा पर्सन के माध्यम से दिखाना चाहूँगा, ये वही गली है जहाँ पर वो रहता है। ये सामने ठीक जो लाल कलर का ये मकान देख रहे हैं, इसी पे किराए से ये लवलेश रहना है या उसका परिवार रहता है। मैं बता दूँ 4 से 5 दिन पहले पिता के मुताबिक यहाँ से अभी गया है और ये पूर्व में एक किसी मामले में यहाँ से जेल भी गया था, इसका उसमें केस भी चल रहा है। Now remember, politics has also erupted over Atiq Ahmed and his brother Ashraf's killing. Samajwadi Party chief and former chief minister of Uttar Pradesh Akhilesh Yadav alleged a complete lawlessness in the state. Remember, Atiq Ahmed was elected from the Samajwadi Party. Akhilesh further added, such an incident in the presence of UP police has created an environment of fear in the state. Hitting out at Yogi Adityanath government, AIMIM chief Asad Ahmed called this a complete failure of law and order under Yogi Adityanath government. AIMIM chief also held a press conference in Hyderabad this morning. Bahujan Samaj Party chief Mayawati slammed the UP government also, said this was improper security arrangement and demanded Supreme Court should take cognizance of the matter. The son of Atiq Ahmed, Asad, was associated with the BSP also for a long time. Now, accusing the corps of organizing a pre-planned murder of Atiq and his brother Ashraf, TMC MLA Babul Supriyo called for an investigation into this incident, even calling it a Talibani Raj. उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार रूल ऑफ लॉ के तहत सरकार को नहीं चला रही है, बल्कि रूल बाय गन को चला रही है। और ये पिछले 2017 से जब से बीजेपी की गवर्नमेंट बनी ये सिलसिला चल रहा है। ये पूरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर आती है, क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में खड़े होकर कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे। देखो, आपने ये कहा ना, ये कोई जबान है एक देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री की? एक मुख्यमंत्री की जबान होती है क्या? बताइए आप। कहते हैं इलेक्ट जोकर गेट अ सर्कस। उत्तर प्रदेश में ऐसा ही हो रहा है। अगर अपराधियों की सरकार होगी तो सरकार से और सरकार के इर्द गिर्द से, सरकार के काम से सिर्फ गोली बम धमाकों की आवाज आएगी, सिर्फ एनकाउंटर, फेक एनकाउंटर, ये एनकाउंटर, वो एनकाउंटर की आवाज आएगी। आज जो उत्तर प्रदेश में घटना हुई है वो सरकार के मुंह पे कालिख है। जो सरकार ये दम भरती है कि उसने कानून व्यवस्था को दुरुस्त कर दिया है, वहां सरेआम चाहे प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या हुई, उसके बाद जो हत्याओं का सिलसिला है, ये सिर्फ ये बताता है कि ये सरकार नहीं है, कोई गैंग है और वो कोई गैंग वॉर है जो चल रहा है। सरकार को इस पर जवाब देना होगा। सरकार की पोल खुल रही है, चेहरे पर कालिख है, शायद हाथों में खून भी। मेडिकल कॉलेज ले जाते हुए उनका कत्ल हुआ, 3 लड़कों ने मार दिया, उन लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पता चलता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कानूनी व्यवस्था कैसी है, कितनी पुख्ता कानूनी व्यवस्था है। अतीक तो बार बार कहता था कि वो यूपी जाएगा तो उसका कत्ल कर दिया जाएगा। 1 फीट 1.5 फीट के फासले से वो लड़का आके पिस्तौल से गोली मारता है सर में। ये कैसे मुमकिन है?
इसमें मुझे बड़ी साजिश की बू नजर आती है। और मैं समझता हूँ कि ये कुदरत का फैसला है और इसमें किसी भी कमेंट की आवश्यकता ही नहीं है। बाकी तो बात जब पूरी परिस्थिति सब सामने आएगी तब हम कहेंगे, लेकिन जितना हमको जानकारी मिली और जो कुछ मैंने इस पर टीवी पर देखा है, उस पर हम इतना ही कह सकते हैं कि एक तरीके का आसमानी फैसला है। लगातार जब जुल्म बढ़ता है तो कुदरत भी सक्रिय हो जाती है, वो अपनी तरीके से फैसला करती है। पुलिस की अपेक्षा में अगर इनके हमलावर तीन जो है अतीक की हत्या की, तो जैसा जो है हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस में तो काम कर रही है। अब तीनों हमलावर पकड़े गए हैं और पुलिस से कम धन्यवाद, कम से अब जो पकड़े गए हमलावर हैं वो कैसा उस पर जांच होता, उसका कैसा मामला आता, खुलासा होता, उस पर हम उसके बाद ही हम कुछ कह सकते हैं। Let's go across to my colleague Abhishek Mishra. He's currently at that hospital premises, the site of that shooting that took place yesterday late into the night at about 10:30 p.m. While these politicians are bickering right now, isn't it also a sad state of affairs that these gangsters were given tickets by the Samajwadi Party? The son was also associated with the BSP for a long time. So it's also about a lot of political sheltering. As much as it is about today targeting the Yogi Adityanath government, they are saying that there is lawlessness in the state. Well, absolutely, Pooja, and that is something which is a topic of discussion and a big debate in the political circuit of Uttar Pradesh. One, Atiq Ahmed was, yes, indeed a mafia, more than 100 cases registered over him. But if you look at his political background, strong backing, member of parliament, MLA, and at the same time, his wife was also a political leader. So that is something which gives us an indication and clarity that, you know, involvement of the politics around with this mafia has always existed in Uttar Pradesh, and its repercussion we have seen earlier as well. So that indeed has given a lot of, you know, political light to this whole incident. Yes, opposition one and again is slamming the government. They are saying that the action taken first of the encounter was not justified of Asad and Ghulam, which was done in Jhansi. Then yesterday's incident where Atiq Ahmed and Ashraf both were shot dead in the presence of media, in the presence of the camera, now giving them an opportunity over questioning over the law and order and the policy of zero tolerance, which the Yogi Adityanath government is claiming in Uttar Pradesh. And that is what is a big thing. We have also seen late night, CM Yogi Adityanath held a meeting at 5 KD as his residence, you know, notifying the DGP, ADG, Law and Order, Home Secretary. They were over there and they got the sense that it could actually be a, you know, problematic situation, not just in Prayagraj, but in whole Uttar Pradesh. And that's why the, you know, measures have been taken. Section 144 has been imposed. At the same time, the borders have been seized. It's also important to remember amid all of this that this, you know, this speaks of system. This also speaks of why Atiq Ahmed was not, you know, taken to court and was charged with serious cases earlier. Because remember, there was amid all those 100 and more than 100 criminal cases, only one eyewitness had decided to come forth. It was Umesh Pal, and he was also shot dead in broad daylight. Abhishek, I want to thank you for now. This remains our big top story, but there's another big political story also that is set for this Sunday. Shambit Patra is addressing a press briefing. Remember, Arvind Kejriwal will have to go to CBI. मैंने दस्ताने पहन रखे हैं और मैंने मौकाए वारदात पर उंगलियों के निशान नहीं छोड़े हैं, उसका अर्थ ये नहीं होता है कि मैंने जुर्म नहीं किया है। अरविंद केजरीवाल जी, आपने मनीष सिसोदिया के दस्ताने पहन करके भ्रष्टाचार किया, शराब नीति में घोटाला किया। स्वाभाविक रूप से अब मौका आ गया है कि दस्ताने उतरने चाहिए। The gloves should be off and the country should know the hands which were responsible for massive corruption in the excise policy scam in Delhi. बंधुगण, पब्लिक डोमेन में एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय, वह विषय है विजय नायर का। ये विजय नायर कौन है? ये विजय नायर आम आदमी पार्टी का कम्युनिकेशन का हेड है और ये जो दिल्ली की शराब नीति है, ये जो शराब घोटाला हुआ है, उस घोटाले का एक बहुत अहम कड़ी है। अभी थोड़े दिन पहले आप सभी ने न्यूज़ में देखा होगा कि ईडी ने, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट
जो एक जांच एजेंसी है, इस एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के चार्जशीट में उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा कि ये जो विजय नायर है उसने मीटिंग फिक्स करने की कोशिश की अरविंद केजरीवाल और समीर महेंद्रू। ये जो समीर महेंद्रू है ये एक बहुत बड़ा सरगना है इस पूरे दिल्ली एक्साइज स्कैम का और एक बहुत बड़ी निजी कंपनी का मालिक है जो एक्साइज स्कैम में, शराब घोटाले में जो सम्मिलित था। तो विजय नायर ने कोशिश की इन दोनों की मीटिंग हो, अरविंद केजरीवाल और समीर महेंद्रू की, मगर किसी कारणवश ये मीटिंग नहीं हो पाई और अंततोगत्वा फाइनली एक फेस टाइम के माध्यम से अरविंद केजरीवाल ने समीर महेंद्रू को ये एडवाइस दिया, उन्होंने ये डायरेक्शंस दिया कि आप चिंता मत करिए, ये जो विजय नायर है ये हमारा आदमी है, आप जो ये कहे उसी हिसाब से चलिए, काम ठीक हो जाएगा, काम ठीक हो जाएगा। तो आप सोच के देखिए, ये तो डायरेक्ट एविडेंस है और ये सब कुछ पब्लिक डोमेन में है। ये ईडी ने अपने चार्जशीट में लिखा है, तो क्या जांच हकीकत में नहीं होना चाहिए? जस्ट बिकॉज यू आर द चीफ मिनिस्टर, आप चीफ मिनिस्टर हैं, आप वीआईपी हैं, तो सवाल और जवाब ये आपके साथ नहीं होने चाहिए। आपने समीर महेंद्रू से बात किया, विजय नायर का इस्तेमाल किया और उसके बाद 15 किलो घी भी लिया। 15 किलो घी की कहानी आप जानते हैं किस प्रकार से 15 करोड़ रुपए 15 किलो घी के रूप में लिया गया। 15 किलो घी लेने के बाद आज आप आग में घी डालने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने डे 1 से, प्रथम दिन से ही कुछ सवाल अरविंद केजरीवाल जी पे दागे थे। हमें नहीं पता सीबीआई अरविंद केजरीवाल जी से क्या सवाल पूछेगी, ये जांच एजेंसी और अरविंद केजरीवाल के बीच का विषय है। अरविंद केजरीवाल जी शाम को जरूर बताएंगे, मगर हम बार बार 6 सवाल अरविंद केजरीवाल जी से पूछ रहे हैं और अरविंद केजरीवाल जी एक भी सवाल का सटीक जवाब नहीं दे रहे हैं। पहला सवाल, अरविंद केजरीवाल जी, ये दिल्ली एक्साइज पॉलिसी जिसको शराब पॉलिसी कहते हैं, शराब नीति कहते हैं, इस शराब नीति को आपके घर पे लागू किया गया, आपके कहने पर कैबिनेट ने इसे पारित किया दिल्ली के, और आपने बार बार कहा कि ये दिल्ली एक्साइज पॉलिसी के कारण दिल्ली के राजस्व को बहुत बड़ा लाभ होगा। जी, इससे पहले आज तक जितना लाभ नहीं हुआ था ये सारे दिल्ली एक्साइज पॉलिसी के कारण लाभ हो जाएगा, मगर 3000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और दिल्ली एक्साइज पॉलिसी को आपको वापस लेना पड़ा। क्या कारण रहा कि जिसको आप कह रहे थे कि लाभ होगा उसी पॉलिसी को आपको वापस लेना पड़ा? नंबर 1 प्रश्न। इसी प्रश्न में एक दूसरा प्रश्न मैं जोड़ देता हूं, क्या दिल्ली एक्साइज पॉलिसी आपके घर पर बनी थी और क्या दिल्ली एक्साइज पॉलिसी, ये जो शराब नीति थी, इसकी कॉपी सेक्रेटरी को आपके घर पर दिया गया था? दूसरा प्रश्न जो भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल से बार बार पूछती रही है, ब्लैक लिस्टेड कंपनियां जो थी, उन ब्लैक लिस्टेड कंपनीज को आपने ठेका देने का काम किया, ये गैर कानूनी था। आपने किया या नहीं किया? किया तो क्यों किया, किस कारण से किया, किसके कहने पर किया? तीसरा, क्या ये हकीकत नहीं है कि जो होलसेलर्स थे, जो ठेकेदार थे, उनका जो कमीशन होता है शराब बेचकर, उस कमीशन को 2% से 12% बढ़ाने का काम किया और 6% कमीशन आपने ब्लैक मनी के रूप में पीछे के दरवाजे से आम आदमी पार्टी में लिया। इसी को शायद 15 किलो घी आप कहते थे। 2% से 12% कमीशन आपने बढ़ाया या नहीं बढ़ाया, इसका जवाब दीजिए। चौथा प्रश्न, क्या यह हकीकत नहीं है कि शराब नीति बनने से पहले एक कमेटी बनाई गई थी, जिस कमेटी में एक्साइज कमिश्नर भी थे? उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे कि ये कानून सम्मत होगा, कानून के मुताबिक एक्साइज पॉलिसी इस प्रकार से बननी चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी, क्या कारण था जो इन रिकमेंडेशंस को ताक पे रख दिया गया, इन सुझावों को ताक पे रख दिया गया और आपने अपने मन मुताबिक नई शराब नीति बनाई? किसके फायदे के लिए? पांचवा प्रश्न, क्या यह हकीकत नहीं है कि 144 करोड़ रुपया आपने अपने मित्रों का, अपने यारों का, जो ठेकेदार थे शराब के, उनका आपने माफ किया? क्या कारण था? और अंतिम प्रश्न और छठा प्रश्न है, ये विश्व में पहली बार हुआ होगा
आज अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे हिंदुस्तान को नंबर 1 देश बनाना होगा जी, और मैं ही हिंदुस्तान को नंबर 1 देश बनाऊंगा। शराब बेचकर आप हिंदुस्तान को नंबर 1 देश बनाएंगे? स्कूल के सामने शराब की दुकान, पूजा घर के सामने शराब की दुकान, कॉलोनियों में हर जगह शराब की दुकान, एक बोतल के साथ एक बोतल मुफ्त, ये पॉलिसी बना के आप हिंदुस्तान को नंबर 1 देश बनाएंगे? प्रश्न उठता है, ये विश्व में पहली बार होगी कि बोतल तो ज्यादा बिके मगर पैसा कम आया। ऐसे कैसे हो सकता है? वी सोल्ड मोर बॉटल्स बट वी गॉट लेस मनी। वेयर डिड द बैलेंस गो? ये मोटा माल कहां गया? ये घी जो निकलता है, आपने बोतल ज्यादा बेचे, पैसा कम आया, बीच की मलाई और घी ये किसके पास गया? ये छठा सवाल है। अरविंद केजरीवाल जी, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आपने कहा कि भारत से मुझे बेइंतहा प्यार है। माफ करिएगा, आपको भारत से बेइंतहा प्यार नहीं, आपको अपने सत्ता से, आपको अपने पोजीशन से और आपको भ्रष्टाचार के पैसे से बेइंतहान प्यार है। उसका नाम भारत मत करिए, भारत को गाली देने का काम मत कीजिए। अरविंद केजरीवाल जी, आपने कहा कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये लोगों को सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाती, उनको जेल में डालने की धमकी देती है और ये अहंकार है। केजरीवाल जी, आप आज से 10 साल पहले के वीडियो निकाल कर देखिए। वो XXL का शर्ट, आपका वो टीवी के सामने आना, आके हर दिन शाम को 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। देश में ऐसा कोई नेता नहीं बचा था, लालू प्रसाद यादव, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और तो और देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी तक को आपने नहीं छोड़ा था। आपने कहा था ये सारे भ्रष्ट हैं जी। भ्रष्ट भी नहीं कहते थे, आप कहते थे ये सारे चोर हैं और सारे चोरों के एविडेंस हमारे पास मौजूद है। मैं सत्ता पर आऊंगा, सबको एक एक करके जेल के सलाखों के पीछे भेजूंगा। आप तो जेल के सलाखों के पीछे, आप सत्ता में थे नहीं। आप सत्ता में नहीं होने के बावजूद नाम लेकर लिस्ट जारी कर कर कहते थे इन सब लोगों को जेल भेजेंगे। आज आप अगर मोटा माल भ्रष्टाचार का कमा रहे हैं तो क्या आपके मंत्रियों को जेल नहीं जाना चाहिए? जेल जाना चाहिए। वो मंत्री जेल में हैं और उनको बेल नहीं मिल रहा है क्योंकि कानून के विरोध में काम किया है। क्या आपकी पूछताछ नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि आपने भ्रष्टाचार किया है, यह नीति आपने बनाया है। आपने कहा 75 वर्षों तक यह देश गरीब, घोटालों से मारा हुआ देश। बिल्कुल सच कहा। कांग्रेस के राज में यह देश भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ था और आज कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आपको फोन करके सोनिया जी के समर्थन को जताया है कि चिंता मत करिए केजरीवाल जी, आपके पीछे सोनिया जी खड़ी हैं, आपके पीछे राहुल गांधी खड़े हैं, हम अरविंद केजरीवाल के लिए लड़ेंगे। आज अरविंद केजरीवाल जी, सोनिया जी और राहुल जी एक हो गए हैं। ये भ्रष्टाचारियों की बारात निकली है और आजकल एक ये नया फिनोमिना चल गया है। मतलब आप भ्रष्टाचार करेंगे, मोटा माल कमाएंगे, जांच एजेंसी आपको जांच के लिए बुलाएगी तो बैंड बाजा बारात लेके जाएंगे। जहां जहां उनके मुख्यमंत्री है सबको बुलाएंगे, जो जो मंत्री है उनको बोलेंगे तुम भी चलो, फिर हाथ वाथ हिला करके बाय बाय टाटा, बहुत बढ़िया, हमने बड़ा अच्छा काम किया, गाड़ी से निकल करके जश्न भ्रष्टाचार मनाएंगे। अभी थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। वो अरविंद केजरीवाल जी भी कार से निकलकर हाथ वाथ हिला कर जाने वाले हैं जश्न भ्रष्टाचार मनाते हुए। ये वही लोग हैं जो ऑटो में लटक लटक के आए थे शपथ लेने के लिए कि हमारे पास तो गाड़ी नहीं है जी। सिर्फ केजरीवाल जी के पास वो नीली गाड़ी थी, बाकी तो किसी के पास गाड़ी नहीं थी। सब ऑटो में आए थे, याद करिए, लटक लटक के, दो इधर लटके थे, दो उधर लटके थे। हमारे पास तो गाड़ी नहीं है जी, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है जी। और आज देखिए चकाचौंध देखिए उनकी। ऐसे ये लोग हैं, बोल रहे थे केजरीवाल जी आज। All right, so that's the Bharatiya Janata Party hitting out at Arvind Kejriwal, but this is just before he's to go to the CBI with regard to questioning in the liquor gate scam. But here's what Kejriwal has said. Arvind Kejriwal, Delhi Chief Minister, Aam Aadmi Party's national convener as well, has said, and I quote him here, the CBI is working at Bharatiya Janata Party's behest. It is the BJP that has ordered the CBI to arrest me. Now, he's using the word arrest, even though today, remember, it is more about the questioning that he has to go to the CBI for. But he's saying that there could be a possible arrest in near future
and that it has been ordered by the Bharatiya Janata Party or the government at the centre. We can see heavy police deployment right outside the CBI headquarters where Arvind Kejriwal has to go, senior officers that I can see. Let's listen in now to what Arvind Kejriwal is saying. इन्होंने आज मुझे CBI बुलाया है, थोड़ी देर में घर से निकलूंगा, पूरी ईमानदारी और सच्चाई से इनके सभी सवालों के जवाब देंगे। जब कुछ गलत किया ही नहीं तो फिर छुपाना क्या। ये लोग बहुत ताकतवर हैं, किसी को भी जेल भेज सकते हैं, किसी को भी, चाहे किसी ने कोई जुर्म किया हो या ना किया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत पावरफुल लोग हैं। कल से इनके सारे नेता चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे, केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे। शायद बीजेपी ने सीबीआई को आदेश भी दे दिया है कि केजरीवाल को गिरफ्तार करना है। So this will be, of course, the big political story coming in through the day. I'll be getting you the latest on that. Heading into a very short break, the other big stories, of course, gangster-turned-neta Atiq Ahmed shot dead with his brother Ashraf by 3 assailants who were not from Prayagraj but had come prepared with an intent to kill. We get you the latest, how it happened live on camera, and 3 accused who have criminal history. That and more after a short break. You are watching India Today. As State of War Karnataka begins, a reminder, who is the true number one? The 5 big voices speak to us before all the others. From Chief Minister Bommai to Chief Challenger Siddaramaiah, from old warhorse Yadurappa to muscleman DK Shivakumar and Kingmaker Kumaraswamy. When it's Karnataka, there's no competition. India's #1 election channel. पहचान गए हैं? बोल नहीं सकते। Look at this Sarah screen, jumping with immense joy after meeting its friend after a hiatus. The bird spread its wings, tried to find a way out of the space to meet Mohammed Arif while he was patiently standing outside the bird's enclosure, eagerly waiting to meet. The Sarah screen was found by Arif in August 2022 in an unconscious state, lying injured and bleeding. Arif rescued this endangered bird and nursed it back to health. Soon after, the bird began following Arif everywhere, wherever he would go and whatever he would do. But Arif's friendship with crane suffered a jolt when the forest department said that keeping the bird was illegal. The officials took the bird away to Kanpur Zoo. उसे आज़ाद कर दिया जाए और किसी भी जो है जो पक्षी विहार होता है जहां अपनी आज़ादी से पंछी रहते हैं वहीं उसको जाके ट्रांसफर कर दिया जाए तो जैसे पहले रहता था वैसे रहने लगे। This beautiful and heartwarming story proves that true love really knows no bounds. Bureau Report, India Today.
us a fine detail as to what Mercedes has done when it comes to fine-tuning the vehicle for Indian roads? Well, firstly, starting from the E-Class, if you see, we have been able to have a long wheelbase E-Class because we have customers who drive themselves on weekends, but on weekdays they have drivers for parking and others. So we said that for India, the long wheelbase is a great solution. So E-Class, the GLE, for example, comes on a longer wheelbase platform. So that's one customization. The second thing for India is also the entire thing about connected cars. So we were the first to introduce connected cars with embedded SIM. The app provides a lot of usage, and daily usages. For example, you can have you can ring fence the way the car goes in. So if your kid is getting dropped to school, if it goes beyond the perimeter, you get an alert to pre-climate control. It's such hot weather, you want to get the car ready before you get in. So these are a couple of topics there. The third pillar is localization. So we were the first again to localize an electric car in India with the EQS, and we have been continuously investing on localizing also cars for India. Right. Also, thirdly, I'd like to ask you, when it comes to the pricing for this vehicle, about 3.3 crores, it's a bit premium, of course, what the customer gets. Tell us the deciding factor of the pricing as far as this vehicle goes. So frankly, this is a CBU, so the taxes are for sure high, and therefore that reflects in the pricing. But for us, it's beyond price because we are also offering, for example, every customer who books now in this quarter will get a delivery from Lewis Hamilton. Now, this is something a money can't buy experience. And so we are focusing more on some of those aspects. The growth for 2023, how are you witnessing that and the demand, especially you mentioned the top end is in the real game changer for Mercedes right now. How's the demand otherwise for the whole year looking like? No, I think with quarter one, we had 17% growth in this first quarter. So we still maintain our double-digit growth projections for the year. And if that happens, this should be another best ever year for us. So the team is working on it. On the other side, we have headwinds. We have headwinds with Forex because the rupee not being as strong. We had to take the second price increase in April. For that, we have got some financial products now for which the customer can really, because of the high residual values, buy the car at a much lower EMI. So we are trying to come up with some solutions. But on the other hand, we also see geopolitical situations changing. Maybe there is some headwinds there. But when I look at the order bank position, as of 1st of April, we have more than 4,000 customers waiting for our cars. Many of our cars are, the top-end vehicles are waiting for 6 to 16 months. So that gives us confidence that the growth momentum should continue. It's one of a kind in India, also one of the most loved genre in films. With 2 movies already in, Stree and Bheriya, the sequel of the same, are in the pipeline, only to expand the much-loved horror comedy universe. The vision of Dinesh Vijan has become a reality, and how? Stree. अगले 4 रात वो शिकार पे आने वाली है। कौन? स्त्री पुरुषों को उठाती है और सिर्फ वस्त्र छोड़ती है। Stree was the first film to be a part of this universe. Released in 2018, the film came as a relief, especially for fans who had been longing for a good watch in this genre. After several trials and errors, Stree worked big time. From catchy dialogues to small-town boys' puns and a ghost in the picture. Humor and horror had the best marriage. Even the star cast leveled up how Stree was perceived by the audience, headlined by Rajkumar Rao as Vicky, and his co-stars Apar Shakti and Abhishek Banerjee shined as supporting partners. Vicky, please. वही तो कह रहे हैं, Vicky, please. तुम्हारे अंदर ना प्रेम भाव ही नहीं है। हाथ लाओ। Vicky, please.
Also, how can we forget Pankaj Tripathi, the perfect cast? सच्चा प्यार एक तुम्हारी जनरेशन का प्यार है फर्स्ट टाइम देखा तुझे लव हो गया सेकंड टाइम में सब हो गया And whether Shraddha Kapoor was a ghost or not was left unanswered, but after watching her in this dance number, she would be the most loved ghost of all. Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com. Why does this happen? Let me tell you the science behind it. For more informative videos like this, keep watching India Today News Mode. You are watching India Today. Good morning and welcome. Thank you for tuning into India Today Television. I'm Pooja Shali. Let's begin first with the headlines. Gangster turned Neta Atiq Ahmed and his brother Ashraf shot dead live on camera. All three accused have criminal history, confess now to mafia ambition, say they wanted infamy and notoriety by killing dreaded gangsters. But it's a full-on political showdown over Atiq Ahmed's murder. Yogi Adityanath holds a high-level meeting. Opposition calls the murder a staged incident. Owaisi seeks a court-monitored probe in the murder. Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal to face CBI in the Liquorgate scam allegations. Kejriwal slams the CBI, says it's working at BJP's behest. BJP hits back, calls Kejriwal the kingpin of scam. Dissent protests and ticket Natika in Karnataka. Bommai says efforts are on to retain Jagdish Shettar. Shettar claims no reason yet for the ticket denial. Congress gears up for Karnataka battle after multiple delays. Rahul Gandhi to storm Kolar today. Congress chief Mallikarjun Kharge to join Rahul Gandhi's rally. In some sports news, Royal Challengers Bangalore beat Delhi Capitals by 23 runs in the first game, while Punjab Kings beat Lucknow Super Giants by 2 wickets in the second match in the Tata IPL on Saturday. Bang! 1 bounce and 4.
Inside scoop now emerging of how did these shooters plan the murder of Atiq Ahmed and his brother Ashraf. So here's what happened. The three assailants, the three young men, the shooters, stayed in a Prayagraj hotel for 2 days. They booked a hotel within the city, and that is where the recce was done, and they planned the murder. The hotel in Prayagraj has been now raided by the police and the agencies where they had stayed. So there was a small hotel that they had decided to book for the next 2 days. That is where they tried to do the recce of the area. The visual that you're looking at is one of the shooting that has taken place. Another is the preparation for the burial of Atiq Ahmed and his brother Asad. Lived by the bullet, dead by the bullet, but of course now it's a huge political showdown and many questions are being asked over the shooting that has taken place, the opposition calling it complete lawlessness, while many who have been his victims and of his terror and criminal mafia days say this is to them justice. But here's the inside scoop of how the shooters planned the murder. They booked a hotel in Prayagraj, and that is where they did the recce and planned it all. Samarth Srivastava was right there at that moment, in fact in the line of fire, when he was asking questions to Atiq Ahmed, the gangster turned Neta, and his brother Ashraf while they were being taken for a medical examination. So more details emerge now, Samarth, of how they had managed to do a recce. Take us through all the details that you're getting from the investigators. Well, exactly what we are getting from the reports that recce was done. It was not a day one thing when that entire killing procedure was planned. They were even, at per the sources what we are getting, they were also seen near the Dumalganj police station, and they were having that fake ID and a dummy camera in a way to deviate the policemen and let them believe that yes, they are exactly the media persons, and that was the biggest win for them and the biggest loss for the police, because he was in the police remand for Monday 5 p.m. and it was the responsibility of police team to keep him safe. And what we got to know that they were staying in a small hotel in Prayagraj, though police is raiding that particular hotel and might be recovering some belongings of the killers, of the shooters. But it's going to be worth seeing that how this incident, because the modus operandi of this particular incident is quite new. We haven't seen any such incident where a killer coming in the name of a media person, and when you are taking the bite or tic-tac and then such shooting happens, that is really such a horrific incident. Because I was present there, my cameraman was present there, I still have that nightmare in my head, but that was really shocking. Whosoever saw the video was shocked, because it's going to be very scary for every journalist now whenever they will be covering any crime incident, and whenever the chance will come there where they will be like taking the bite of some accused, be it a rape accused, be it a murderer or any other. They may have the picture of this Prayagraj, that some gunfire might happen there also. So it was completely a life-risking coverage for us on the ground, because we had no idea that something like that could happen. Though we had some idea while moving to Sabarmati jail or while taking Atiq Ahmed via Sabarmati, Chitrakoot to Prayagraj, that encounter may happen, because it was already on the internet and we had that thing in our mind. But once he reached Prayagraj and once Asad was killed in an encounter, nothing like that was around, that something like that could also happen. Yes. And police was also giving the proper cover. UP ATS chief confirmed that ATS was also questioning, STF was also questioning. So it was nothing happening, but it happened, and it was quite shocking as well. So is that hotel also now being raided in Prayagraj, Samarth? Well, Pooja, what we are getting from sources, police would raid that particular hotel, and it is possible that police would be looking for some belongings, that they would be having maybe some weapons as well. All right, Samarth, is there an activity around you? Is something happening at the hospital premises that we can see? No, Pooja, nothing like that is happening. It's just police has cornered that particular many area are also with the talking police about barricades on. Many are talking about the sloganeering also that these accused were doing, and that's also surfaced with regard to the videos that are coming forth.
Yes, exactly. When this incident happened last night, few locals of Chakia area, the area belonging to Atiq Ahmed, came around this area, and what I remember, a neighbor of Atiq Ahmed also came in, and this is the spot where this entire incident happened, and the neighbor came to that particular area and even said that it is all being done by state government, but they refused to show their faces. They were in a way came and stayed for seconds. They just came in to see where Atiq Ahmed was killed. While when they were returning, I saw around 20 to 40 locals of Chakia area coming sloganeering for some time, because police in a way shifted them back with a lathi in their hands, but it was just for a moment. And what we are getting, that there is a disappointment and anger in the Chakia locality, because that locality was dominated by Atiq Ahmed and his brother Ashraf. So it's going to be worth seeing, and that's why CM Yogi Adityanath has ordered all the police SPs to do the proper patrolling, especially in the sensitive areas of Prayagraj. And not just Prayagraj, but entire Uttar Pradesh. Section 144 has already been imposed in the state and Prayagraj as well, and that's why such concern is very important. Stay on, because after that shooting that took place, this is when Samarth was right there. These men put their hands up, surrender to the police, and start to shout some slogans as well. Let's dip into that part of the video too. तो ये राउंड अप किया है पुलिस ने, ऐसा बताया जरा कि इस बाइक से मैं आप नहीं थे कि नहीं, क्या कहना मेन बात, ये जो माइक आप देख पा रहे हैं एनसीआर न्यूज लिखा हुआ है इसमें, ये एनसीआर न्यूज। मेन बात ये है कि गुड्डू मुसलमान A day after that killing of Atiq Ahmed and his brother Ashraf, Atiq's grave is now being dug. The burial preparations are currently on. Atiq Ahmed and his brother Ashraf will be buried in Prayagraj itself. These are the first visuals coming in. The burial preparations are currently on. Just about 24 hours ago, remember, his son Asad was also buried after an encounter that had taken place with the Uttar Pradesh police. And they had said that it was retaliatory firing, in which Asad was eventually first injured, and then eventually he had died of those injuries. But what unfolded yesterday, late last evening, was absolutely shocking. And now joining us for the latest on that, Samarth, for giving us updates as well. Samarth, of course, it's good to see you safe as well. You and Neeraj, who were there recording, reporting live as in what was happening. Now, what is the procedure today? What is the protocol? What is the government going to do? Because a lot of questions are being raised to the government as well, that even if they were gangsters, even if they had this dreaded past, that such an incident of shooting cannot be accepted and there has to be a report filed. What are we expecting today as the heightened activity have picked up both in political circles and as investigations? Well, that has been the focus of UP government, because they feel that this is the wrong way of eliminating any criminal or mafia, because they were in a way under the police remand, which was ending on Monday around 5 p.m. and that's why CM Yogi Adityanath took a high-level meeting in Lucknow yesterday at 5 KD, and that was the concern of the Chief Minister, and that's why he formed a 3-member judicial committee to inquire this particular incident, and that's why it has become very, very crucial for the police officers, because ADG, be it ADG Law and Order or DGP Uttar Pradesh, they have all of them have been in a way informed and told and directed to do the marching in the sensitive areas and do the patrolling to avoid any mishappening. So these were the things mentioned by the CM Yogi Adityanath in the high-level meeting, and UP government is quite concerned about that particular thing, and that's why Section 144 has already been imposed in the state and Prayagraj as well. All right, so you know, that is the incident of shooting that had taken place. The final words when Atiq Ahmed was saying, and the main point is about Guddu Muslim, and there comes a gun pointed blank range. This, remember, is very close, directly pointing to his head. 18 to 20 rounds of fire, ensuring that he's dead on the spot. The 3 men push their hands up and surrender. And now there are preparations that are taking place for his burial. It will be in Prayagraj itself.
24 hours ago, it was his son, Asad, who was accused of killing Umesh Pal. Remember how all of this is connected. It all started with Raju Pal's murder in 2006 and the case from 2007, specifically with regard to in which Atiq Ahmed was accused that he had been defeated in a by-poll election and Raju Pal had won it as BSP MLA and he was kidnapped and shot dead. Only one eyewitness had dared to come forth in that case, and it was Umesh Pal. In the month of February 24, he was shot dead in broad daylight. In that, his son Asad, Atiq Ahmed's son Asad, was accused of leading that shootout with 6 to 7 gunners in broad daylight. And now, Atiq Ahmed, accused of conspiring it all, has been killed. Whether it is about rival gangs, whether it is about as much about politics or lack of police management, is this about lawlessness? Is this about justice also for many people who were victims of Atiq Ahmed and hadn't been able to see justice in person? Gangster Atiq Ahmed and brother Ashraf were shot dead in Prayagraj. Killing was caught live on television. Atiq and Ashraf were speaking to India Today reporters as well when the first bullet was fired. These are sensational visuals, can be triggering, as I caution our viewers. But it reveals the whole incident, the timeline that unfolded inside Prayagraj's MLN Medical College premises. They were being taken for a medical examination by cops, as you can see, and then the sound of indiscriminate fire, 18 to 20 rounds that were heard by Atiq and Ashraf, who then collapsed on ground within 5 to 10 seconds. Police personnel also sustained injuries and took these men under custody. As details emerge, it is known that 3 shooters have been identified and apprehended by cops. Chief Minister Yogi Adityanath held a key-level meeting and senior officials are also attending those meetings. The Chief Minister has ordered a 3-member Judicial Commission investigation in this matter. Regular updates are being taken. Meanwhile, to ensure that peace prevails in the state, Section 144 has been imposed in entire Uttar Pradesh, which means large gatherings will not be permitted on the streets of UP. आप नहीं थे कि नहीं क्या कहना आप मेन बात ये है कि गुड्डू मुसलमान आज जनाजे में आप नहीं थे कि नहीं क्या कहना आप मेन बात ये है कि गुड्डू मुसलमान. So if you're wondering what exactly unfolded, here is the whole sequence, the timeline. At 10:30 p.m. going for an examination, a medical examination to the hospital in Prayagraj. It's a protocol, its procedure happened a day ago. And then this happened. मेन बात ये है. अशरफ, आप लोग कुछ कहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे? कुछ कहेंगे आप? कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहें भैया, किस बारे में कहें? सर कुछ कहेंगे? किस बारे में क्या कहें? आज आपको जनाजा हुआ था, कुछ आप लोग वहाँ गए थे कि नहीं? आज जनाजे में आप नहीं थे कि नहीं क्या कहना आप? मेन बात ये है कि गुड्डू मुसलमान. So 10:30 p.m. and within seconds, Atiq Ahmed and his brother were shot dead. And this, remember, is about the sequence of events that had followed. But importantly, my colleagues Samarth Srivastava and Neeraj Kumar will roll at that moment, continue to roll and report about what was happening. This is their first-hand experience. It was a near miss of a bullet for them. आप लोग कुछ कहेंगे? ये जो moment था, आपने कैसे decide किया? नीरज, इंडिया टुडे से पूजा का सवाल आपसे है कि उस वक्त आपने ये डिसाइड कैसे किया कि आपको वहाँ से निकलना नहीं है, बल्कि वहाँ रहकर उन पिक्चर्स को, उन तस्वीरों को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करना? नहीं, हालांकि वो स्थिति बहुत वैसी थी, लेकिन इतने साल हो गए काम करते हुए, तो लगता है कि जो काम हम कर रहे हैं उसके प्रति एक डेडिकेशन भी होता है कि वो चीज़ें ना हो, और एक जो हम काम कर रहे हैं एज अ प्रोफेशनल, वो एक जुनून होता है कि हम कहीं कुछ हमसे छूटे ना. जो काम जब हम स्पॉट पे हैं, अगर हम स्पॉट पे हैं तो हम जो बेहतर कर सकते हैं वो करना चाहिए. तो उस समय जो सबकॉन्शियस माइंड में जो था कि मुझे अपना बेस्ट करना है, तो ऐसा कोई बहुत, हालांकि स्थिति आप भी जान रहे हैं, सभी तितिर बितिर थे, लेकिन एज अ प्रोफेशनल मुझे ये लगा कि मुझे यहाँ डटे रहना चाहिए और मुझे हर वो शॉट कवर करना चाहिए जो मैं कवर कर सकता हूँ. डर नहीं लगा? हाँ, डर जैसी कोई चीज़ थी नहीं, और वो टाइम भी इतना शॉर्ट था कि इससे पहले कि आप कुछ सोचते वो एंड हुआ. और क्या बोलते हैं, आप
मैं क्या बोल सकता हूँ, वो आपके सामने ही सरेंडर, हमारे सामने ही सरेंडर हो गया तो लगा तुरंत चीजें कंट्रोल में आ गई। कंट्रोल में नहीं आ गई, जिस तरह से तीनों तरफ से फायरिंग चल रही थी, आप भी देख रहे थे, जिस तरह से तीनों तरफ से फायरिंग चल रही थी तो वो गोलियां कहीं भी जा सकती थी। पीछे से चली, मैं अशरफ के बगल में था, आप उधर खड़े थे, पीछे से एक बंदा आया। बिल्कुल वो पीछे से गोली चली और जिस पोजीशन में हम यहाँ खड़े हुए थे तो पीछे से फायर हुआ और पीछे से फायर होकर वहीं से फायर होना शुरू हुआ। तो वो फायर हमारी तरफ था, मतलब मान लीजिए कि वो यहाँ पे पड़ा है लेकिन फायर ऐसे हो रहा था, तो वो ऊपर भी हो सकता था, नीचे भी हो सकता था। तो 3-4 कदम पीछे लिया मैंने, अपनी पोजिशनिंग करी, कैमरे को जो हम अपने उसमें जो बेहतर कर सकते हैं वाइड एंगल किया, उसको खोला और जैसे जैसे मुझे लगा कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए उसके बाद मैं So after the shootout, take a look at these ground reports sent in by my colleagues Samar Srivastav and Arvind Oja right after the killing that happened. अतीक अहमद और अशरफ की मौत हो गई है, ये बड़ी खबर यहां से आ रही है। जो मेडिकल कॉलेज जहां पर मैं हूं, यहां पर मेडिकल चेकअप के लिए आ रहे थे और ये देखिए यहां पर पिस्टल्स मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पर बाइक लुढ़की पड़ी है क्योंकि मीडिया यहां पर थी, कैमरे यहां पर देखिए गिरे हैं, टूट गए हैं, माइक आईडीज टूट गई हैं और ये खून से लथपथ जो कपड़े हैं, जो अंगोछा है और ये पिस्टल्स हैं वो यहां पर लगातार हैं। पुलिस कर्मियों से भी सवाल जवाब होंगे कि आखिर किस सिक्योरिटी में यहां पर लाए थे कि इस तरह का इनकाउंटर, इस तरह की घटना यहां पर हुई है, ये भी पूछना पड़ेगा। तो सर ये किस तरह से कैसे हो गया सर, प्लीज किस तरह से घटना हुई है? यहाँ पर पुलिस जो है कुछ नहीं बोल रही है, आप देख सकते हैं तस्वीरें, यहाँ से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। सर गोली किसने चलाई सर? अनआइडेंटिफाइड लोग थे, किसने चलाई, क्या लगता है प्रथम दृष्टया आपको? सर प्रथम दृष्टया क्या लगता है आपको? तो देख सकते हैं पुलिस जो है वो सवालों से पूरी तरीके से यहाँ बचती आप देख सकते हैं नजर आ रही है और यहाँ पर जमावड़ा था कई मीडिया पर्सन्स का। उस वक्त ये ताड़ातड़ गोलियां चलनी शुरू हुई जहां पर अतीक अहमद और अशरफ दोनों को यहाँ पर दोनों की मृत्यु हो गई है, दोनों खत्म हो गए हैं। और ये बड़ी खबर आपको हम दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से कि किस तरह से यहाँ पर ये तस्वीरें मैं आप दिखा रहा हूं, चप्पल जो है वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर पड़ी हुई है और लगातार यहाँ पर इस पूरे गेट को यहाँ से कुल 3 लोग बताए जा रहे हैं, 3 लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए थे, जो सूचना मिल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेडिकल कॉलेज जो है इस अस्पताल को बंद कर दिया गया। हाँ? जो 17 पुलिस ऑफिशियल है उसमें वो लोग शामिल हैं जो जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, जहां अतीक और अशरफ को गोली मारी गई थी, यहां स्पॉट पर मौजूद थे। उसके अलावा धूमनगंज पुलिस स्टेशन जहां कस्टडी में रखा गया था, वहां के कुछ पुलिस ऑफिसर है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये जो माइक आप देख पा रहे हैं एनसीआर न्यूज लिखा हुआ है इसमें, ये एनसीआर न्यूज, ये प्रयागराज है, दिल्ली एनसीआर नहीं है। एनसीआर न्यूज का ये माइक है जो डमी बताया जा रहा है और जो कैमरा है वो भी डमी है, उसमें बैटरी ने, जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है उन्होंने इस कैमरा और माइक को अपने कब्जे में ले लिया है। जो अटैकर्स थे वो यही कैमरा और माइक लेकर आया था, ऐसा सस्पेक्ट किया जा रहा है एफएसएल के टीम के जरिए और जो प्रयागराज पुलिस है उसके टीम के जरिए। तो इस वजह से इसको भी एफएसएल की टीम ने सीज किया। ये देखिए अपने साथ लेकर एफएसएल की टीम ये जो कैमरा माइक है इसको लेकर जा रही है। इसके अलावा 3 वेपन्स वो देखने में सोफिस्टिकेटेड लग रहे हैं वेपन्स, वो रिकवर हुए हैं, जिसमें कुछ मैगजीन्स भी मौजूद थी। यानी जो अटैकर्स थे वो पूरी गोलियां नहीं चला पाए थे, उसमें काफी मैगजीन्स वो मौजूद थी और वो रिकवर लाइव कार्टेजेस जो है वो एफएसएल की टीम ने वो रिकवर किया है। लेकिन ये जो अब अगर देखेंगे जो ये स्पॉट है, अब क्लियरली यहाँ आपको दिखाई दे रहा है एफएसएल की टीम ने यहाँ से सैंपल कलेक्ट कर लिए है। ये जो आप व्हाइट सर्कल में देख पा रहे हैं, ये वो चीजें हैं जहां पर कारतूस मिला है, यहाँ जहां पर गोलियां मिली है। इससे ये क्लियर हो रहा है कि कम से कम कई राउंड यहाँ पर गोलियां चली है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि 20 निशान तो यहाँ पर बनाए गए और एफएसएल की टीम जो सैंपल है उसको लेकर जा रही है। और ये जरा क्राइम सीन को इंडिया टुडे पर हम रिक्रिएट करते हैं। ये देखिए, ये हॉस्पिटल का मेन एंट्री गेट है और यहीं से अशरफ और अतीक को लेकर बाहर आप देखिए यहाँ पर सिक्योरिटी पर्सनल कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर अब तैनात किए गए हैं। जब ये इस पूरे गोलीकांड की जानकारी मिली थी, उसके बाद यहाँ से ये जो एंट्री गेट है, इस एंट्री गेट से अतीक और अशरफ को
पुलिस अपने साथ लेकर जाती है एक रूटीन मेडिकल चेकअप के लिए, और यहाँ से जब लेकर जाती है तो ये ठीक एंट्री गेट है, और एंट्री गेट के अंदर पहले मेडिकल चेकअप कराया जाता है। उसके बाद यहाँ पर अतीक और अशरफ वो मीडिया कर्मियों को बाइट देने लगते हैं। थोड़ा डिस्टर्बिंग विजुअल्स है क्योंकि ब्लड यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जब बाइट देने लगते हैं तभी अटैकर्स जो जर्नलिस्ट बनकर आए थे, और ये जो बाइक अगर आप देखें तो ये राउंड अप किया है पुलिस ने। ऐसा बताया जा रहा है कि इस बाइक से जो वो अटैकर्स थे वो आए थे, और उसके बाद जैसे ही अतीक से इंडिया टुडे ने क्वेश्चन करने की कोशिश की कि वो असद के फ्यूनरल में क्यों नहीं जा पाया, और जैसे ही उसने बाइट देने की कोशिश की, जो अटैकर्स थे उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और घेर कर फायरिंग कर दी। At 10:30 p.m., killed in Prayagraj, shot point blank range. We're talking about 18 to 20 rounds of fire. The fire that took place near MLN Medical College premises where they were being taken for a medical examination. A detailed report, a timeline for you to understand what exactly unfolded. 15th April, 10:35 p.m. Dawn-turned Neta Atiq Ahmed and his brother Ashraf, both accused in the Umesh Pal murder case, were being taken for a medical test. India Today's crew on ground, reporter Samarth Srivastav and video journalist Neeraj Kumar approached them for a soundbite. Ashraf, आप लोग कुछ कहेंगे? Atiq starts taking sharpshooter Ghulam's name, who was killed in an encounter just 48 hours ago along with his son Asad. This is when shots begin to fly. 3 attackers fire indiscriminately. Atiq is shot point blank as the shooters chant Jai Shri Ram. हम लोग करीब आधे घंटे से वेट कर रहे थे कि अतीक अहमद आएगा, और हम लोग उसकी बाइट के लिए इंतजार कर रहे थे कि एक शब्द वो बोलेगा, और जैसे करना यहीं से शुरू करते हैं। बिल्कुल, यहाँ से जैसे ही आप बात करना शुरू करते हैं और हम लोग पीछे पीछे जाते हैं, और जैसे ही बोलना शुरू करता है, जैसे ही अतीक अहमद और असद वो उसका भाई बोलना शुरू करता है, और एकदम से तड़तड़ाहट की आवाज आती है और ऐसे लगता है कि जैसे पटाखे दगने लगे। The shooters then put their arms up and are apprehended. They have what looks like media cards around their necks and carried a dummy camera and microphone. FSL. Delhi Chief Minister and Aam Aadmi Party's national convener Arvind Kejriwal speaking before he is to go to the CBI with regard to the liquor gate scam allegations. Let's go across to what Arvind Kejriwal said. पार्टी की सरकार में लोगों ने देखा नहीं था। दिल्ली की तरक्की को देख के पूरे देश के अंदर एक उम्मीद जागी कि दिल्ली का विकास हो सकता है तो बाकी भारत का भी विकास हो सकता है। पूरे देश के अंदर एक उम्मीद जागी कि भारत दुनिया का नंबर 1 देश बन सकता है। लेकिन कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं जो नहीं चाहती कि भारत की तरक्की हो। 75 साल तक इन्हीं ताकतों ने भारत को पिछड़ा रखा। कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं जो नहीं चाहती कि देश में स्कूल बने, वो नहीं चाहती कि गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, वो नहीं चाहती कि देश में अस्पताल बने, देश दुनिया का नंबर 1 देश बने। आज उन्हीं सब राष्ट्र विरोधी ताकतों से मैं कहना चाहता हूं कि अब भारत रुकेगा नहीं। लोग अब बहुत बेचैन हो चुके हैं। भारत तरक्की करेगा, भारत आगे बढ़ना चाहता है, देश तरक्की करना चाहता है। हम भारत वालों को, भारतवासियों को जितना मर्जी परेशान कर लो, लेकिन भारत रुकने वाला नहीं है। तुम्हारी इन गीदड़ भभकियों से भारत रुकने वाला नहीं है। भारत तो आगे बढ़ेगा। जय हिंद। Right, so there, a brief statement by Arvind Kejriwal. We are expecting a massive show of strength. Look at the police deployment right outside the CBI headquarters. It looks like there were some AAP supporters who had appeared to come in and were squatting right outside the CBI office, but they've been asked by the police to move. We're looking at the Delhi police deployment and the SSB and other paramilitary as well. Remember, at the CBI headquarters, at least on the route itself, we are expecting a massive show of strength.
by the Aam Aadmi Party. Arvind Kejriwal is the tallest leader. In many ways, as it can be called, Arvind Kejriwal's right and left-hand men, both of them are currently under custody and in prison. Former Minister Satyendra Jain, former Minister Manish Sisodia. Let's dip in and listen in again to what Arvind Kejriwal has to say. देश में एक उम्मीद पैदा की। पहली बार 75 साल के बाद भारत की राजधानी में स्कूल अच्छे बनने लगे, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने लगी, गरीबों को इलाज मिलने लगा, सड़कें ठीक होने लगी, बिजली 24 घंटे होने लगी, चौतरफा एकदम विकास होने लगा, जो कि पूरे देश में 75 साल में कहीं किसी पार्टी की सरकार में लोगों ने देखा नहीं था। दिल्ली की तरक्की को देख के पूरे देश के अंदर एक उम्मीद जागी कि दिल्ली का विकास हो सकता है तो बाकी भारत का भी विकास हो सकता है। पूरे देश के अंदर एक उम्मीद जागी कि भारत दुनिया का नंबर 1 देश बन सकता है। लेकिन कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं जो नहीं चाहती कि भारत की तरक्की हो। 75 साल तक इन्हीं ताकतों ने भारत को पिछड़ा रखा। कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं जो नहीं चाहती कि देश में स्कूल बने, वो नहीं चाहती कि गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, वो नहीं चाहती कि देश में अस्पताल बने, देश दुनिया का नंबर 1 देश बने। आज उन्हीं सब राष्ट्र विरोधी ताकतों से मैं कहना चाहता हूं कि अब भारत रुकेगा नहीं। लोग अब बहुत बेचैन हो चुके हैं। भारत तरक्की करेगा, भारत आगे बढ़ना चाहता है, देश तरक्की करना चाहता है। तुम हम भारत वालों को, भारतवासियों को जितना मर्जी परेशान कर लो, लेकिन भारत रुकने वाला नहीं है। तुम्हारी इन गीदड़ भभकियों से भारत रुकने वाला नहीं है। भारत तो आगे बढ़ेगा। जय हिंद। We'll make India number 1. We are not going to be threatened in any way by these intimidation tactics. And he's clearly, of course, even though indirectly, charging at the government at the centre. Let's listen in again to what Aam Aadmi Party's national convener, Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal has to say before he's to go to the CBI. सरकार आई जिसने देश में एक उम्मीद पैदा की। पहली बार 75 साल के बाद भारत की राजधानी में स्कूल अच्छे बनने लगे, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने लगी, गरीबों को इलाज मिलने लगा, सड़कें ठीक होने लगी, बिजली 24 घंटे होने लगी, चौतरफा एकदम विकास होने लगा, जो कि पूरे देश में 75 साल में कहीं किसी पार्टी की सरकार में लोगों ने देखा नहीं था। दिल्ली की तरक्की को देख के पूरे देश के अंदर एक उम्मीद जागी कि दिल्ली का विकास हो सकता है तो बाकी भारत का भी विकास हो सकता है। पूरे देश के अंदर एक उम्मीद जागी कि भारत दुनिया का नंबर 1 देश बन सकता है। लेकिन कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं जो नहीं चाहती कि भारत की तरक्की हो। 75 साल तक इन्हीं ताकतों ने भारत को पिछड़ा रखा। कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं जो नहीं चाहती कि देश में स्कूल बने, वो नहीं चाहती कि गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, वो नहीं चाहती कि देश में अस्पताल बने, देश दुनिया का नंबर 1 देश बने। आज उन्हीं सब राष्ट्र विरोधी ताकतों से मैं कहना चाहता हूं कि अब भारत रुकेगा नहीं। लोग अब बहुत बेचैन हो चुके हैं। भारत तरक्की करेगा, भारत आगे बढ़ना चाहता है, देश तरक्की करना चाहता है। तुम हम भारत वालों को, भारतवासियों को जितना मर्जी परेशान कर लो, लेकिन भारत रुकने वाला नहीं है। तुम्हारी इन गीदड़ भभकियों से भारत रुकने वाला नहीं है। भारत तो आगे बढ़ेगा। जय हिंद। All right, that is the Delhi Chief Minister. Right before he goes to the CBI headquarters, he's been summoned sharp at 11 a.m. It's going to be a show of strength for the Aam Aadmi Party. Clearly, you saw he was flanked at one side by Raghav Chadda, Kailash Gehlot, the entire cabinet with him, including the Chief Minister of Punjab, Bhagwant Mann. Cutting across immediately to my colleague Amit Bhardwaj, who's joining us right in front of 6 civil lines. That's where the Chief Minister's residence is in Delhi. Amit,
a show of strength. That was what was planned by the Aam Aadmi Party, but heavy deployment where the police and security is concerned. What are you witnessing? Right, Preeti, let me show you the visuals. The entire Flagstaff Road that you are seeing right now was full with cavalcade. You know, you had Arvind Kejriwal and Bhagwant Mann moving in the same car, and along with that, in that particular cavalcade, you had all Delhi cabinet ministers. And the cars have rushed to Rajghat from here. We'll be tracking those visuals as well from Rajghat. We'll be showing those visuals to our viewers from Rajghat as well. But as of now, you know, Delhi Speaker, Punjab Assembly Speaker, Punjab Chief Minister Bhagwant Mann are a part of the cavalcade that has moved to Rajghat. MPs such as Sanjay Singh, Raghav Chadda, all of these leaders are part of the cavalcade which has moved to Rajghat. So from here, they are moving to Rajghat, and from Rajghat, Arvind Kejriwal will be going to CBI headquarters. If you look at the timing, it is a bit, you know, Arvind Kejriwal is running a bit behind time because he was expected to move around 10 a.m. itself. Now at 10:30 has moved to Rajghat, so possibly he will be able to reach CBI headquarters only around 11:30, sometime around 11:30. But the message is pretty clear. The Aam Aadmi Party is doing what it is best at. You know, it is politics of optics. Arvind Kejriwal came out and he made a very brief media interaction where he said that certain anti-national forces, anti-India forces don't want India to progress any further, and they want to stop India's progress. And as I can see, more cars are moving. This is Delhi Assembly Speaker Ram Nivas Goyal. His car is moving, and other MLAs are moving to Rajghat. So the process of supporters, MLAs, senior leaders of the party moving to Rajghat, showing solidarity to the party chief is not stopping. What Arvind Kejriwal said today before leaving for the CBI questioning is very important, Preeti. You know, he goes on to say that certain anti-India forces or anti-national forces want to stop India's progress, but India is going to surge towards development. India will become number one. So even now he is not leaving the optics and the plank that Aam Aadmi Party has been pushing. Before this media interaction, he had also mentioned as to how, despite having high sugar levels, he had sat on hunger strike for 10 days, 15 days against graft cases in the country, and he has survived that because he has a purpose to serve. So clearly, all sorts of optics is being played out by Aam Aadmi Party. All right, Amit, stay on with me. So what you just saw was 6 civil lines, the Flagstaff Road. That is where the Chief Minister stays. It's going to be a show of strength, understandably, viewers. If you look at it, when was the last time that a sitting Chief Minister was called in by an investigative agency like the CBI or the ED? Only 3. To name them, number 1, Lalu Prasad Yadav was called. Number 2, Sukhram, when he was the Chief Minister of Himachal Pradesh. And number 3, Hemant Soren. These 3 CMs have been the only Chief Ministers in the political history of the country that have been called, for interrogation by an investigative agency at the level of a CBI and the ED. Of course, there have been other agencies that have investigated sitting chief ministers, like even the Prime Minister himself, where he was summoned by the SIT, or rather even down south if you look at Ms. Jayalalitha. But all of that, trust Aam Aadmi Party to milk it politically. But is this going to be the advent or the comeback of what was earlier the vintage Arvind Kejriwal, which is an all-out attack on the Prime Minister and the government? We've seen that kind of language lately, but this morning, when Arvind Kejriwal did address the press very briefly before he's making his way, what you see on your television screen is his cavalcade making his way to Rajghat, and from there on he's going to make his way to the CBI headquarters. However, there's section 144 that has been put, so in terms of gathering, in terms of protest by the Aam Aadmi Party workers, that's not going to quite happen or wouldn't be allowed at all. But we are expecting the Aam Aadmi Party cadre to maybe make a push once again. They are going to congregate and try and march towards the CBI headquarters. We're trying to get some information on when that is going to happen. But what I'm going to do is, viewers, I want to cut across immediately right now to my colleague who's right outside the Rajghat, Akshay Dongre. Akshay Dongre, my colleague, is outside Rajghat. Akshay, what are you seeing around you? There's section 144. So a congregation of the Aam Aadmi Party cadre, that's not going to quite happen.
Well, absolutely, Preeti. In fact, we are standing right outside Rajghat, and I would like to show you the security arrangements that have been made by the Delhi police. There are hundreds of Delhi police personnel who have been deployed, and besides the Delhi police, there is rapid action force that has been deployed here as well. Now, this is all to ensure that a large gathering doesn't take place here. There is no show of strength sort of situation here at the Rajghat itself. Early in the morning, the Delhi BJP chief Virendra Sachdeva also reached at Rajghat. They're also doing a dharna, but something that was quite distinct from the earlier protest by the Bharatiya Janata Party. This time around, it was just Virendra Sachdeva along with two of his other party members. So they also kept the Section 144 in mind, and they did not come in a large gathering despite calling for a dharna against the entire excise policy and the scam and the alleged scam in the excise policy. I would like to show you the poster that have been put up here, Preeti. There are on the road from the residence of Mr. Arvind Kejriwal till Rajghat and till CBI. These kind of massive posters have been put everywhere by the Delhi Bharatiya Janata Party, which reads that the person who has insulted Mahatma Gandhi, he should apologize, and they are asking for the resignation of Delhi's Chief Minister Arvind Kejriwal. As you can read, it clearly says that Sharab Ghotale ke Sargana, which means that the kingpin of the excise policy scam, Arvind Kejriwal, should resign. They have also called for a Vishal Dharna, which is a massive protest. However, that has not quite happened, and probably that's the reason is the Section 144 that has been imposed here. But on the entire stretch, there is heavy security deployment that has been done by the Delhi police to ensure that no law and order situation comes up here at the Rajghat, and the police is prepared to tackle any kind of situation if the workers of the Aam Aadmi Party come in a large gathering. Well, you know, it's not going to happen at the Rajghat, but is there a plan of the Aam Aadmi Party to come, together where the cadre is concerned and protest? It's a party which has originated from street protest. That's what they do best. That's what their optics are, where the Aam Aadmi Party and its politics is concerned. Those visuals that you see, the Aam Aadmi Party workers being detained. We're going to cut across, get you the latest. But right now, Vantage Points viewers, of course, Amit Bhardwaj, who's reporting from 6 Civil Lines, that's Flagstaff Road. That is where Arvind Kejriwal's residence is. Early this morning, there was a beeline of the top brass of the Aam Aadmi Party coming together in solidarity with Arvind Kejriwal, be it the Punjab Chief Minister, be it many ministers from Punjab, and also the entire cabinet where Delhi is concerned. That's Amit Bhardwaj making his way right now to the CBI headquarters. Akshay Dongre joining us right outside Rajghat, because Arvind Kejriwal, along with certain senior leaders like Raghav Chadha, Bhagwant Mann, Kailash Gehlot, are all making their, Sanjay Singh, are all making their way to Rajghat, because this is optics, viewers, mind you. This is all optics, where Arvind Kejriwal, before he even went ahead, spoke with the press, didn't quite name the BJP or the Prime Minister, but went ahead and said that there are anti-India forces. India will prevail, and we are going to fight the good fight. On the other hand, cutting across to the Aam Aadmi Party headquarters is my colleague Milan. Milan, if you can hear me, there were grand plans till late last night that the Aam Aadmi Party with all its workers will come together. There was also word that many workers from Punjab were also coming in to join in the protest. Section 144 seems difficult. There have been many detentions already through the course of the morning. Preeti, you're absolutely right. The way the summons were issued to Party Supremo and Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal, there had been massive plans that had been made. But it seems so this morning, the situation from Arvind Kejriwal's residence, where our colleagues are reporting, and now going all the way to Rajghat, to Gandhi Samadhi, Arvind Kejriwal and the party wants this to be a somber affair. An affair where the understanding is that the Aam Aadmi Party has been targeted, and the fact that Arvind Kejriwal is saying that all we were doing was building schools, that has been the party line and statement. In the morning, we have seen whether it's Sanjay Singh, whether it's Raghav Chadha, whether it's Punjab Chief Minister Bhagwant Mann, everybody reached first at Arvind Kejriwal's residence. That is the show of strength. But the Delhi police is also not taking anything to chance, because Section 144, not just imposed at the CBI headquarters, at the party headquarters as well, where I am at the moment. There have been detentions outside the party headquarters, but you will see that all the kind of
security deployment is already in place even outside the party headquarters, because as Arvind Kejriwal enters the CBI headquarters, there are party cadres that could get activated in smaller groups and numbers, which is why the Delhi police has cordoned this whole entire road. If my camera person Sachin Chandok can show you the entire 1 kilometer stretch of the party office road has been blocked from both sides. In the ITO intersection as well, there is blockage. There is CRPF ready on standby, Delhi police, Delhi traffic police, as well as the rapid action force for anything that could be taken as an untoward incident. Of course, from the party side, there has been a message that Arvind Kejriwal will cooperate with the investigating agencies, and which is why everything is moving like clockwork. He's going to start from his home, go to Rajghat, and then straight away enter the CBI's headquarters, where the officials are already waiting. The summons that have been issued, and party leaders on their hand have been told to support Kejriwal silently. There has not been any statement apart from Kejriwal's statement since morning. Neither Sanjay Singh nor Raghav Chadda nor anybody else from the party, even Bhagwant Mann, has uttered a peep about Arvind Kejriwal going to CBI. So you and I can both understand. Understandably, Milan, because with Section 144, the Aam Aadmi Party changing its tactics, but what we can also expect is what one might say a flash protest as Arvind Kejriwal goes into the CBI headquarters. But the Aam Aadmi Party wants to make very sure that today they make it a somber event where you have Arvind Kejriwal along with his top leadership go to Rajghat, where the spotlight is on the fact that he fought the good fight and he's being targeted, and it's all vendetta politics, and he's going to emerge from there. But trust the protest politics to peak through the course of the day later and in days to come, because the Aam Aadmi Party will make a meal of the summon that the CBI has given to Arvind Kejriwal for him to come and be questioned where the CBI headquarters is concerned when it comes down to the liquor policy or the excise policy of the Delhi government. What remains to be seen, and we are going to cut across to our CBI reporter. These are visuals of Arvind Kejriwal coming in at the Rajghat. Along with him, you can see Bhagwant Mann and other top leaders of the Aam Aadmi Party. Want to keep it somber, want to keep it quiet, want to deliver a message where we are above politics, we are being targeted, but trust the politics to seep in to these optics very quickly as well. Since the course of the morning, we haven't seen too many press conferences. Yesterday was a day of press conferences when the summon was issued, not today. Cutting across to Akshay Dongre, who's joining us right now, right outside Rajghat. It's going to be a quick visit, Akshay, is what we're given to understand, because 11 a.m. was the time when the Delhi Chief Minister had to present himself at the CBI headquarters. Well, it is going to be a quick visit, Preeti, but for that quick visit, there is a lot of arrangement that have been made by the police. In fact, you can see very senior officials of the Delhi police are themselves here on the ground. There are officials and personnel from the CRPF, from the Rapid Action Force. Everyone, it seems that the entire area has been sealed off completely to ensure that no untoward incident takes place here. Earlier in the morning, when the BJP chief was allowed to enter and reach Rajghat, he was only allowed in very small number, along with just two of his colleagues and party workers. But now it seems when Arvind Kejriwal comes here, because he's traveling with a lot of leaders, including another Chief Minister of Punjab, Bhagwant Mann, Member of Parliament, ministers from his own government. So the number of people, when they come here, it remains to be seen that what exactly is going to be their plan, because with the Section 144 in place, even the leaders cannot gather in a large number. And so to deal with them, the senior police officials are present here on the ground, because it is going to be a very, very symbolic visit here at the Rajghat. Both the Bharatiya Janata Party as well as the Aam Aadmi Party, both are trying to own Mahatma Gandhi as far as this entire political fight between these two parties are concerned. While on one hand, the Bharatiya Janata Party is claiming that because of this excise policy and the corruption that has been done by Arvind Kejriwal, he has also insulted Mahatma Gandhi. While on the second hand, it's Arvind Kejriwal who in fact started from protests in these kind of areas of the national capital. It seems that it has all come down to the same situation where Arvind Kejriwal is protesting. Preeti? Well,
one has to say the Rajghat is the port of call for any political party which deems that it is being targeted or finds itself in a bit of a soup. But it's not just the Aam Aadmi Party, the Congress, the Bharatiya Janata Party, the Aam Aadmi Party. Every political party's port of call seems to be Rajghat, trying to, pay obedience to to the father of the nation, and thereon try and leverage as much political optics out of it. What I want to do is I want to cut across to my colleague Shreya, who's joining us from a very empty frame at the CBI headquarters. Understandably, Section 144 is at play. Most roads leading to the CBI headquarters in central Delhi are blocked. Over 1,000 police personnel are already deployed. They're expecting flash protests to take place in terms of just plain optics, what possibly the Aam Aadmi Party would have wanted is not going to happen in terms of a massive protest or a march to the CBI headquarters. So they've turned it around. They're going to make it a silent protest where at least today the political party will appear to rise above petty politics and name calling and go ahead and make a political meal of these visuals. But what remains to be seen, Shreya, and I want to bring you is in what capacity has Arvind Kejriwal been summoned? If Manish Sisodia was summoned as an accused, it does seem that the Chief Minister of Delhi, as of now, is summoned as a witness and not as an accused. Give us details. Well, first and foremost, Preeti, it's important to point out that the charge sheet that the CBI had filed in this particular case, there has been a mentioning, according to the statements of the Secretary of Manish Sisodia, CA Arvind, there's a claim that this entire policy was formulated inside the very residence of the Chief Minister, and also there were calls that the Chief Minister had allegedly made to somewhere down the line make Vijay Nair and the other accused look like influential people while this policy was actually being drafted. So somewhere down the line, those are the lines of questioning that Arvind Kejriwal will be facing here at the CBI headquarters from 11 a.m. onwards. Remember, when we talk about the political optics, yesterday itself, Arvind Kejriwal set the ground. He also somewhere down the line alleged that the CBI and ED has lied before the court because they have mentioned about destruction of evidence against Manish Sisodia, 14 total phones. But what Arvind Kejriwal went on to say yesterday, that at least 5 of the phones are right now in the custody of the agency, and 9 of them, which the CBI allegedly says as destruction of evidence, they are in fact still active and being used by volunteers. They've also said that they want to consider moving and see legal option against CBI and ED, but we also need to understand that destruction of evidence largely also believes destruction of digital evidence. So the ED and the CBI will continue investigating the case. Today, Arvind Kejriwal will have to face the questions regarding the statement that CA Arvind has given. He will have to give the justification, the timeline when this entire policy was framed, whether or not he knew these people directly, Vijay Nair, Samir Mahendru, all those who have been involved in the liquor policy, and if at all the CBI finds any veracity, we will see the progress forward in this particular investigation. Shreya, if one goes back into political history and investigative agencies, only 3 sitting chief ministers have ever been called by investigative agencies like the ED or the CBI, namely Lalu Prasad Yadav, then you have Sukhram in the telecom scam, Lalu Prasad Yadav, of course, in the fodder scam, and then, of course, Hemant Soren. Having said that, what are we expecting today? Are they going to question him? What are your sources telling you? I know it's difficult in terms of information, in terms of what their line of questioning will be and how long it will take place for. But I would reckon that it's going to be lesser than the time frame of Manish Sisodia, because I still remember every time Manish Sisodia has gone in to the CBI headquarters, he'd go in at about 10, 11 and only come out late evening at about 8 or 9 o'clock. Will this be a shorter period, or do you think it's going to be a long day for Arvind Kejriwal? Well, Preeti, primarily when we see the questioning with Manish Sisodia, it also went on for a long time because he was mentioned as one of the accused in the case. When we talk about Arvind Kejriwal, we look for a timeline of at least 8 hours of questioning with a 1-hour break. So if we count it from 11, so definitely it's going to be a long day. We do not see this questioning at least getting over till late evening. Arvind Kejriwal will have to face the CBI officials so far as his knowledge when this entire policy was being formed, whether he communicated with the then excise
commissioner, whether he was in direct touch with Sameer Mahendru, whether he actually mentioned anything which has been alleged, that he said that Vijay Nair is his boy, whether he used his influence, whether he directly communicated with these people. Remember the main allegation that 100 crore rupees was actually routed by the South Group cartel, and those money was also pumped into the Goa election. Arvind Kejriwal has already gone on record to say that the CBI or the ED has got nothing from the vendors in the Goa elections who they have already questioned. They said that they have made all the payments in checks. So somewhere down the line, the responses that we can actually gauge that Arvind Kejriwal would be giving inside the CBI headquarters, he pretty much put that forward yesterday before the press conference as well. So that messaging is clear. We know that Aam Aadmi Party is also willing to fight this fight in the front foot, and they're also ensuring that they get entire this political messaging done correctly, that this is nothing but a witch hunt that the central government is carrying forward. You know, it's very interesting because so that's something that the Aam Aadmi Party is also making. You know, Shreya, what I'm going to do is I'm going to continue to come back to you, and we're going to get a larger understanding on what is the role of Arvind Kejriwal that the CBI would be investigating today. What would be their line of questioning? What we are given to understand right now, at least from the Aam Aadmi Party, is that the summon pertains to questioning, possibly as a witness and not so much as an accused. We're going to break it down for our viewers, but trust us to keep getting you the latest. We have Milan, who's joining us from the Aam Aadmi Party headquarters, which is rather desolate, understandably, Section 144. Through the course of this morning, there have been multiple detentions at the Aam Aadmi Party headquarters. My colleague Amit, who's making his way also now to the CBI headquarters, Rajghat. We're going to cut across there as well. That is where right now Arvind Kejriwal, along with the senior leadership of the Aam Aadmi Party, is. Understandably, Rajghat comes to be a port of call for any political party which finds himself back towards the wall when it comes down politically. We're going to get you those visuals from Rajghat as well. Quick break to stay with us. Back with our set of reporters. You are watching India Today. As State of War Karnataka begins, a reminder, who is the true number one? The 5 big voices speak to us before all the others. From Chief Minister Bommai to Chief Challenger Siddaramaiah, from old warhorse Yadurappa to muscleman D.K. Shivakumar and Kingmaker Kumaraswamy. When it's Karnataka, there's no competition. India's #1 election channel. Why does this happen? Let me tell you the science behind it. For more informative videos like this, keep watching India Today News Mo. Kerala's public health. All political parties traveling from different parts. Armed with facts, Looking at political back. she takes the news by its horns. Do you think the future of these students are not hampered? Fierce, bold and direct, setting the tone for the biggest stories. From every corner and every angle. Expect nothing but the unfiltered truth. News first, niceties later. Watch me, Nabila Jamal, on India Today.
yet there's been a lot of talk about the money going to China because of the gap in valuations, reopening of China this year, etc. But how do you see these two? Because you track both carefully. But between China and India, what will suck in most of the emerging market capital which is coming back? You must remember, China has a number of advantages at this stage. As you know, China underperformed India dramatically in the last few years, and now it's beginning to turn. That's number one. Number two, the Chinese market is very large and very liquid. If you compare the market capitalization of China versus India, you'll see that there's a huge difference. So for the large institutional investors, they really don't have much choice but to go to China. So if they have a basket of emerging markets funds, they might put 10% in India and maybe 40% in China. So you can see that China is still very attractive from that point of view, and will continue to be so. Is oil a factor at all, Mark? Because, we have this issue of crude imports, and crude prices have started moving up once again. I mean, do you have a view that crude climbs above $100 once again? And if it does, where does that leave this India versus China question? Well, the good news for India is that they can get cheap crude from Russia, as we saw what's happening in Ukraine. So I don't think that's going to have a big impact on India, even if crude does go up. Crude, of course, is not going to go down dramatically, that's for sure, because the demand for crude, the demand for energy generally, as you can see from coal prices, is still very high. But I think India will still be in a good position because of what's happening in Ukraine and the lower supply going to Europe and the higher supply going to places like India and China. Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com. You are watching India Today. Good evening. There's two big stories that we're tracking very closely right here on India Today. Arvind Kejriwal about to reach the CBI headquarters anytime now. He's been summoned in the excise policy scam. On the other hand, Atiq Ahmed and his brother shot dead last night. We're going to get you the details. I'm Preeti Chaudhary. Let me take you through the headlines first. CBI heat on Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal in the liquor gate scam. Aam Aadmi Party workers staged protests in capital. BJP calls Kejriwal kingpin of the scam. Don Atiq and his brother Ashraf shot dead live on camera. All three accused have criminal history, confess to mafia ambition, say wanted infamy and notoriety by killing dreaded gangster. Political showdown over Atiq's murder. Yogi holds a high-level meet. Opposition calls murder a staged incident. Owaisi seeks Supreme Court monitored probe in the murder. Congress gears up for Karnataka battle after multiple delays. Rahul Gandhi to storm Kolar today. Congress Chief Kharge to join Rahul. Dissent, protests and ticket Nataka in Karnataka. Bommai says efforts on to retain Shettar. Shettar claims no reason yet for ticket denial. Royal challengers Bangalore beat Delhi Capitals by 23 runs in the first game, while Punjab Kings beat Lucknow Super Giants by 2 wickets in the second match of the Tata IPL on Saturday.
All right, the latest news break that we are getting in as Arvind Kejriwal is summoned by the CBI. Delhi has turned into a capital of poster wars. Both BJP and Aam Aadmi Party plastering multiple posters on the edifice, the facade of the national capital. BJP's Aap Kattar corrupt dig at Kejriwal, saying chor machaye shor poster. Aam Aadmi Party hits back with jhukenge nahi posters. Understandably, social media on the streets where posters are concerned, it is now an all-out between the BJP versus the Aam Aadmi Party, getting us more on these posters that have been splashed all across the national capital is my colleague Amit Bhardwaj. Amit, over to you. Well, Preeti, you have not only the protests happening in the national capital, on one side where you had Arvind Kejriwal visiting Rajghat, paying homage at Rajghat to Mahatma Gandhi before leaving for the CBI headquarters. On the other side of the Rajghat is the BJP sitting on a protest. And BJP has put up posters targeting Arvind Kejriwal and his cabinet ministers, including Manish Sisodia, who is not part of the cabinet anymore, Kailash Gehlot, Atishi, accusing Aam Aadmi Party of being a Kattar Baiman or Kattar corrupt party. On the other side, you have Arvind Kejriwal's party responding to whatever is happening, unfolding in the national capital in regards to the excise policy. A social media campaign has been launched by Aam Aadmi Party which says Kejriwal rukega nahi. That's the official hashtag which has been put out by Aam Aadmi Party, and what you will see is a flood of posters coming out throughout the day today defending AAP chief Arvind Kejriwal in the excise policy case. So Right. it's all, All right, Amit, I'm going to just come in midst of the poster was the political engineering at play. Listen into Atish. अलग-अलग नेताओं को जेल में डाला जा रहा है. यही कारण है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को सीबीआई क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया जा रहा है. एक ऐसे मैटर में जहां पे कहते हैं हजारों करोड़ का घोटाला हो गया, लेकिन 1 रुपए के भ्रष्टाचार का सबूत अभी भी देश के सामने वो नहीं रख पाए हैं. मैम, देखा जा रहा है कि बहुत लोग अरविंद केजरीवाल के साथ यहाँ पर है, भगवान मान भी है और भी नेता यहाँ. पूरा देश अरविंद केजरीवाल के साथ है. आज देश भर में आप किसी से बात करिए, हर गली नुक्कड़ पे, पूरे शहर में, पूरे देश में एक ही बात है कि अरविंद केजरीवाल को किस तरीके से, गलत तरीके से परेशान किया जा रहा है. All right, that was Atishi leaving. Let's listen in. That's the Chief Minister. वापस आ जाऊंगा सर. क्या परेशान किया जा रहा है? परेशान करने के लिए बुलाया गया है. सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंचे, आप क्या कहना चाहेंगे? जो भी प्रश्न पूछेंगे हम उसका जवाब देंगे. बीजेपी वाले तो कह रहे हैं, बीजेपी वालों को ज्यादा पता है. जो बीजेपी वालों कंट्रोल करते हैं सीबीआई को. Arvind Kejriwal taking questions from reporters there. When asked that he's been summoned by the CBI, he says that they're going to question, I will answer, then says that the BJP is controlling the CBI. Before that as well this morning, he addressed the press where he went on to say that there's a conspiracy in India and he's going to rise above it and India will fight it out. And listen in, Bhagwant Maan. देश के एक ऐसे क्रांतिकारी नेता जिन्होंने एंटी करप्शन मूवमेंट से पार्टी शुरू की, जिन्होंने पूरे देश की राजनीति की दशा और दिशा बदलने का अहद किया और वाकई बदल कर भी दिखाई. दिल्ली में 2 बार बीजेपी को, एक बार 3 सीट आई, एक बार 8 सीट आई और तीसरी बार एमसीडी में हराया. पंजाब में भारी भरकम बहुमत से आम आदमी पार्टी पर भरोसा जताया लोगों ने और उसका कारण यही है कि पार्टी ईमानदार है. ये पार्टी पारदर्शिता से अपने काम करती है. चाहे तो दिल्ली में कोई भी 1 रुपए का कर्ज नहीं लिया, दिल्ली में बिजली फ्री कर दी, यहाँ पर नौकरियां मिलने लगी, मोहल्ला क्लिनिक खुल गए, स्कूल शानदार बन गए और दिल्ली का बजट 3 गुना बढ़ गया पहले से. अगर कोई माफिया बनाया होता, अगर कोई दोस्त मित्र Bhagwant Maan, you just heard him there.
You know what today is going to be, viewers? Let me break it down for you. Now, these are, of course, visuals that were recorded earlier of Aam Aadmi protesters being detained. But today, you're going to see a somber side of the Aam Aadmi party. You're going to see reactions. You're going to see comments by the leaders which will say that Arvind Kejriwal has been a great leader. He's been part of the anti-corruption movement. This is a witch hunt and we're going to rise above it. Today, I believe what the Aam Aadmi party will do, as per our sources, is to create a very somber atmosphere, a dignified atmosphere. But tomorrow, viewers, it's going to be no hold barred. Arvind Kejriwal is going to take to the floor of the Delhi Assembly. There's a special session that has been called, and trust Arvind Kejriwal to use the protection of the Delhi Assembly to go all out against the Prime Minister and the BJP. The political fight is going to be fought tomorrow in terms of the commentary. Today, more somber visuals coming in of Arvind Kejriwal's cavalcade pulling into the CBI headquarters. Only his car has been allowed. The others have been stopped. These are visuals coming in right outside the CBI headquarters. Joining me for more is my colleague Munish Pandey. Munish, over to you. What can we expect today? Arvind Kejriwal summoned by the CBI, not as an accused is what the Aam Aadmi party says, but a witness. What are your sources telling you? Absolutely, Preeti, because Arvind Kejriwal has been called in by the Central Bureau of Investigation under 160 of CRPC. 160 of CRPC in layman language means that he has been called as a witness in the case. The CBI claims that there is a reason to believe that Arvind Kejriwal might have information about this scam and he can be helpful in the investigation, and that is why he has been called for questioning. But remember, Preeti, it is going to be an extremely long day for the Chief Minister of the National Capital. But before that, let me show you the scenes outside the CBI headquarters. Just a while back from now, Arvind Kejriwal's cavalcade has entered from this barricade which has been put in just outside the CBI headquarters. Now, apart from the police force, the Delhi police, there is a paramilitary force which has been deployed. There is an assumption that maybe the AAP Karyakartas reach CBI headquarters and they can protest against this action by the Central Bureau of Investigation. But why today is going to be extremely important, Preeti? To break it down, there are 4 serious allegations against Arvind Kejriwal. The first one is that Arvind Kejriwal spoke to one of the accused in the case, that is Samir Mahendru, over a FaceTime video call. And on this FaceTime video call, Arvind Kejriwal said that Vijay Nair is my boy, you can trust him. Why Samir Mahendru is important? Because he is one of the main conspirators. He is the one who was conducting meetings and he is the owner of Indo-Spirit, which was benefited in the entire liquor scam. Apart from that, Vijay Nair's association. The second most serious allegation is that Vijay Nair, according to the Enforcement Directorate and Central Bureau of Investigation, is a close associate of Arvind Kejriwal, and Vijay Nair was coordinating with the South Group and he was the one who received 100 crore rupees of bribe. Remember, Vijay Nair was earlier arrested by the Central Bureau of Investigation and later by the Enforcement Directorate. The third allegation is that, in this case, an officer, C. Arvind, who was also the Secretary of Money Sisodia in the Excise Department, he has given a statement before the Central Bureau of Investigation under 164 of CRPC saying that there was a meeting called in at the residence of Arvind Kejriwal, and in that meeting he was given a draft copy of the excise policy in the presence of Manish Sisodia, and he was instructed that he should be speaking to his stakeholders, and this is a policy which has to be brought in the national capital. So this becomes extremely important. The fourth is that CBI claims that they have certain oral statement in the case, which according to the IPC sections, it doesn't matter a lot, but they are also claiming that they have certain digital evidence in the case based on which they decided to question Arvind Kejriwal. Of course, he has been called in as a witness in the case, but what we have seen, Preeti, in the past that, even when Manish Sisodia was questioned, later he was arrested. Today, we have been given to understand is that it is going to be a long day for Arvind Kejriwal, but there is a very low possibility that he will be arrested in the case. Apart from all this,
The politics is on the top because remember, Aam Aadmi Party is claiming that because they raised Adani issue, because they raised the degree issue of Prime Minister Narendra Modi, that is why they are being targeted. But as far as the BJP and the Central Bureau of Investigation is concerned, they are claiming that this is a fair investigation. There is an evidence based on which they decided to question the Chief Minister of the National Capital. Munish, when you say it's a long day, what can we expect today? Well, initially, as we speak, Mr. Arvind Kejriwal is at the reception of the Central Bureau of Investigation. He has to show his summons and then a pass will be made. Later, he will be taken to the inquiry room where he will be questioned by 3 officers of the Central Bureau of Investigation, including the investigative officer of the Central Bureau of Investigation. Now, as far as what is going to be the questioning, remember, there will be, he will be given a lunch break, but between the lunch break and the duration of questioning, it will be in parts. The first part is, of course, going to be the evidences which are against Arvind Kejriwal. So there will be oral statements with which he will be confronted. There will be a statement of C. Arvind with which he will be confronted. There will be digital evidences with which Arvind Kejriwal will be confronted during the investigation. Apart from the confrontation part, the extremely important part is going to be the questioning of Arvind Kejriwal on certain aspects of the entire case. Now, what CBI believes that Arvind Kejriwal, being the Chief Minister of National Capital, it was impossible that he was not aware of this scam. Vijay Nair is a person who is allegedly very close to Arvind Kejriwal. If he was taking bribe of rupees 100 crore from South Group, how was it possible for Mr. Arvind Kejriwal that he was not aware of this scam? So all this is going to be in part and parcels for the entire day. There's a high possibility that the questioning won't, get over by today. So he may be called again for questioning. But of course, today we can expect that for almost 7 to 8 hours, CBI is going to grill Arvind Kejriwal, and probably for the first time in history, a national capital chief minister has been, a serving national capital chief minister has been called in by the Central Bureau of Investigation in any case. Interesting, Munish, because the first time ever that a sitting chief minister of Delhi has been called. But if you look at the history of chief ministers, it is rather unusual because, and correct me if I'm wrong, especially where the ED and the CBI is concerned, till date only 3 sitting chief ministers have been called in, and that's primarily Lalu, Sukhram and of course Mr. Soren, Hemant Soren. Yeah, of course, Lalu Prasad Yadav was called recently. Hemant Soren was called by the Enforcement Directorate. Veerbhadra Singh was called in by the Central Bureau of Investigation. So in terms of serving chief ministers, there have been several chief ministers who have been called in by both the agencies. As far as ED is concerned, they have called multiple CMs in recent. But as far as CBI is concerned, recently, what we can say after Veerbhadra Singh, I think Arvind Kejriwal is the first chief minister, serving chief minister who has been called in for the question. But first time in history in the national capital that a serving chief minister of Delhi has been called in for questioning. Now today's questioning is important, but of course, Preeti, we'll see that, after questioning by the Central Bureau of Investigation, the ED is also waiting to question Arvind Kejriwal, because remember, ED was the first agency who filed a charge sheet naming Mr. Arvind Kejriwal in the entire scam, and there were 3 main allegations. One was the phone call, second was the statement of C. Arvind, and third was, of course, his association with Vijay Nair. So after आम आदमी के लिए जो एक अनोखा मॉडल प्रस्तुत किया सरकार चलाने का केजरीवाल जी ने, उसकी सजा उनको मिल रही है। इस जुर्म के खिलाफ, इस अत्याचार के खिलाफ केजरीवाल जी की और आम आदमी पार्टी की लड़ाई जारी रहेगी, और मैं कहना चाहता हूं केजरीवाल झुकेगा नहीं, लड़ता रहेगा। और जो हमने सपना इस देश के लिए देखा है, मिशन जो अरविंद केजरीवाल जी का है देश को नंबर 1 बनाने का, वो मिशन जारी रहेगा। उसके लिए एक एक कार्यकर्ता मर मिट के साथ में खड़ा रहेगा और इस मिशन को आगे बढ़ाएगा। जैसा भगवंत मान जी ने कहा, इस देश में 2 शाह है, एक अमित शाह, दूसरा ताना शाह। All right, that's Sanjay Singh. You will, see comments like this coming in through the course of the day. But like I said, viewers, today you will see
most leaders coming up and building a narrative that Kejriwal, the hero of anti-corruption, has been called in by the CBI. This is a witch hunt, and he will rise above all of this and fight those who are trying to take India down, make it bigger. However, if you're thinking it's going to end here, not quite, because tomorrow is going to be the big day where Arvind Kejriwal is going to make this very, very political. And why I say that, he's going to use the safe space of the Delhi Assembly. A special session has been called by the Delhi by the Aam Aadmi Party, by the Speaker, and tomorrow Arvind Kejriwal is going to take to the floor of the Assembly and go after the BJP and even the Prime Minister. The reason why the Aam Aadmi Party has chosen to do so is because whatever Arvind Kejriwal says on the floor of the House, he has the protection of the Delhi Assembly. Any action, be it defamation or otherwise, will need to go through the Speaker, and of course the Speaker is of the Aam Aadmi Party. So lots of politics at play as well. Today, the Aam Aadmi Party building Arvind Kejriwal as a political martyr of sorts who's being targeted by the investigative agencies, and tomorrow all gloves are going to be off when it comes down to an attack on the BJP and the Prime Minister. Today, you're not going to see so much of that. Today, you're going to hear our leader, Arvind Kejriwal, is above all of this. He's fought the good fight and will continue to do so. Tomorrow, the narrative will spin to the BJP and the Prime Minister. Possible game plan of the Aam Aadmi Party. We're going to cut across to our reporters, but let's take you now, and we're going to be joined by Munish on the other side of this quick graphic on why Arvind Kejriwal has been summoned by the CBI. Now, the accused businessman, Dinesh Arora, allegedly met the Chief Minister at his residence. Sanjay Singh was also present, allegedly, at that meet. Liquorgate accused gave 82 lakhs to Aam Aadmi Party funds. This is what is being alleged by the CBI. The Excise Department officially said that the liquor policy changed at Arvind Kejriwal's residence. Now, that is the allegation of the CBI. The Excise Department official alleged that the Chief Minister asked for Liquor Trader Commission to be hiked. Arvind used Liquorgate money to fund Aam Aadmi Party Goa campaign. These are all charges of the ED, which the CBI would be questioning Arvind Kejriwal on. To break it down for us, to simplify it, Munish, my colleague, continues to join us right outside the CBI headquarters. Munish, over to you. The reason, of course, like we pointed out, let's listen into Bhagwant Maan and we're going to cut across to Munish. सांसद हैं, सभी लोग पहुंचे, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? पहले मैं एक पंजाबी में बोल दूं क्योंकि पंजाबी जी हाँ देखो ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਦੱਬਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਸੱਚ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਸੱਚ ਦੀ ਇੱਕ ਮੂਰਤ ਨੇ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਚੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨਿਕਲੀ ਕਾਫਲਾ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਅੱਜ 2 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ 10 ਐਮਪੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 13% ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੁਤਬਾ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੈਣਗੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਲ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਫ੍ਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਕਿਉਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਇਹ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਤੇ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 28000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ ਅੱਜ 13 ਮਹੀਨੇ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 80% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ 504 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ 134 ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹਜੇ ਫਸਲ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਹੈ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗ ਗਏ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਐਵੇਂ ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਕੇ ਹੀ
ਕਿਤੇ ਟੁੱਟ ਜੂਗੀ ਸਰਕਾਰ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚਲਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤਾਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ All right, Bhagwant Mann there using the occasion to speak to his own constituency in Punjab. Once again, I'm going to take you back to the CBI headquarters. That visual that you see on your television screen is the vehicle of Arvind Kejriwal pulling in. He's going to be questioned. It's going to be a long day, as Munish, my colleague, just pointed out. Joining me also is Amit Bhardwaj on what would be the game plan of the Aam Aadmi Party. But Munish, coming to you first, you know, we broke it down and we're going to play those graphics again on why is it that Arvind Kejriwal has been summoned and primarily, at least for now, as a witness and not an accused. Well, Preeti, as far as this case is concerned, remember when the entire investigation started, Manish Sisodia was named as accused number 1 in the case, and later on there were certain excise department officials and liquor businessmen who were also named as accused in the case. But during the investigation, what the Enforcement Directorate and the Central Bureau of Investigation, what they are claiming, that they got hold of certain evidence in the case, and these are circumstantial evidence, Preeti, and this becomes very important. I'll talk about it, but why? There are 4 main allegations. First, Arvind Kejriwal spoke to Samir Mahendru over a FaceTime call. Samir Mahendru is one of the accused who was arrested by the CBI and the Enforcement Directorate. Second, during the phone call, during the phone conversation, he said that Vijay Nair is my boy, you can trust him. This Arvind Kejriwal told to Samir Mahendru allegedly. Vijay Nair is a person of interest for the Central Bureau of Investigation and Enforcement Directorate because he was not only the communication in charge of Aam Aadmi Party, but he was also someone close to Arvind Kejriwal, and he took bribe of 100 crore rupees in advance by the South Group. The third is the statement by C. Arvind, then Excise Department official and also Secretary to Manish Sisodia, who said that there was a meeting called in at the residence of Arvind Kejriwal where he was given a draft copy of the policy, and in that draft policy in that draft copy, he was told by Manish Sisodia that this is the policy which we want to implement in the national capital. You should speak to the stakeholder. The fourth is the digital evidence in the case pointing towards Mr. Arvind Kejriwal possibly knowing about the scam. But you know, Preeti, all these are circumstantial evidence in the case. If there is any direct evidence in the case, I will say no. Why? Because there is no evidence that Arvind Kejriwal took the money. There is no evidence that Arvind Kejriwal signed any paper. But why he has been called? Now, I spoke to several officials of the Central Bureau of Investigation. What they claim that when they are probing the case under 120B, that is criminal conspiracy, even a person who had a knowledge and he was a person in power, Mr. Arvind Kejriwal, he was in a person of power. Even if he was having the knowledge or even he was allowing this scam to happen, then also he becomes suspect in the case. Today he has been called in as a witness in the case, but possibly if during the questioning, if CBI thinks that they have sufficient evidence against Arvind Kejriwal, the status of witness can be changed into suspect. So all of this, the Central Bureau of Investigation will be trying to do today in the long day of questioning. But, when Chief Minister is being questioned here, we have been given to understand is that the 3 officers have a long list of questions. Not only he will be confronted with certain evidence and oral statements in the case, but also certain digital evidence in the case, and he will possibly be asked that why didn't he stop this scam, whether he was aware that this scam is taking place under his nose. You know, Munish, continue to be with us. I'm going to cut across to Amit Bhardwaj, who's going to get us on what exactly is the Aam Aadmi Party thinking. But before we cut across to Amit, over to Milan, just to give our viewers an understanding. Section 144 right now is there in areas like where the CBI headquarters is, Central Delhi, to make sure that there is no protest or a flash protest by the Aam Aadmi Party as well. I want to cut across to Milan, who's joining us from the ITO junction. Milan, lots of barricades been put, over 1,000 police personnel who are on the roads today to make sure nothing untoward happens in terms of protest. There have been detentions in the morning. Take us through the security arrangements. Well, Preeti, I'm at the spot where one such detention happened this morning. This is the ITO section where a few women from the Aam Aadmi Party's women wing gathered and tried to block the road. This particular road has just been cleared by the Delhi police. On the other side, let me show you that the Delhi police is still on standby. We were told that this particular ITO intersection was initially blocked
for the movement of Arvind Kejriwal's cavalcade, but now has been opened for traffic as well since it's a weekend. But of course, as I mentioned, the Delhi police still maintaining a vigil. We have been told that there could be a few more flash protests in and around central Delhi. They've been happening in Wazirabad. Some of the MLAs like Jarnail Singh have been picked up. And over Milan, here, stay on with us. Would you stay on with us? I'm going to quickly cut across to Saurabh Bhardwaj, the Health Minister of Delhi. मुख्यमंत्री को इस तरह से टारगेट करेंगे, विपक्षी दलों के नेताओं को इस तरह से टारगेट करेंगे, तो ये लड़ाई झगड़े से तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। लोगों ने प्रधानमंत्री जी को वोट इसलिए दिया था ताकि देश आगे बढ़े और वो सबको साथ लेके आगे बढ़े। इसलिए नहीं दिया गया था कि वे द्वेष की भावना से अपने अहंकार के अंदर जो है छोटी छोटी पार्टियों को, छोटे छोटे राज्य के मुख्यमंत्रियों को पकड़ पकड़ के जेल में डालें और इसका मजाक उड़ाएं। ये ठीक नहीं है। आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी आप लोग की? जैसे एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई सुबह सीएम के घर पे उनके निकलने से पहले और सीएम कहते रहे कि हो सकता है उन्हें गिरफ्तार कर ले, तो अगर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है तो आगे क्या कुछ रणनीति के साथ आम आदमी पार्टी? देखिए, जैसा भगवान चाहेंगे वैसा ही होगा। और अभी मुख्यमंत्री जी ऊपर गए हैं, जो पूछताछ होगी उसका जवाब देंगे। जवाब कुछ भी दें, सीबीआई यही कहेगी कि मुख्यमंत्री जी ने जवाब पूरे नहीं दिए। हम मुख्यमंत्री जी के जवाब से सेटिस्फाई नहीं, यही जवाब आएगा सीबीआई का। मैं अभी बता रहा हूं आपको। तो मुख्यमंत्री जी के पास तो कोई विकल्प ही नहीं है। आप जवाब दें तो भी वो यही कहेंगे कि जवाब नहीं मिला, और जवाब नहीं देंगे तो भी यही कहेंगे। तो अभी भगवंत मान जी यहाँ पे हैं, हमारे बाकी सभी मंत्रीगण यहाँ पे हैं, हमारे स्पीकर यहाँ पे हैं, सांसद यहाँ पे हैं। हम इंतजार करेंगे मुख्यमंत्री जी का, उनको साथ लेके जाएंगे जब तक कोई बाहर नहीं आता। आप लोग जी, मुख्यमंत्री जी को साथ लेके घर जाएंगे। All right, understandably, the Aam Aadmi Party's leaders camping out, waiting for Arvind Kejriwal's questioning to get over. Well, it seems he's going to have a very long day, as pointed out by my colleague Munish. But I want to go back to Milan and our other reporters, because Milan, you know, Munish is breaking down on what can be expected at the CBI headquarters. But Milan, what is the Aam Aadmi Party thinking? Understandably, today is a build-up to make it somber, to possibly build Arvind Kejriwal as a martyr, that he's above all of this, an anti-corruption campaigner targeted by the agencies, a witch hunt. But tomorrow, the action is going to be far more political, a special session called by the Delhi Assembly. And what we are getting to understand, Arvind Kejriwal will use that floor to go all out, guns blazing against the BJP and the Prime Minister. Coming back to you on that question, listen into Raghav Chadda. सरकार की स्वच्छ और ईमानदार राजनीति की शुरुआत करने आई अरविंद केजरीवाल जी, जो आम आदमी पार्टी के संस्थापक हैं, हमारे राष्ट्रीय संयोजक हैं, उन्होंने इस देश में एक वैकल्पिक राजनीति की स्थापना करी, जिस वैकल्पिक राजनीति के चलते आज एक केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस का जन्म दिल्ली में हुआ। 18 लाख बच्चों का भविष्य बदलकर, बढ़िया से बढ़िया स्कूल शिक्षा देकर दिल्ली की गरीब जनता का उद्धार अरविंद केजरीवाल जी ने किया। बढ़िया स्वास्थ्य सेवाएं देकर सबको मुफ्त इलाज, बढ़िया दवा, बढ़िया ऑपरेशन, सारी चीजें, सारी स्वास्थ्य सुविधाएं दिल्ली की 2 करोड़ आबादी को अरविंद केजरीवाल जी ने दी। बढ़िया वेलफेयर स्कीम्स लाई और एक केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस दिल्ली को दिया, जिसमें आपको मुफ्त बिजली मिलती है, मुफ्त पानी मिलता है, पावर कट नहीं होते, और एक आम आदमी के जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में जो समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं से आम आदमी को निजात दिलाई। ये शायद भारतीय जनता पार्टी को गवारा नहीं था। 3 बार दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने बीजेपी को धूल चटाई, फिर पंजाब में जाकर धूल चटाई, अब अन्य राज्यों में हमारा विस्तार हो रहा है। आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई। आम आदमी पार्टी जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही है, इस रफ्तार से आज तक आज़ाद भारत के इतिहास में कोई पार्टी नहीं बढ़ी। ये शायद भारतीय जनता पार्टी के लोगों से हजम नहीं हुआ। इसके चलते आज तमाम एजेंसियां, ईडी, सीबीआई को छोड़ दिया है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए। मुद्दा कोई भ्रष्टाचार या कोई अलेज्ड स्कैम में जांच करना नहीं है। मुद्दा है जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर पार्टी को और अरविंद केजरीवाल को खत्म करना है। अरविंद केजरीवाल के तमाम करीबी साथियों को पकड़ के जेल में डालना है। अब आप सोचिए, अगर अरविंद केजरीवाल जी जेल चले गए, अगर अरविंद केजरीवाल जी को इन लोगों ने बंद कर दिया, तो आम आदमी पार्टी का क्या भविष्य होगा? आम आदमी पार्टी की सरकारों का क्या भविष्य होगा? आज
भारतीय जनता पार्टी इस भुलेखे में जी रही है कि शायद सरकार खत्म हो जाए, पार्टी खत्म हो जाए, और मकसद भी इनका यही है कि विपक्ष के तमाम नेताओं को अगर जेल में डाल दोगे तो विपक्ष ही खत्म हो जाएगा। एक बड़ी मीटिंग हुई ऐसा ही सब चर्चा हुई कि अगर सीएम जेल चले जाते हैं तो आज आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता, दिल्ली का एक एक नागरिक, भारत देश का एक एक नागरिक चट्टान की तरह अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़ा है। और मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी को हाथ लगाना मतलब खुली तार पे हाथ रखने जैसा है। 440 वोल्ट का करंट लगेगा अगर अरविंद केजरीवाल जी को हाथ लगाओगे। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से कंस को पता था कि भगवान श्री कृष्ण ही उनका अंत करेंगे और इसीलिए कंस ने हर संभव प्रयास किया, हर षड्यंत्र रचा कि भगवान श्री कृष्ण को हानि पहुंचाई जाए, लेकिन उनका बाल भी बांका नहीं कर पाए। उसी प्रकार आज भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि उनका अंत अरविंद केजरीवाल के हाथों होगा, बीजेपी का पतन आम आदमी पार्टी करेगी, इसीलिए हर संभव प्रयास और साजिश करी जा रही है कि आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल जी को खत्म करो। ये कभी सफल नहीं होंगे। सीएम जब तक भी सीबीआई मुख्यालय के आप लोग यहीं पे बैठे रहेंगे? हमें यहाँ पुलिस ने रोक लिया है। हम सीबीआई मुख्यालय तक जाना चाहते थे, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जाना चाहते थे। उनके काफिले की तमाम गाड़ियों को भी रोक लिया, सिर्फ एक गाड़ी को आगे जाने दिया है। हम लोग सब यहीं सीबीआई के दफ्तर के बाहर बैठे हैं, यहीं बैठेंगे, अपने नेता का आने का इंतजार करेंगे। और मैं भारतीय जनता पार्टी को एक हिदायत देना चाहता हूँ, बिन मांगी सलाह देना चाहता हूँ कि ईडी सीबीआई का प्रयोग उन लोगों पे करो जो शायद इन एजेंसियों के नोटिसों से डरते हो, जो इन रेडों से, सर्च सीजर से, जेल से डरते हो। आम आदमी पार्टी के नेता आंदोलन की कोख से जन्मे लोग हैं। हम लोगों ने सड़कों पे लाठियां खाई हैं, वाटर कैनन सही हैं, कई बार जेल गए हैं, तो हम लोग जेल से नहीं डरते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहते हैं कि देश की जनता देख रही है कि कैसे आज एजेंसियों का दुरुपयोग करके आप नेताओं को पकड़ के जेल में डाल रहे हैं। इस देश से लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। और अगर एक शख्स आज कोई है पूरे देश में जो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे सकता है और दे रहा है, उस शख्स का नाम है अरविंद केजरीवाल। ये बात शायद भारतीय जनता पार्टी को हजम नहीं हो रही है, इसीलिए वो हमें आज खत्म करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। जब हमारी पंजाब में सरकार नहीं थी तब ईडी सीबीआई के मुकदमे भी नहीं थे। पंजाब में सरकार बनी, गुजरात में सीटें आई, गुजरात में वोट शेयर आया, राष्ट्र पार्टी हम बने। उसके बाद जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी विस्तार कर रही है पूरे देश भर में, ये डर इन्हें सता रहा है और इसीलिए आज ईडी सीबीआई का प्रयोग हो रहा है। मैं अंत में बस इतना ही कहूँगा कि जब देश में 1970 के दशक में आपातकाल लगा था, इंदिरा गांधी जी उस समय की प्रधानमंत्री होती थी, उन्होंने इमरजेंसी लागू करी थी। उस समय वो एक कानून लाई थी MISA, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, और उस कानून के अंदर बड़े ड्रकोनियन प्रावधान डालकर understandably trust the Aam Aadmi Party to continue to build that narrative where Arvind Kejriwal is a martyr. He's somebody who's taken lathis. He's been built out of the fabric of anti-corruption. He created that narrative in India and today he's been targeted. That is what the leaders of the Aam Aadmi Party will be looking at to instill in public memory today. But like I said, and I want to bring in Milan on the other, to take us through on what the Aam Aadmi Party is expecting, because Milan, today more somber, tomorrow all out political. The Delhi Assembly session called especially for Arvind Kejriwal to take to the floor, use the safety of that assembly and go hammer and tongs, all gloves off when it comes down to build a political attack on the Prime Minister and the BJP. Well, Preeti, as you just heard, the senior leaders of the Aam Aadmi Party, Raghav Chadha there as well, saying कि कृष्ण ने कंस का वध किया था, उन्हें पता था कि कंस का वध होने वाला है, लेकिन he didn't do it without Balram. And already Arvind Kejriwal's Balram is in jail, Manish Sisodia, and the kind of show of strength that you saw for Manish Sisodia when he was being questioned by the agencies CBI and ED is not being witnessed on the streets of Delhi today. And that's the question, Preeti, we are all pondering upon, because this just means that Arvind Kejriwal wants to fight it out off the streets
and in the Vidhan Sabha, inside the CBI, and through his legal advisors and with his ministers. The kind of statements that have come forward, even as I show you the deployment of the Delhi police that continues to be across Delhi at the moment, we are not seeing any backlash, we are not seeing any pushback from the party cadre or party workers as well. No senior neta is leading a protest in Delhi today, but what they are essentially doing is sitting there with their leader, who Raghav Chadha equates with Lord Krishna, outside the CBI office, saying that when he comes out from the questioning is when we will together go back with him. So that is the kind of strength that the Aam Aadmi Party is talking about. Right now, the time is to do this silently and strategically rather than create chaos on the streets of Delhi, which they were earlier doing, Preeti. Well, you know, even they're not even together in front of the CBI headquarters. There's Section 144, which is clamped outside the CBI headquarters and in central Delhi. Arterial roads, they're all blocked. So the top leadership of the Aam Aadmi Party a little away, waiting for Arvind Kejriwal's questioning to get over. What we've been given to understand, it's going to be a long wait. It's going to be many, many hours before Arvind Kejriwal walks out of that CBI headquarters. What we're also given to understand is that he will possibly walk out. There will be no arrest today. He's been summoned as a witness and not an accused. What I'm going to do is slip into a break. On the other side, we're going to flip to our other big story that we are tracking. Don Atiq and his brother Ashraf were shot dead live in camera late last night. All three accused have criminal history, but questions now being raised on the law and order situation in the state of Uttar Pradesh. You are watching India Today. You spoke about penetration earlier, and I want to start by asking you about Godrej Interior, because you're making very significant inroads into the branded furniture space, which hitherto has not been how Indians consume or Indian homes consume furniture. What has been your experience like, and can you take Godrej Interior even into smaller cities and make it an even bigger brand success? You know, right from the beginning, our furniture has been available in almost every town of any significant size in the country. We've always had the widest reach, and I think the point about branded versus non-branded, or what is otherwise called organized and disorganized or unorganized sector, I think that role of carpenters, the role of local industries, etc., is not going away. It's going to stay. I think that the type of customization that you can get from those aspects actually are very high, and I don't see it going away in a hurry. I think the important point here is that there is a greater realization amongst the consuming public that brands are entering the country in a significant way. They are able to differentiate, offer things that can be. See, what we found is the biggest gripe that customers have is when you let a carpenter into your house, is that they take forever, And I think what we are saying is that, look, we are giving you something maybe slightly more expensive, but it is something that you can, decide what you want and have it installed and done with in a very short time. So I think that proposition is what is appealing to people quite a bit. So you will see more and more of that happening. I think there's a realization also, especially amongst younger people, is that, they want to redecorate their homes more often. They would like more conveniences. And as their incomes allow, they would want to do that. So I think you will see greater penetration of furniture brands. But I don't believe that we will, be displacing the millions of carpenters in the country who do this job very effectively also. And actually,
we have to learn how to work with them, create, make them our customers in a way. இளவரசே, கொள்ளிடம் நதிக்கு தெற்கே உள்ள பகுதியை மதுராந்தக தேவருக்கும் வடக்கே உள்ள பகுதியை உங்களுக்கும் பிரித்துக் கொடுத்தால் அது நியாயமாக இருக்கும். One grand outing that cinema lovers are waiting for has to be part 2 of Mani Ratnam's Ponniyin Selvan. அருண்மொழியின் மரணச் செய்தி கேட்டு மதம் பிடித்த யானை போல் கிளம்பி வந்து கொண்டிருப்பான். Fans cannot wait to experience the grandeur of the Chola dynasty this second time. The makers are ensuring to cash in on the hype around this magnum opus. After the magnificent trailer launch, a new track from Ponniyin Selvan Part 2 has been released titled Veera Raja Veera. This latest song from the film showcases the facets of Chola, and the original version has been sung by Shankar Mahadevan, K.S. Chitra and Harini. With this, Ace music composer A.R. Rahman has delivered another musical treat as his music sounds and feels mesmerizing. Another interesting fact about this outing is that the duration of Ponniyin Selvan Part 2 will be shorter than that of the first part. Yes, Part 2 will be crisper, better and might leave fan wanting for more, as that's the impact Mani Ratnam's films have. இதுவரை திரைமறைவிலிருந்து செய்ததை முடிசூட்டிக் கொண்டு செய்ய போகிறேன். What a newsy Sunday it's been, viewers. Let's take you directly to the CBI headquarters. Right there, Arvind Kejriwal, just about half an hour ago, has pulled in. He's being questioned by the CBI, this time as a witness in the excise policy, not as an accused. But these visuals that are filtering right now on your television screens are the Aam Aadmi Party top leadership sitting in protest, not very far off from the CBI headquarters. It's a silent protest. They are saying they're not doing anything. They're just sitting there. But having said that, it's Section 144 that has been clamped in central Delhi. So no gathering over 4 people. How many of these Aam Aadmi Party leaders are there? Well, there seem to be at least 10 to 15. The top leadership, the cabinet of the Delhi government, as well as Punjab. Will the police take any action on them? Will they be rounded off? How far are they from the CBI headquarters? Because the areas around CBI headquarters, there is Section 144 that has been clamped. So
all these visuals filtering in. Trust us to get you the latest. We're going to get a larger understanding on where are these leaders actually sitting, how close are they to the CBI headquarters, because Section 144 has been clamped in the areas right where the CBI headquarters is. Arterial roads leading to it have all been blocked. You can see those you see who are making a ring around these leaders is actually the Punjab police. They are plainclothes policemen from the Punjab police. Is there going to be maybe, you know, a confrontation of sorts where the Punjab police is concerned and the Delhi police is concerned? We don't quite know that. They're very peaceful. They're just sitting there silently. But Amit, how far are these leaders from the CBI headquarters? Because Section 144 has been clamped, which clearly says no more than 4 people can congregate at a time in protest. Amit, can you hear me? Yes, Preeti, I can hear you. You know, I'm my right there at the question Dharna site, and I will take you to the top leaders. Yes. Because Section 144 has been clamped around that area. The leaders that you see are more than 4 in number, so they are in violation of Section 144. Right, but they're saying that we have come here along with Arvind Kejriwal and will leave the spot only when Arvind Kejriwal steps out. And it's just not the Delhi ministers or the MPs, it's also Punjab Chief Minister Bhagwant Mann who is sitting on a dharna of sorts, and you have a separate security, zone created by the Punjab police. I'll request Abhishek to show you these officials that you are seeing in safari uniforms. These are all Punjab police officials who have created a security protocol of sorts right outside the CBI headquarters. Unusual visuals coming from the national capital, where you have Punjab Chief Minister along with Aam Aadmi Party top leaders sitting, and the security paraphernalia has been created by Punjab police. And outside this circle is the Delhi police standing. You know, Atishi, I want to ask you a quick question. Many people would argue that 144 has been imposed in the area. Is this not in violation of the 144? See, we had come with our leader Arvind Kejriwal. We have been stopped by the Delhi police at this point of time. So we are sitting here peacefully and waiting for his questioning to get over, and we will go back with him. Okay. Raghav, a quick question. You have been constantly saying that it is the AAP government which is being targeted. But why do you think that your party or your leader is specifically the central target of the central agencies and the central government? The Bharatiya Janata Party suffers from Arvind Kejriwal's phobia. They suffer from Kejriwal phobia, and as a result of which they wish to eliminate Aam Aadmi Party and eliminate Arvind Kejriwal. Aam Aadmi Party, which is India's fastest growing political startup, has been growing by leaps and bounds. We have governments now in 2 states, we have 10 members of parliament, dozens and dozens of councillors, MLAs in 4 states, and we are expanding at a rapid pace. BJP recognizes that we are the only challenge to them. Arvind Kejriwal is the only challenger and contender against the BJP, against Prime Minister Modi. And as a result, every trick in the book and every state instrumentality is being used and abused to eliminate Aam Aadmi Party, and that is the crux of the matter. However, today, all of us, not just leaders and members of the Aam Aadmi Party, but every single Indian today stands like a rock behind Arvind Kejriwal. Is there a sense of fear that Mr. Kejriwal could be arrested by the CBI? Look, first of all, the Bharatiya Janata Party can go to any level to eliminate Arvind Kejriwal. Forget the repeated claims made by the BJP members that he'll be arrested. He can also be physically harmed and tortured by these people. They can go to any extent. During the interrogation? They can go to any extent. They want to eliminate Arvind Kejriwal because they realize that he is a big potential political threat and a rival who must be eliminated. And unfortunately, politics in this country has come to a level where these state instruments are being used and abused. Every single member of the opposition is being jailed, and India is essentially going to, if the BJP has its way, going to become an opposition-free country. There'll be only one party, one leader, one regime, which is most unfortunate. Arvind Kejriwal is a man with unimpeachable integrity. He is modern days Mahatma Gandhi. For BJP to level frivolous allegations against him and to summon him
is not just contempt of new kind of politics, it is the contempt of the people of India. Okay. A big claim by Raghav Chadha. I'll take a quick question from Sanjay Singh as well. Sanjay ji, आप लोग लगातार अडानी के मुद्दे से इसको जोड़ के देख रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि संसद में जो कार्रवाई आम आदमी पार्टी ने की उसका भी कुछ कनेक्शन है जो अब हो रहा है? से दिल्ली की विधानसभा में अरविंद केजरीवाल जी ने बताया कि लाखों करोड़ का काला धन उनके दोस्त की कंपनी अडानी में जो लगा है, ये नरेंद्र मोदी का पैसा है, उसकी बौखलाहट है ये, और ये ऑपरेशन लोटस पार्ट 2 है। पहले भी हमारे विधायकों को तोड़ने की कोशिश की, हमारी सरकार को गिराने की कोशिश की, ये वही कोशिश है। अरविंद केजरीवाल जो एक शिक्षा का, स्वास्थ्य का, बिजली का, पानी का मॉडल दे रहे हैं पूरे देश को, इस सपने को खत्म करना चाहते हैं मोदी जी। लेकिन मैं मोदी जी को एक ही बात कहना चाहता हूँ, ये अरविंद केजरीवाल है, अरविंद केजरीवाल रुकेगा नहीं। देश को नंबर 1 बनाने का मिशन जारी रहे। बीजेपी जिस तरह के दावे कर रही है, क्या उससे कोई डर बढ़ रहा है कि गिरफ्तारियों का एक बड़ा गैंग है? जैसे माफियाओं का गिरोह होता है, ऐसे ही भ्रष्टाचारी गुंडों का एक बड़ा गैंग है बीजेपी। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, चुन चुन के बीजेपी ने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। तो बीजेपी की तो बात ही मत कीजिए। जो सबसे बड़ा घोटालेबाज है इस देश का, उसके हवाई जहाज में मोदी जी घूमते हैं, उन्हीं की कंपनी में मोदी जी का पैसा लगा है। तो बीजेपी क्या कहती है वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं। राघव जिस बात को कह रहे हैं, क्या आप उस पर यकीन करते हैं कि किसी तरह का हार्म भी पहुंचाया जा सकता है इंटरोगेशन के दौरान? Amit, we're going to continue to go back there. Amit, just coming right back to you. What we're going to do is, so what's really happened right now, viewers? Let me break it down for you. Arvind Kejriwal right now is being questioned as I speak at the CBI headquarters. That was his car that pulled in just about 45 minutes ago. Not very far from the CBI headquarters, the top brass of the Aam Aadmi Party, all Rajya Sabha MPs of the Aam Aadmi Party, the Chief Minister of Punjab, the other key cabinet ministers in Arvind Kejriwal's cabinet in Delhi, all of them right now squatting outside, not very far from the CBI headquarters, in violation of Section 144. So will they be picked up very soon? We're going to keep an eye on that. But I want to cut across to my colleague Pooja, who's standing by and who's going to take us through on what are the charges on Arvind Kejriwal. Why was he summoned? Of course, this time as a witness, not an accused. All right, so if you're wondering why the Delhi Chief Minister, Aam Aadmi Party's national convener, has been summoned by the Central Bureau of Investigation, here's why. Accused businessman Dinesh Arora allegedly met Chief Minister at his residence, and that's one of the reasons that it becomes, as a location, a high point for the CBI to investigate further. Sanjay Singh, Member of Parliament from the Rajya Sabha, was also present during the Chief Minister's meeting. This is all per, remember, according to the agency. Now, this liquor gate accused gave 82 lakh rupees approximately to Aam Aadmi Party funding, to the party funding, if he was in many ways a licensee for the liquor policy. But more than that, remember, being an official, all of this was a policy on document, on paper. Was it changed at Arvind Kejriwal's residence? That becomes a point of concern for the party and for the individual. Excise Department official, remember, allegedly asked the Chief Minister to hike liquor trader commission to be increased in terms of perhaps the money that can be added to the commission. But importantly, Arvind Kejriwal allegedly, according to the agency, used this Liquorgate money to fund Aam Aadmi Party's 2022 election campaign. So this becomes a part of money laundering as well. And all of this, remember, the CBI issue came up because the Lieutenant Governor V.K. Saxena had recommended a CBI examination into the alleged irregularities. Over to you, Preeti. Well, that's Pooja breaking it down in terms of what are the charges where Arvind Kejriwal is concerned. For now, a witness. Will he be turned into an accused? Well, trust us to get you the latest development on this right now. He's inside. The CBI is questioning him. In the history of at least where Delhi is concerned, the first ever Delhi sitting chief minister being questioned by investigative agencies. A quick break. To stay with us. We're going to get you more. You are watching India Today.
watching India Today. Warm welcome, viewers. You're watching our continuous rolling coverage on two big stories. What a super newsy Sunday it's turned out to be. Arvind Kejriwal, the Delhi Chief Minister, summoned by the CBI, being questioned as I speak, while the top leadership of the Aam Party squatting not very far from the CBI headquarters, waiting for Arvind Kejriwal's questioning to get over in violation of Section 144. Will they be detained? Will they be moved? We're going to get you the latest. On the other hand, the other big development. Gangster Atiq and his brother Ashraf were killed on camera late last night. We're going to get you the latest. I'm Preeti Chaudhary. These are the headlines. Don Atiq and his brother Ashraf shot dead live on camera. Chief Minister Yogi forms a three-member panel to probe murder. Opposition calls it a staged incident. In big confession to the UP police, shooters confess to mafia ambition, say wanted infamy and notoriety. All the shooters have criminal history. CBI heat on Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal in the liquor gate scam. Aam Aadmi Party workers stage massive protest in capital. BJP calls it Kejriwal's kingpin of scam. And BJP's ticket Nataka explodes. Ex-Chief Minister Jagdish Shettar quits the BJP after he's denied a ticket for polls. Bammai says tried every bit to pacify him. Congress gears up for Karnataka battle after multiple delays. Rahul Gandhi to storm Kollar today. Congress chief Kharge to join him. Right, viewers, the latest coming in. India Today has now finally accessed Atiq's murder FIR. Atiq and Ashraf, his brother's murder FIR. 3 killers have confessed to what our sources suggest to mafia ambitions. Shooters, 2 cops wanted to get rid of Atiq gang. They also say that they wanted infamy and wanted notoriety. They wanted to be famous for what they had done. Now, these are statements that have been recorded from these 3 men that you see on your television screen. What we are given to understand is that the 3 killers have confessed to the cops, saying that they harbored mafia ambitions, wanted to get rid of the Atiq Ahmed gang, wanted infamy and notoriety. The 3 youths fired at Atiq late last night and his brother Ashraf in cold blood. Everything caught on camera. They pretended to be members of the media, actually came in with iCards and a camera. Shot at Atiq, raised Jai Shri Ram slogans right after that as well. Both Atiq and Ashraf died on the spot. I want to cut across right now to my colleague Abhishek Mishra, who's joining us with the details of the FIR. Abhishek, take us through the details of the FIR that have been accessed. All 3 killers have confessed to mafia ambitions. They wanted to enter the Hall of Infamy, notoriety, where they said that they wanted to form their own mafia. Give us the latest. Well, certainly, Preeti, and this FIR consists of that particular revelation and the kind of intent these 3 shooters had. They wanted to establish themselves as a bigger mafia than Atiq Ahmed, and that is what was in their mind. And we have also seen in the recording how clearly it was very evident enough that they shot Atiq Ahmed immediately, then after Ashraf, and constantly 18 to 20 rounds of fire was done at that spot. And that is something which clearly, signifies and at the same time verifies that the only intention was this. Now, let me show you the visuals of the preparations for the cremation of Atiq Ahmed and Ashraf. Now, this is the
this is the spot where Asad's body was buried under the soil yesterday, and it's not even 24 hours when the preparations are being done for the cremation of Atiq Ahmed and his brother Ashraf. And you can see how this has been this couple has been dig just near to the Asad's one. You can see the police personnel who are there in front of them. Preparations are being made. Now, what has been said that the cremation of Atiq Ahmed and Ashraf is expected late evening. Although there is no official confirmation about it, that could only possibly... The latest that is coming in is these visuals that you see where the cops are standing by for the burial of both Atiq and his brother Ashraf. It's going to happen in the same cemetery where Atiq's own son Asad has also been buried. We are going to get you the latest, but what we are given to understand, and we are going to take you through the FIR that has India Today has accessed, where all three killers have confessed to mafia ambition, saying they wanted to get rid of the Atiq gang. Wanted infamy. Abhishek, I want to bring you in. All three, give us a bit more on who these three were. They've admitted saying that they harbored mafia ambitions. If they harbored mafia ambitions, what was the reason by which at least two of them raised Jai Shri Ram slogans after shooting down Atiq and Ashraf? Well, absolutely, Preeti, and the FIR clearly shows and clearly mentions about it. Let me first tell you about these three shooters. Three young boys. One of them belongs to Banda district, the other one from Hamirpur, and the third one from Kasganj district. These three districts. Now, what is very important is that all of them has no correlation with each other. None of them belongs to Prayagraj. And as far as this last year, the last night shootout is concerned, it is expected they did a proper recce because they were aware of the movement of Atiq Ahmed and Ashraf, that they were very well aware that, the police is taking them for the investigation. They will take them to the Colvin Hospital for the medical test. So they had a very fair realization. Now, what is the intent? That again is very much visible in the FIR because they wanted to establish themselves as a bigger mafia. What we got to know from the sources that they attached to any gang which was operating in Prayagraj? Were all the three? Did they have criminal antecedents? And ultimately, what was the connection of raising Jai Shri Ram slogans at the time of killing both Atiq and Ashraf? Well, absolutely, Preeti, and the police is not confirming anything so far. They're only talking about their primary intent, that was to finish and to shoot Atiq Ahmed and Ashraf, and on the other side, to establish themselves as a bigger mafias. But one thing has also been confirmed to us by the sources that they had this thing in mind that Atiq Ahmed has done a lot of suffering to the people. They had that kind of communal mindset, and but again, it all depends on the revelation by the police, the Prayagraj police, and when they will, give an actual confirmation on that. So saying anything about it would be, I think, premature. But one thing is very clear once again, that the intent was to shoot Atiq Ahmed. They wanted to establish themselves because they did not, they don't want to, run away from the spot. Immediately after 18 to 20 shots, they started shouting, surrender, surrender. And then the cops who were there immediately grabbed them and took them into the custody. So, but chanting some slogans will have some implications, but that again needs to be verified when the police will make these statements clear. But once and again, again and again, the kind of reactions we were coming because there were a lot of speculations over the encounter of Atiq Ahmed, why there is not enough security, why they were taken to the hospitals with not enough police personnel. So all that theories and all this acquisition are already has already been made, and that is a part of the political angle as well. But these Abhishek, what time will the burial take place of Atiq and Ashraf? And it's in the same cemetery where his own son Asad was buried.
Yes, Preeti, we are here at the Kasari Masari cremation ground, and this is the place where both of them will be cremated. Now, the time is again not confirmed. What we are getting to know that late evening possibly could be the time when this will happen. But the administration is making the preparation. After the post-mortem, it remains to be seen whether from the family someone will again come to claim the body, whether Shaista will turn up, because yesterday also when Asad cremation was happening, nobody from the family turned up. Yes, there were uncles, there were some other cousins who came, but not from the immediate family. None of the brothers or the mother or anyone directly related to Asad were there. And today, because it's about Ashraf and Atiq Ahmed, both were killed yesterday, so it remains to be seen who all will turn up today. But as far as the cremation and the last rites and bring the body of both of these brothers is concerned, is expected late evening today at the Kasari Masari here funeral ground in Prayagraj. Yes. All right, interesting. We're getting in what the FIR says, and the FIR says that all three of them harbored mafia ambitions and they wanted to kill the Atiq gang. They harbored other communal sentiments, is what our sources are telling us, where they raised Jai Shri Ram slogans as well. Let's get you the latest now news coming in. The banned Zigana pistol was used to kill Atiq and Ashraf. Zigana pistols are banned in India. They're made in Turkey. The cops say the shooter, Sunny, had strong links with Hamirpur gangsters. So the cops are insinuating that possibly the gun was procured through the route of the Hamirpur gangsters' link. Which gangs from Hamirpur was one of the shooters, Sunny, connected to? We're going to try and get a larger understanding. But these were not country-made pistols. These were the pistol that, at least what we're given to understand, one of the shooters, Sunny, used was the banned Zigana pistol. It's banned in India. It's made in Turkey. How is it that Sunny got his hands on it? The cops suggest that there are strong links of Sunny with gangs which hail from Hamirpur, and that is where he could possibly have got that firearm which is banned in the country. Meanwhile, gangster Atiq Ahmed and brother Ashraf were shot dead in Prayagraj on Sunday. The killing was caught live on television as Atiq and Ashraf were speaking to India Today reporters. Sensational visuals on your screen reveal how the whole incident unfolded inside Prayagraj's MLN Medical College, where they were being taken for medical examination by cops. Sounds of indiscriminate fire were heard as Atiq and Ashraf collapsed on the ground. All three of them, the three shooters, raised their hands. But before they did so, they did raise Jai Shri Ram slogans. The Chief Minister, Yogi Adityanath, is holding the key meet with senior officials. Chief Minister has ordered 3-member Judicial Commission probe in the matter and taking regular updates. Section 144 has also been imposed in the entire state of Uttar Pradesh. Meanwhile, the graves of Atiq and Ashraf are being dug in Prayagraj. They both will be buried in the same cremation ground, in the same burial ground as the son Asad. आज जनाजे में आप लोग क्या कहना आप कुछ कहना मेन बात ये है कि गुड्डू मुस्लिम आज जनाजे में आप लोग क्या कहना आप कुछ कहना मेन बात ये है कि गुड्डू मुस्लिम All right after the shooting, all three of them shooting both Atiq and Ashraf on live television. They posed as members of the press, media. They had identity cards, they had a camera as well. They shot them on point blank range, you just saw that. Then raised slogans of Jai Shri Ram before they flung their hands up saying that they surrendered. 2 slogans they raised, Jai Shri Ram and surrender. India Today's cameras were rolling when Atiq and his brother were shot. Here's the full sequence. अशरफ, आप लोग कुछ कहेंगे? कहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे? कुछ कहेंगे आप? कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहें भैया, किस बारे में कहें? सर कुछ कहेंगे?
किस बारे में क्या कहें? आज आपको जनाजा हुआ था, जो आप लोग वहाँ गए थे कि नहीं? आज जनाजे में आप लोग गए थे कि नहीं? क्या कहना, आप कुछ कहना? मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम All right, let's cut across to my colleagues Samarth and Neeraj Kumar, who were eyewitness to the attack. This is what they recalled. ये जो मोमेंट था आपने कैसे डिसाइड किया? नीरज, इंडिया टुडे से पूजा का सवाल आपसे है कि उस वक्त आपने ये डिसाइड कैसे किया कि आपको वहाँ से निकलना नहीं है बल्कि वहाँ रहकर उन पिक्चर्स को, उन तस्वीरों को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करना? नहीं, हालांकि वो स्थिति बहुत वैसी थी, लेकिन इतने साल हो गए काम करते हुए, तो लगता है कि जो काम हम कर रहे हैं उसके प्रति एक डेडिकेशन भी होता है कि वो चीज़ें ना हो, और एक जो हम काम कर रहे हैं एज अ प्रोफेशनल वो एक जुनून होता है कि हम कहीं कुछ हमसे छूटे ना। जो काम जब हम स्पॉट पे हैं, अगर हम स्पॉट पे हैं तो हम जो बेहतर कर सकते हैं वो करना चाहिए। तो उस समय जो सबकॉन्शियस माइंड में जो था कि मुझे अपना बेस्ट करना है, तो ऐसा कोई बहुत, हालांकि स्थिति आप भी जान रहे हैं, सभी तितिर बितिर थे, लेकिन एज अ प्रोफेशनल मुझे ये लगा कि मुझे यहाँ डटे रहना चाहिए और मुझे हर वो शॉट कवर करना चाहिए जो मैं कवर कर सकता हूँ। डर नहीं लगा? हाँ, डर जैसी कोई चीज़ थी नहीं, और वो टाइम भी इतना शॉर्ट था कि इससे पहले कि आप कुछ सोचते वो एंड हुआ। और क्या बोलते हैं आप, मैं क्या बोल सकता हूँ, वो आपके सामने ही सरेंडर, हमारे सामने ही सरेंडर हो गया, तो लगा तुरंत चीज़ें कंट्रोल में आ गई। कंट्रोल में नहीं आ गई, जिस तरह से तीनों तरफ से फायरिंग चल रही थी, आप भी देख रहे थे, जिस तरह से तीनों तरफ से फायरिंग चल रही थी, तो वो गोलियां कहीं भी जा सकती थी। पीछे से चली, मैं अशरफ के बगल में था, आप उधर खड़े थे, पीछे से एक बंदा आया। बिल्कुल वो पीछे से गोली चली, और जिस पोजीशन में जैसे हम यहाँ खड़े हुए थे तो पीछे से फायर हुआ, और पीछे से फायर होकर वहीं से फायर होना शुरू हुआ। तो वो फायर हमारी तरफ था, मतलब मान लीजिए कि वो यहाँ पे पड़ा है, लेकिन फायर ऐसे हो रहा था, तो वो ऊपर भी हो सकता था, नीचे भी हो सकता था। तो 3-4 कदम पीछे लिया मैंने, अपनी पोजिशनिंग करी, कैमरे को जो हम अपने उसमें जो बेहतर कर सकते हैं वाइड एंगल किया, उसको खोला, और जैसे जैसे मुझे लगा कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए, उसके बाद मैं India Today reporters were at the spot where Atiq and Ashraf were killed. Here are all the ground reports filed by my colleagues Samarth Srivastav and Arvind. अतीक अहमद और अशरफ की मौत हो गई है, ये बड़ी खबर यहाँ से आ रही है। जो मेडिकल कॉलेज जहाँ पर मैं हूँ, यहाँ पर मेडिकल चेकअप के लिए आ रहे थे, और ये देखिए यहाँ पर पिस्टल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर बाइक लुढ़की पड़ी है क्योंकि मीडिया यहाँ पर थी, कैमरे यहाँ पर देखिए गिरे हैं, टूट गए हैं, माइक आईडीज टूट गई हैं, और ये खून से लथपथ जो कपड़े हैं, जो अंगोछा है और ये पिस्टल्स हैं, वो यहाँ पर लगातार हैं। पुलिस कर्मियों से भी सवाल जवाब होंगे कि आखिर किस सिक्योरिटी में यहाँ पर लाए थे कि इस तरह का इनकाउंटर, इस तरह की घटना यहाँ पर हुई है, ये भी पूछना पड़ेगा। तो सर ये किस तरह से, कैसे हो गया सर, प्लीज किस तरह से ये घटना हुई है? यहाँ पर पुलिस जो है कुछ नहीं बोल रही है, आप देख सकते तस्वीरें यहाँ से, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। सर गोली किसने चलाई सर? अनआइडेंटिफाइड लोग थे, किसने चलाई, क्या लगता है प्रथम दृष्टया आपको? सर प्रथम दृष्टया क्या लगता है आपको? तो देख सकते हैं पुलिस जो है वो सवालों से पूरी तरीके से यहाँ बचती आप देख सकते हैं नजर आ रही है, और यहाँ पर जमावड़ा था कई मीडिया पर्सन्स का। उस वक्त ये ताड़ातड़ गोलियां चलनी शुरू हुई, जहां पर अतीक अहमद और अशरफ दोनों को, यहाँ पर दोनों की मृत्यु हो गई है, दोनों खत्म हो गए हैं। और ये बड़ी खबर आपको हम दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से कि किस तरह से यहाँ पर ये तस्वीरें मैं आप दिखा रहा हूँ, चप्पल जो है वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर पड़ी हुई है, और लगातार यहाँ पर इस पूरे गेट को यहाँ से कुल 3 लोग बताए जा रहे हैं, 3 लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए थे, जो सूचना मिल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेडिकल कॉलेज जो है, इस अस्पताल को बंद कर दिया गया। हाँ? जो 17 पुलिस ऑफिशियल है उसमें वो लोग शामिल हैं जो जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, जहां अतीक और अशरफ को गोली मारी गई थी, यहां स्पॉट पर मौजूद थे। उसके अलावा धूमनगंज पुलिस स्टेशन जहां कस्टडी में रखा गया था, वहां के कुछ पुलिस ऑफिसर है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये जो माइक आप देख पा रहे हैं, एनसीआर न्यूज लिखा हुआ है इसमें। ये एनसीआर न्यूज, ये प्रयागराज है, दिल्ली एनसीआर नहीं है। एनसीआर न्यूज का ये माइक है जो डमी बताया जा रहा है, और जो कैमरा है वो भी डमी है, उसमें
बैटरी ने, जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है, उन्होंने इस कैमरा और माइक को अपने कब्जे में ले लिया है। जो अटैकर्स थे वो यही कैमरा और माइक लेकर आया था, ऐसा सस्पेक्ट किया जा रहा है एफएसएल के टीम के जरिए और जो प्रयागराज पुलिस है उसके टीम के जरिए। तो इस वजह से इसको भी एफएसएल की टीम ने सीज किया। ये देखिए अपने साथ लेकर एफएसएल की टीम ये जो कैमरा माइक है इसको लेकर जा रही है। इसके अलावा 3 वेपन्स, वो देखने में सोफिस्टिकेटेड लग रहे हैं वेपन्स, वो रिकवर हुए हैं, जिसमें कुछ मैगजीन्स भी मौजूद थी। यानी जो अटैकर्स थे वो पूरी गोलियां नहीं चला पाए थे, उसमें काफी मैगजीन्स वो मौजूद थी और वो रिकवर लाइव कार्टेजेस जो है वो एफएसएल की टीम ने वो रिकवर किया है। लेकिन ये जो अब अगर देखेंगे जो ये स्पॉट है, अब क्लियरली यहाँ आपको दिखाई दे रहा है एफएसएल की टीम ने यहाँ से सैंपल कलेक्ट कर लिए है। ये जो आप व्हाइट सर्कल में देख पा रहे हैं ये वो चीजें हैं जहां पर कारतूस मिला है, यहाँ जहां पर गोलियां मिली है। इससे ये क्लियर हो रहा है कि कम से कम कई राउंड यहाँ पर गोलियां चली है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि 20 निशान तो यहाँ पर बनाए गए और एफएसएल की टीम जो सैंपल है उसको लेकर जा रही है। और ये जरा क्राइम सीन को इंडिया टुडे पर हम रिक्रिएट करते हैं। ये देखिए, ये हॉस्पिटल का मेन एंट्री गेट है और यहीं से अशरफ और अतीक को लेकर बाहर आप देखिए यहाँ पर सिक्योरिटी पर्सनल कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर अब तैनात किए गए हैं। जब ये इस पूरे गोलीकांड की जानकारी मिली थी उसके बाद यहाँ से ये जो एंट्री गेट है, इस एंट्री गेट से अतीक और अशरफ को पुलिस अपने साथ लेकर जाती है एक रूटीन मेडिकल चेकअप के लिए। और यहाँ से जब लेकर जाती है तो ये ठीक एंट्री गेट है और एंट्री गेट के अंदर पहले मेडिकल चेकअप कराया जाता है। उसके बाद यहाँ पर अतीक और अशरफ वो मीडिया कर्मियों को बाइट देने लगते हैं। थोड़ा डिस्टर्बिंग विजुअल्स है क्योंकि ब्लड यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जब बाइट देने लगते हैं तभी अटैकर्स जो जर्नलिस्ट बनकर आए थे, और ये जो बाइक अगर आप देखें तो ये राउंड अप किया है पुलिस ने, ऐसा बताया जा रहा है कि इस बाइक से जो वो अटैकर्स थे वो आए थे। और उसके बाद जैसे ही अतीक से इंडिया टुडे ने क्वेश्चन करने की कोशिश की कि वो असद के फ्यूनरल में क्यों नहीं जा पाया, और जैसे ही उसने बाइट देने की कोशिश की, जो अटैकर्स थे उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और घेर कर फायरिंग कर दी। Meanwhile, India Today's Samar Srivastava was one of the very few reporters who witnessed this murder. Here is a report where he shares a brief account of all that happened last night. It was 10:30 p.m. yesterday when 3 jeeps of Prayagraj police reached at this particular road. From that point, where you will be seeing a barricade, if my cameraman Neeraj would zoom, from that area 3 police jeeps came in and stopped right here at this particular road with a hospital right there with the name Motilal Nehru Mandaliya Chikitsalaya Prayagraj, which is commonly called Calvin Prayagraj Hospital by the people of Prayagraj. And once the jeep was stopped here, Atiq Ahmed and Ashraf, number one, Ashraf came out first from this jeep, and then Ashraf, being a younger brother, gave support to Atiq, his hand, and then Atiq came in along with Ashraf. Then, moving from this point, come along with us. This was the point when Ashraf this side and Atiq to his right side. They started moving step by step inside this particular hospital where I am currently moving inside. So once after reaching at this particular point, India Today TV asked Ashraf and Asad. India Today TV confronted Asad and Ashraf right over there and questioned about his unavailability in the final rites of his son Asad. To which Atiq replied, नहीं जाने दिया तो नहीं गए. This was not the end. 2 seconds after Atiq's statement, Ashraf started saying, taking the name of Guddu Muslim, and suddenly a gunfire happened. A shooter came from behind and smashed a bullet inside the head of Atiq Ahmed right over there, and then 2 other shooters came from this point of this area
and they started bullet fire, 17 rounds of fire as per the police, and Ashraf and Atiq Ahmed dead right there. India Today TV cameraman Neeraj Kumar was right there along with me, Samad Srivastav. It was around 10:40 p.m. right there. It felt like a cracker bursting on a festival of Diwali, but seconds after we realized it is no cracker, it is the bullet gunfire firing. We had no idea at that moment that it is a targeted killing, that they are only targeting those two gangsters. Meanwhile, all three shooters who killed Atiq and Ashraf have now been identified. The killers have been identified as Lavlesh Tiwari, who hails from UP's Banda, Sunny, a resident of Himachal's Hamirpur, and Arun Maurya from UP's Kasganj. They surrendered right after killing Atiq and his brother. Sources tell India Today that the shooters in the initial interrogation confessed that they wanted to become mafias themselves, which is why they killed Atiq. There was also, of course, a communal angle to it all, where all three of them, having criminal history, also raised Jai Shri Ram slogans minutes after shooting both Atiq and Ashraf. It is evident that they were criminals from the way they carried out the attack. They shot Atiq and Ashraf dead at point-blank range. So how did they carry out the attack? Well, they came on a bike, a motorcycle, posing as journalists, carrying fake cameras, and mingled with the media team. Just when Atiq and Ashraf were giving a soundbite, they shot him and his brother, firing 18 rounds at them, and surrendered, chanting Jai Shri Ram slogans. Ashraf, आप लोग कुछ कहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे? थोड़ा कुछ कहेंगे आप? कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहें भैया, किस बारे में कहें? सर कुछ कहेंगे? किस बारे में क्या कहें? कुछ कहेंगे? आज आप लोग जनाजा हुआ था, कुछ कहेंगे? वहाँ गए थे कि नहीं? आज जनाजे में आप गए थे कि नहीं? क्या कहना आप? कुछ कहना? मेन बात ये है कि गुड्डू मुसलमान Listen in to what the families of shooters have to say about the attack. यज्ञ कुमार जी, यज्ञ कुमार यज्ञ कुमार यज्ञ कुमार यज्ञ कुमार ये बताइए, ये लवलेस कौन है आपका? लड़का है। आपको कुछ जानकारी हुई है कि कल एक शूट आउट हुआ है, उसमें लवलेस का नाम बताया गया है? हाँ, टीवी में देखा। कैसा है ये लवलेस और किस तरह से ये कैसे वहाँ पहुँच गया, कुछ जानकारी है आपको? हमें कोई जानकारी नहीं है ना, हम लोगों से इससे कोई मतलब नहीं। ये क्या घर में नहीं रहता था? ना। अच्छा, कब से प्रयागराज में रह रहा है ये? हमें नहीं मालूम। अच्छा, यहाँ नहीं, ये घर में आखिरी बार कब आया था? ये 7-8 रोज 5-6 रोज पहले था। हमसे घर से किसी कोई चीज से मतलब गज नहीं, आता था अपना नहा धो के, जब भी 4-6 रोज में आता था नहा धो के अपना निकल जाता था। कोई ना किसी चीज से मतलब कर। अच्छा, प्रयागराज ये आता जाता था, ये आपको बताता था कभी? ना, कभी हमसे बातचीत नहीं हुई। पूरा मोहल्ला बता सकता है, पूरा घर बता सकता है, हर आदमी के हमसे लोगों से कोई मतलब गज नहीं थी। सालों से बोलचाल बंद है। जब उस लड़की की थप्पड़ मारा था, उसका एक केस चल रहा है। कौन सा केस? अरे एक बिटिया को थप्पड़ मार दिया था इस चौराहे में, उसका मुकदमा चल रहा है। फिर क्या हुआ था? उसमें जेल गया था? हाँ, उसमें जेल गया था। तो जमानत से कब छूट के आया था? अरे हमको याद 1 साल 1.5 साल पहले की बात है। अच्छा, अभी ये 5-6 दिन पहले यहाँ घर से निकला है जी। क्या करता है वैसे, क्या काम है इसका? कुछ नहीं, काम नहीं, नशा करता है। नशेड़ी आदमी, इसीलिए मेरे को सब लोगों ने त्याग दिया घर बहुत पहले से। अच्छा, कितने भाई बहन हैं ये? 4 हैं। बहन नहीं है। ये सबसे बड़ा है? नहीं, तीसरे नंबर का है। अच्छा, ये बताइए कि अभी आपको जो ये जानकारी कैसे हुई कि कल ये भी साथ में था? टीवी देख रहे थे अभी। कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या कहेंगे हम कि जैसे उसने जो वारदात को अंजाम दिया है? क्या कहेंगे इसमें, हम कहने लायक क्या रहे शब्द हैं कि हमारे पास कुछ। पढ़ाई वढ़ाई किया था इसने?
हाँ, इंटर किया। इंटर के बाद छोड़ दी? हाँ, बीए कर रहा था, बीए में फेल हो गया। इस समय कुछ नहीं करता था? कुछ नहीं। क्या किसी लोगों के साथ इनकी संगत की, जो ऐसे लोग और आते रहे हैं उनके साथ? लड़का है का, जब हमसे कोई मतलब करने तो हम क्या बताएं कि किसकी संगत थी, कौन सा था। ये जो आपके भाई है, क्या नाम है उसका? सनी। क्या करता था ये ऐसे घूमता फिरता रहता था सर। कुछ मामले भी दर्ज किया उसको? जी सर। कितने लोगों को दर्ज? मालूम नहीं है सर। क्या भाई हैं आप लोग? हम 3 भाई थे सर, एक भाई खत्म हो गया मेरा। जी। सनी कब से नहीं रहता है यहाँ? ये काफी दिन हो गए सर। सनी अपराधी कैसे बना? अपराधी सर जाके ऐसे ही जाके घूमता फिरता सर, बस फालतू के काम जाके अन्य और किया। पहले क्या किया करता था? कुछ नहीं सर, ऐसे ही। अपराधी कैसे बना? कैसे उसने पहला कौन सा क्राइम किया? कुछ नहीं किया था, हमको नहीं मालूम सर। जाके हम तो अलग जाके रहते हैं ना, हमने जाके उसको जाके बचपन में जाके देखा नहीं है, बस छोटे थे जाके भग गया था बस, और क्या सर। कल अतीक अहमद जो मारा गया उसमें आपके भाई का नाम शामिल है, आपको जानकारी है? जी हमको नहीं मालूम सर। Once again, viewers, all 3 of the shooters, after shooting down Ashraf and Atiq Ahmed at point-blank range, posing as media, as journalists as well, shot him, raised Jai Shri Ram slogans and slogans that they surrender. Listen in. कुछ कहेंगे आप? कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहें भैया, किस बारे में कहें? सर कुछ कहेंगे? किस बारे में क्या कहें? आज आपको जनाजा हुआ था, आप लोग वहाँ गए थे कि नहीं? आज जनाजे में आप लोग गए थे कि नहीं? क्या कहना आप? कुछ कहना? मेन बात यह है कि गुड्डू मुसलमान मेरा मोबाइल। देखिए, हम इस वक्त बांदा जिले के शहर कोतवाली इलाके के केवटरा मोहल्ले में मौजूद हैं, जहां लवलेश तिवारी यानी जो कल प्रयागराज अशरफ और अतीक हत्याकांड में जो व्यक्ति शामिल था, उसमें बताया जा रहा है कि ये इसी इलाके का रहने वाला है। मैं कैमरा पर्सन के माध्यम से दिखाना चाहूँगा, ये वही गली है जहाँ पर वो रहता है। ये सामने ठीक जो लाल कलर का ये मकान देख रहे हैं, इसी पे किराए से ये लवलेश रहना है या उसका परिवार रहता है। मैं बता 4 से 5 दिन पहले पिता के मुताबिक यहाँ से अभी गया है, और ये पूर्व में एक किसी मामले में यहाँ से जेल भी गया था, इसका उसमें केस भी चल रहा है। Right, the latest news break now coming in. Atiq's ISI link has now been exposed. ISI supplied weapons to Atiq for the Umesh Paul murder. ISI supplied Atiq Ahmed with a .45 bore pistol, AK-47 stain gun and RDX. The .45 pistol used in Umesh Paul murder case and 5 cartridges of Pakistan-made 9mm were also found, and 58 cartridges found with it. All right, so that's the latest that is coming in. Atiq's ISI link has been exposed at the back of his killing late last night. This is, of course, regarding the kind of arms and ammunition that were used for the Umesh Paul murder. ISI allegedly supplied Atiq Ahmed with .45 bore pistol, an AK-47, a stain gun and RDX. The pistol used in the Umesh Paul murder case and 5 cartridges of Pakistan-made 9mm were also found, and 58 cartridges found with it. All right, all of this news break coming at the back of Atiq Ahmed's murder case. Questions now being raised. Was this information available to the UP police earlier, or has it come at the back of the murder of Atiq and Ashraf Ahmed? Meanwhile, politics has, of course, peaked after Atiq's murder. Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav alleged a complete lawlessness in the state. Akhilesh further adding that such incidents in the presence of UP cops has created an environment of fear. Hitting out at the Yogi government, AIMIM chief Asad Owaisi called this a complete failure of law and order under the Yogi government. The AIMIM chief will also hold a press conference in Hyderabad today. BSP chief Mayawati slammed the UP government over poor security arrangements and the demand that the Supreme Court should take cognizance, accusing the cops of organizing a pre-planned murder of Atiq and his brother Ashraf. TMC MLA Babul Supriyo called for an investigation into the incident.
उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार रूल ऑफ लॉ के तहत सरकार को नहीं चला रही है, बल्कि रूल बाय गन को चला रही है। और ये पिछले 2017 से जब से बीजेपी की गवर्नमेंट बनी ये सिलसिला चल रहा है। ये पूरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर आती है, क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में खड़े होकर कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे। देखो आपने ये कहा ना, ये कोई जबान है एक देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री की? एक मुख्यमंत्री की जबान होती है क्या? बताइए आप। कि कभी आपने देखा कि कोई व्यक्ति कचहरी पे पेश होने को आया हो, उसको रात के 10 बजे मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जाए? दोनों व्यक्तियों को हथकड़ी लगी हुई थी। हथकड़ी की डोर किसके हाथ में थी? पुलिस के थी। कहीं भाग भी नहीं सकते, कहीं हाथ नहीं हिला सकते। तो सीधे ये एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, सुनियोजित तरीके से हत्या की गई है। मेडिकल कॉलेज ले जाते हुए उनका कत्ल हुआ, 3 लड़कों ने मार दिया, उन लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पता चलता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कानूनी व्यवस्था कैसी है, कितनी पुख्ता कानूनी व्यवस्था है। अतीक तो बार बार कहता था कि वो यूपी जाएगा तो उसका कत्ल कर दिया जाएगा। 1 फीट 1.5 फीट के फासले से वो लड़का आके पिस्तौल से गोली मारता है सर में। ये कैसे मुमकिन है? इसमें मुझे बड़ी साजिश की बू नजर आती है। और मैं समझता हूं कि ये कुदरत का फैसला है और इसमें किसी भी कमेंट की आवश्यकता ही नहीं है। बाकी तो बात जब पूरी परिस्थिति सब सामने आएगी तब हम कहेंगे, लेकिन जितना हमको जानकारी मिली और जो कुछ मैंने इस पर टीवी पर देखा है, उस पर हम इतना ही कह सकते हैं कि एक तरीके का आसमानी फैसला है। लगातार जब जुल्म बढ़ता है तो कुदरत भी सक्रिय हो जाती है, वो अपनी तरीके से फैसला करती है। पुलिस की अपेक्षा में अगर इनके हमलावर 3 जो है अतीक की हत्या की, तो जैसा जो है हमारी सरकार 0 टॉलरेंस में तो काम कर रही है। अब तीनों हमलावर पकड़े गए हैं और पुलिस से कम धन्यवाद। कम से अब जो पकड़े गए हमलावर हैं वो कैसा उस पर जांच होता, उसका कैसा मामला आता, खुलासा होता, उस पर हम उसके बाद ही हम कुछ कह सकते हैं। All the political reactions coming in. Going to slip into a break. On the other side, big developments taking place in Karnataka as well. BJP's ticket Nataka explodes. Ex-Chief Minister Jagdish Shettar quits the BJP after he was denied a ticket for polls. You are watching India Today. As State of War Karnataka begins, a reminder, who is the true number one? The 5 big voices speak to us before all the others. From Chief Minister Bommai to Chief Challenger Siddaramaiah, from old warhorse Yadurappa to muscleman DK Shivakumar and Kingmaker Kumaraswamy. When it's Karnataka, there's no competition. India's #1 election channel. It is tech giant Apple's big India bite. Apple is all set to open 2 retail stores in the country. The first retail store in India, scheduled to come up in Mumbai at Geo World Drive, will throw open its door to consumers on April 18. Apple CEO Tim Cook is expected to attend the launch of the Mumbai store. The store is located here in the newest mall of the city, the Geo World Drive. The barricades have already gone up with their vibrant colors, and the theme of the store seems to be inspired by the cabs of the city, the Kali Peas. The second store in Saket, Delhi, will open on April 20. Apple Retail will help consolidate the tech giant's position further in India. Until now, Apple has sold iPhones and other products in the country mostly through resellers, e-commerce websites and large format retail chains.
The move isn't surprising given Chief Executive Tim Cook in February called India a major focus for Apple. Apple has been on a steady expansion in India. Its share in the smartphone market is projected to grow from 1% in 2019 to 5% in 2023. It is no secret that Apple has been growing its manufacturing base in India. Making iPhones and then selling them in India ensures a smooth supply chain. India is at forefront of Apple's effort to decouple from China's factory floor. Apple Inc. partner Foxconn Technology Group also plans to invest about $700 million on a new plant in India, underscoring an accelerating shift of manufacturing away from China. It's clear that Apple's playbook is evolving as India emerges as hub not just for manufacturing but also demand. With Rachna Dhanrajani, Bureau Report, India Today. 18th May 2022. A normal day that changed to an abnormal day. She was cut into 35 pieces. उसने multiple weapons का use किया. Up against a psychotic butcher and a web of savagery. Now her father fights to put pieces of justice together. This is the story of Shraddha and her father. जब तक इसको फांसी नहीं होगी तब तक मैं इसका अंतिम संस्कार भी नहीं करूंगा. My daughter, Shraddha. Coming soon. What are your key expectations as far as the central bank's action on rates are concerned right now? There are a lot of changes that are happening. On the one hand, we saw the OPEC Plus moving to cut the production levels. That has stoked some inflation fears. Yet again, perhaps fears of aggressive rate hikes continuing. In case that happens, would that increase the chances of a deeper recession coming in? Well, I mean, I think, yes, there are many deeper recession. It's hard to say how deep the recession, but there are three headwinds, right? One is that Fed is going to keep raising rates because inflation fears are not going away. Second risk is related to the banking sector. Some of the recent turbulence we've seen is going to cause more bank lending tightening, and that will add additionally to the headwinds to the economy. And the third is is inflation going to prove, despite all these efforts, more stubborn? And OPEC action on oil is going to give that. So those are all three risks, I think. Right. In the Indian context, we've seen that in FY23, it was the domestic investors that kept the flag sailing high. The FIIs, were largely net sellers for the second consecutive year, although the sell-off really lessened to about 40,000 odd crore rupees. But it was the 2.5 lakh crore rupees pumping in by the DIIs that supported the market sentiments. I want to ask you, will the FIIs return to India in FY24? What's your sense? I would very strongly expect so, because if you look at the forward curve on the rates as far as the Fed funds expectation, the expectation of the market may be a little too optimistic that rates are going to be cut starting this summer itself. But I do believe that we are towards the end of the rate hike cycle. And once you start to get some relief, look, right now, people are looking at the fact that they can put money, in risk-free assets and get reasonably good return without taking a lot of risk. But I think as the rates start, subsiding, risk appetite returns. And when risk appetite returns, people will be looking for where the growth is the best. And I think India definitely presents, one of the shining beacons in global growth outlook.
in FY24 from an Indian context, and therefore I think that as risk appetite starts to come back, that'll be one of the big factors that will drive fund inflows into India, in my opinion. India Today Group wins the prestigious Ramnath Goenka Excellence in Journalism Awards. For the category of investigative reporting for 2019, the winner in broadcast, Milan Sharma. In the category of reporting on politics and government for 2019, the winner in broadcast is Bipasha Mukherjee from India Today TV. In the category of Hindi for 2019, in broadcast, Ashutosh Mishra from Aaj Tak. Shines bright with 5 awards. India Today Group, the gold standard in journalism. You are watching India Today. Co-presented by Star Health Insurance, the health insurance specialist. Co-powered by Jaguar, discover the magic of smart lights. All right, now with just 24 days left for Karnataka to cast the vote, BJP in fighting over tickets escalate. Former Karnataka Chief Minister Jagdish Shettar has resigned from the BJP. The 6-time MLA, former Chief Minister, made the announcement soon after his meeting with Chief Minister Bommai and Union Ministers Prahlad Joshi and Dharmendra Pradhan to break his deadlock failed. Shettar claimed the BJP top brass asked him not to contest the assembly elections to make way for younger people. Shettar says he denied the offer to give the ticket to his family members. BJP MLA Nehru Olekar launched a scathing attack as Bommai after being denied a ticket as well, accusing Bommai of personal vendetta. Olekar further went on to say that Chief Minister is jealous of his growing popularity. The BJP is facing a spree of exits, including MLC Lakshman Sawadi, who switched to the Congress, MLA MP Kumaraswamy to JDS after being denied tickets, while another disgruntled MLA, Karadi Sangana, has met his supporters to decide his next move after being denied a ticket. ನಾವು ಕೂಡ ರಾತ್ರಿ ಹೋಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಎರಡನೇದು ಅವರು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಅಥವಾ ಹೊರಗಡೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ಅವರು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನ ರಾಜೀನಾಮೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಕಸಿವಿಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ನೋವು ಉಂಟಾಗಿದೆ. BJP ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು DNA ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ. ಆ DNA ಇವತ್ತು ಬಹುಶಃ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರು ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಯಾವ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕರುಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸಣ್ಣವರು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬಂದರೂ ತಗೋತೀವಿ. ಸಣ್ಣವರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಯಾಕಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಪಕ್ಷ, ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕರುಗಳನ್ನ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲೂ ಅದೊಂದು ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಆಸೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಆ ರೀತಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಏನೋ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ನನಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ದ್ವೇಷ ಸಾಧಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ. ಹಿಂದಿನ ಸಾರಿ ಏನಿತ್ತು ಅವಾಗ ಟಿಕೆಟ್ ತಪ್ಪಿಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕಡೇ ದಿವಸ B.Pharm ಕಡೇ ದಿವಸ ಬಂತು. ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೇರು ನನ್ನ ಲೆವೆಲ್ನಾಗ ಬೆಳಿತಾನ, ಜನರ ಸಹವಾಸ ಜಾಸ್ತಿ ಐತಿ ಅಂತ. ಇವನಿಗೆ ಮಗ್ಗ ಜಾಸ್ತಿ ಜನರ ಈ ತಾಯಿ ಮಗ್ಗ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ಮಗ ಚಿತ್ರ ನಟಿಯರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹಚ್ಕೊಳ್ತಾನ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟದಾನ ಇವನು ಅಂತ ಹೇಳ. With all the twists and turns after Shettar quit the BJP, Congress has now reached out to him, understandably. MB Patil Siddaramaiah, DK Shamnur, all
in touch with Shettar. What we are getting to understand, MB Patil, Siddaramaiah, DK Sivakumar, all of them are in touch with Jagdish Shettar. Shettar has quit BJP after being denied a ticket for polls. Will he go to the Congress? That's the big question. Interesting developments taking place in the state of Karnataka. My colleague Annagha Kesav joins us from Bengaluru for more. Annagha, interesting developments. Will Shettar switch to the Congress or will go independent? You know, Preeti, Jagdish Shettar to any party, even indeed turn out to be a very he was the chief minister, he was a leader of opposition, and he was a speaker. And you know, given the fact that he's also a very strong Lingayat man, all the parties will now rally behind Jagdish Shettar to try to take Jagdish Shettar to their party. And now our sources are telling us that Shettar has received offers from the Congress party as well, and we're all waiting with bated breath to know if Shettar will indeed make the switch, because because yesterday when we were speaking to Shettar, he made it amply clear that he will contest in the electoral polls no matter what. If BJP does not give him a ticket, he will still go ahead and contest in the electoral polls by any route. And by that, he might either contest as an independent candidate or he might join another party. But yes, Jagdish Shettar does have offers on the table, and it is yet to be watched if Shettar will take in those offers. All right, Annagha, appreciate you joining us. So Jagdish Shettar has two options now in front of him. He's very clear, doesn't want to give the ticket to his own family, wants to keep it for himself. But the BJP very clear that he needs to make way for younger, fresher blood. So two options lie in front of Jagdish Shettar. Number one, go as independent. Number two, join another political party. Will it be the Congress? The Congress, understandably, very keen that he switches over. Meanwhile, ahead of the high-stake Karnataka elections, Congress is in full election mode. Former Congress President Rahul Gandhi will be addressing a Jai Bharat rally in Kolar, the same place where Rahul made the defamatory remarks against Prime Minister Modi, which led to his disqualification as an MP. The Congress is leaving no stone unturned to put forward a united front. Rahul Gandhi will be accompanied by top netas including Party Chief Mallikarjun Kharge, DK Sivakumar and former Chief Minister Siddaramaiah. Remember, Kolar is the same seat that Siddaramaiah wished to contest, but the Congress High Command denied him a ticket from his constituency. With that, I'm going to go into a quick break. To stay with us on the top of our top focus story. Dreaded gangster Atiq and his brother Ashraf are shot dead live on camera. All three accused have criminal history. You are watching India Today. Why does this happen?
Let me tell you the science behind it. For more informative videos like this, keep watching India Today News Mo. Traveling from different parts. Armed with facts, Looking at political back. she takes the news by its horns. Do you think the future of these students are not hampered? Fierce, bold and direct, setting the tone for the biggest stories. From every corner and every angle. Expect nothing but the unfiltered truth. News first, niceties later. Watch me, Nabila Jamal, on India Today. As State of War Karnataka begins, a reminder who is the true number one. The 5 big voices speak to us before all the others. From Chief Minister Bommai to Chief Challenger Siddaramaiah, from old warhorse Yadurappa to muscleman DK Shivakumar and Kingmaker Kumaraswamy. When it's Karnataka, there's no competition. India's #1 election channel. Good morning, viewers. Let's take a look at the weather report across the major cities this morning. Thiruvananthapuram is at 32 degrees Celsius with an AQI of 66. Mumbai is at 31 degrees Celsius with an AQI of 116. Panji is at 28 degrees Celsius with an AQI of 92. Ahmedabad is at 26 degrees Celsius with an AQI of 104. Bhopal is at 25 degrees Celsius with an AQI of 100. Jaipur is at 26 degrees Celsius with an AQI of 115. Delhi is at 27 degrees Celsius with an AQI of 113. Srinagar is at 11 degrees Celsius with AQI being 52. Lucknow is at 24 degrees Celsius with an AQI of 105. Patna is at 29 degrees Celsius with an AQI of 195. Kolkata is at 33 degrees with an AQI of 144. Hyderabad is at 28 degrees Celsius with an AQI of 131. Bangalore is at 21 degrees Celsius with an AQI of 57. Chennai is at 30 degrees Celsius with an AQI of 81. This is all we have for you in this segment. Hope wherever you are, you find favorable weather around you. Keep watching India Today for all the weather updates with me, AI Sana, all through the day. 18th May 2022. A normal day that changed to an abnormal day. She was cut into 35 pieces. उसने multiple weapons का use किया. Up against a psychotic butcher and a web of savagery. Now her father fights to put pieces of justice together. This is the story of Shraddha and her father. जब तक इसको फांसी नहीं होगी तब तक मैं इसका अंतिम संस्कार भी नहीं करूंगा. My daughter, Shraddha. Coming soon.
watching India Today. Don Atiq feared son Asad's fate. Hail of bullets made his worst fears come true. 18 bullets end 40 years of Mafia Raj. The chilling murders caught on India Today cameras. Brave India Today reporters report as the bullets flew. जैसे ही आतिक अहमद और असद वो इसका भाई बोलना शुरू करता है और एकदम से तड़तड़ाहट की आवाज आती है और ऐसे लगता है कि जैसे पटाखे दगने लगे. The fearless gold standard of journalism. Gangster-turned-politician lived by the bullet, died by the bullet, but has left behind many unanswered questions and, importantly, a political showdown in the state of Uttar Pradesh. Good afternoon and welcome. I'm Pooja Shali. Let's begin first with the headlines. Dawn-turned Neta Atiq Ahmed and his brother Ashraf shot dead in a chilling execution. Atiq's killers caught chanting Jai Shri Ram on camera. In a big confession to Uttar Pradesh police, shooters confessed to the mafia ambition, say wanted infamy and notoriety. All the shooters have criminal history. Meanwhile, it's the CBI heat on Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal in the liquor gate scam allegations. Aam Aadmi Party workers stage a massive protest in the capital. BJP calls Arvind Kejriwal kingpin of the scam. BJP ticket Natika explodes. Former Chief Minister Jagdish Shettar quit the BJP after he was denied a ticket for elections. Bomai says tried every bit to pacify him. Congress is now reaching out to Jagdish Shettar. Congress gears up for Karnataka battle after multiple delays. Rahul Gandhi to storm Kolar today. Congress Chief Mallikarjun Kharge to join Rahul Gandhi's rally. Shocking development, a chilling execution. Gangster-turned Neta Atiq Ahmed and his gangster brother Ashraf were shot dead in Prayagraj on Saturday late last night at 10:30 p.m. The killing was caught live on television as Atiq and Ashraf were speaking to India Today reporters. These are sensational visuals, may be triggering for our viewers as well, so a discretion there for you. Now, but on your screens, these are visuals that basically reveal what unfolded inside Prayagraj's MLN Medical College premises, where they were being taken for medical examination by the cops. Sounds of indiscriminate fire were heard as Atiq and Ashraf collapsed within seconds on the ground. The killers ensured that they were shot dead, 18 to 20 rounds of fire by the assailants. Chief Minister Yogi Adityanath, meanwhile, is holding key meetings with the senior officials. He has ordered 3-member Judicial Commission probe in the matter and is regularly taking the updates. Around Uttar Pradesh, Section 144 has been imposed in the entire state. Now, we are being told that the graves are being dug. Burial preparations are currently on for Atiq and Ashraf. कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहें भैया, किस बारे में कहें? सर कुछ कहेंगे? किस बारे में क्या कहें? आज आप लोग जनाजा हुआ था, आज आप लोग वहाँ गए थे कि नहीं? आज जनाजे में आप गए थे कि नहीं? क्या कहना? आप कुछ कहना? मेन बात ये है कि गुड्डू मुसलमान मेरा मोबाइल
आज जनाजे में आप लोग आप नहीं थे कि नहीं, क्या कहना आप कुछ कहना चाहिए? मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम आज जनाजे में आप लोग आप नहीं थे कि नहीं, क्या कहना आप कुछ कहना चाहिए? मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम Let's get an update from my colleague Abhishek Mishra. Abhishek, so Asad Ahmed is as an accused who participated in the killing and in broad daylight of Umesh Pal, was shot in an encounter. His burial has taken place, and almost 24 hours later, his father and uncle, gangster-turned-neta Atiq Ahmed, and Ashraf's burial also are set to take place. There appears to be activity around you. What is the time of that? Are family members expected to come? What is happening? Tell us. Well, Pooja, that is the biggest question now, because yesterday also, when Asad's body was brought here at the Kasari Masari cremation ground here in Prayagraj, nobody from the immediate family turned up. Yes, one of the grandfathers, Nana, was there. But today, because it's all about Atiq Ahmed, it's about Ashraf and Shaista, who is already absconding. There is no lead as far as where is she. So there again is a possibility. It remains to be seen whether Shaista will come or not, because yesterday she lost her son. Today it's all about her husband. And as far as the development is concerned, the post-mortem of Atiq Ahmed and Ashraf is underway. It is happening at the district hospital, and after that both the bodies will be brought here at the Kasari Masari cremation ground where we are right now. We've also shown the pictures of the place where the both will be buried under the soil. It's just next to the Asad spot, and there itself the last rite will be performed. Now, as far as security measures are concerned, that is also going to be a very crucial point for the administration. You can see once again the RAF police RAF personnel are there, the Rapid Action Force. We have also seen that this whole Chakia area, this whole area of Kasari Masari is under the vigilance of the UP police. They are making sure that the situation is under control. We've also taken a route of the Chakia area. We didn't see anyone. It's all silent, it's all empty. So that is a clear indication that so far there is no reaction, and that is the only reason that the Prayagraj administration is taking proactive measures in order to make sure that there is no violence, there is no any adverse situation in the district. Stay on with me, Abhishek. Indeed. Stay on with me, because for the viewer tuning in right now, what exactly unfolded? 18 to 20 rounds of fire, at least 3 assailants, young men. Their identities have now been revealed. They do have past criminal history as well. Wanted to become the big mafia via killing the gangsters who were the big mafia for a few decades now. These 3 wanted to become the big mafia, even surrendered, are in custody. Now that big questions are being raised on them, here's what had happened. Let's dip in. कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहें भैया, किस बारे में कहें? सर कुछ कहेंगे? किस बारे में क्या कहें? आज आपको जनाजा हुआ था, आप लोग वहाँ गए थे कि नहीं? आज जनाजे में आप लोग आप नहीं थे कि नहीं, क्या कहना आप कुछ कहना चाहिए? मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम मेरा मोबाइल कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहें भैया, किस बारे में कहें? सर कुछ कहेंगे? किस बारे में क्या कहें? आज आपको जनाजा हुआ था, आप लोग वहाँ गए थे कि नहीं? आज जनाजे में आप लोग आप नहीं थे कि नहीं, क्या कहना आप कुछ कहना चाहिए? मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम
मेरा मोबाइल। India Today's cameras were rolling when Atiq and his brother were shot dead. They were actually reacting to India Today's questions when suddenly on the head first, the first round was fired and then about 18 to 20. Here's a full sequence. 10:30 p.m, barely few seconds and the two were dead. कहेंगे कुछ कहना चाहेंगे कुछ कहेंगे आप कुछ कहना चाहेंगे क्या कहें भैया किस बारे में कहें सर कुछ कहेंगे किस बारे में क्या कहें आज आपको जनाजा हुआ था आप लोग वहाँ गए थे कि नहीं आज जनाजे में आप लोग गए थे कि नहीं क्या कहना आप कुछ कहना मेन बात ये है कि गुड्डू मुसलमान Remember, the incident wasn't just about the killers and the ones who were killed, but also the media persons. Our colleagues who were present there on that location, it was a near miss for Samar Srivastava and Neeraj Kumar. Now take a look at these ground reports, the aftermath of what was left. Samar Srivastava and Arvind Ojha sent us these ground reports. Take a look. अतीक अहमद और अशरफ की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर यहां से आ रही है। जो मेडिकल कॉलेज जहां पर मैं हूं, यहां पर मेडिकल चेकअप के लिए आ रहे थे और ये देखिए यहां पर पिस्टल्स मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां पर बाइक लुढ़की पड़ी है क्योंकि मीडिया यहां पर थी। कैमरे यहां पर देखिए गिरे हैं, टूट गए हैं, माइक आईडीज टूट गई हैं और ये खून से लथपथ जो कपड़े हैं, जो अंगोछा है और ये पिस्टल्स हैं, वो यहां पर लगातार हैं। पुलिस कर्मियों से भी सवाल जवाब होंगे कि आखिर किस सिक्योरिटी में यहां पर लाए थे कि इस तरह का इनकाउंटर, इस तरह की घटना यहां पर हुई है, ये भी पूछना पड़ेगा। तो सर ये किस तरह से कैसे हो गया सर? प्लीज इस तरह से घटना हुई है। यहाँ पर पुलिस जो है कुछ नहीं बोल रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरें यहाँ से, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। सर गोली किसने चलाई सर? अनआइडेंटिफाइड लोग थे, किसने चलाई? क्या लगता है प्रथम दृष्टया आपको? सर प्रथम दृष्टया क्या लगता है आपको? तो देख सकते हैं पुलिस जो है वो सवालों से पूरी तरीके से यहाँ बचती आप देख सकते हैं नजर आ रही है। और यहाँ पर जमावड़ा था कई मीडिया पर्सन्स का। उस वक्त ये ताड़ातड़ गोलियां चलनी शुरू हुई जहां पर अतीक अहमद और अशरफ दोनों को यहाँ पर दोनों की मृत्यु हो गई है, दोनों खत्म हो गए हैं। और ये बड़ी खबर आपको हम दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से कि किस तरह से यहाँ पर ये तस्वीरें मैं आप दिखा रहा हूं। चप्पल जो है वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर पड़ी हुई है और लगातार यहाँ पर इस पूरे गेट को यहाँ से कुल 3 लोग बताए जा रहे हैं। 3 लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए थे, जो सूचना मिल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेडिकल कॉलेज जो है इस अस्पताल को बंद कर दिया गया। जो 17 पुलिस ऑफिशियल है उसमें वो लोग शामिल हैं जो जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, जहां अतीक और अशरफ को गोली मारी गई थी, यहां स्पॉट पर मौजूद थे। उसके अलावा धूमनगंज पुलिस स्टेशन जहां कस्टडी में रखा गया था, वहां की कुछ पुलिस ऑफिसर है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये जो माइक आप देख पा रहे हैं एनसीआर न्यूज लिखा हुआ है इसमें। ये एनसीआर न्यूज, ये प्रयागराज है, दिल्ली एनसीआर नहीं है। एनसीआर न्यूज का ये माइक है जो डमी बताया जा रहा है और जो कैमरा है वो भी डमी है, उसमें बैटरी ने, जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है उन्होंने इस कैमरा और माइक को अपने कब्जे में ले लिया है। जो अटैकर्स थे वो यही कैमरा और माइक लेकर आया था, ऐसा सस्पेक्ट किया जा रहा है एफएसएल के टीम के जरिए और जो प्रयागराज पुलिस है उसके टीम के जरिए। तो इस वजह से इसको भी एफएसएल की टीम ने सीज किया। ये देखिए अपने साथ लेकर एफएसएल की टीम ये जो कैमरा माइक है इसको लेकर जा रही है। इसके अलावा 3 वेपन्स वो देखने में सोफिस्टिकेटेड लग रहे हैं वेपन्स, वो रिकवर हुए हैं, जिसमें कुछ मैगजीन्स भी मौजूद थी। यानी जो अटैकर्स थे वो पूरी गोलियां नहीं चला पाए थे, उसमें काफी मैगजीन्स वो मौजूद थी और वो रिकवर लाइव कार्टेजेस जो है वो एफएसएल की टीम ने वो रिकवर किया है। लेकिन ये जो अब अगर देखेंगे जो ये स्पॉट है, अब क्लियरली यहाँ आपको दिखाई दे रहा है एफएसएल की टीम ने यहाँ से सैंपल कलेक्ट कर लिए है। ये जो आप व्हाइट सर्कल में देख पा रहे हैं ये वो चीजें हैं जहां पर कारतूस मिला है, यहाँ जहां पर गोलियां मिली है। इससे ये क्लियर हो रहा है कि कम से कम कई राउंड यहाँ पर गोलियां चली है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि 20 निशान तो यहाँ पर बनाए गए और एफएसएल की टीम जो सैंपल है उसको लेकर जा रही है। और ये जरा क्राइम सीन को इंडिया टुडे पर हम रिक्रिएट करते हैं। ये देखिए ये हॉस्पिटल का मेन एंट्री गेट है और यहीं से अशरफ और अतीक को लेकर बाहर आप देखिए यहाँ पर
सिक्योरिटी पर्सनल कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर अब तैनात किए गए हैं। जब ये इस पूरे गोलीकांड की जानकारी मिली थी, उसके बाद यहाँ से ये जो एंट्री गेट है, इस एंट्री गेट से अतीक और अशरफ को पुलिस अपने साथ लेकर जाती है एक रूटीन मेडिकल चेकअप के लिए, और यहाँ से जब लेकर जाती है तो ये ठीक एंट्री गेट है, और एंट्री गेट के अंदर पहले मेडिकल चेकअप कराया जाता है। उसके बाद यहाँ पर अतीक और अशरफ वो मीडिया कर्मियों को बाइट देने लगते हैं। थोड़ा डिस्टर्बिंग विजुअल्स है क्योंकि ब्लड यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जब बाइट देने लगते हैं तभी अटैकर्स जो जर्नलिस्ट बनकर आए थे, और ये जो बाइक अगर आप देखें तो ये राउंड अप किया है पुलिस ने। ऐसा बताया जा रहा है कि इस बाइक से जो वो अटैकर्स थे वो आए थे, और उसके बाद जैसे ही अतीक से इंडिया टुडे ने क्वेश्चन करने की कोशिश की कि वो असद के फ्यूनरल में क्यों नहीं जा पाया, और जैसे ही उसने बाइट देने की कोशिश की, जो अटैकर्स थे उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और घेर कर फायरिंग कर दी। To watch the visuals because our cameras, our reporter continued to roll and continued to report. Samarth Srivastava and Neeraj Kumar were on the ground. It was a near miss. They were in the line of fire when the shooting had started. Here's an account of now they are revealing what exactly happened, and of course, needless to say, they continued to follow their duty. It was 10:30 p.m. yesterday when 3 jeeps of Prayagraj police reached at this particular road. From that point where you will be seeing a barricade, if my cameraman Neeraj would zoom, from that area 3 police jeeps came in and stopped right here at this particular road with a hospital right there with the name Motilal Nehru Mandaliya Chikitsalaya Prayagraj, which is commonly called Calvin Prayagraj Hospital by the people of Prayagraj. And once the jeep was stopped here, Atiq Ahmed and Ashraf, number one, Ashraf came out first from this jeep, and then Ashraf, being a younger brother, gave support to Atiq, his hand, and then Atiq came in along with Ashraf. Then moving from this point, come along with us. This was the point when Ashraf this side and Atiq to his right side. They started moving step by step inside this particular hospital where I am currently moving inside. So once after reaching at this particular point, India Today TV asked Ashraf and Asad. India Today TV confronted Asad and Ashraf right over there and questioned about his unavailability in the final rites of his son Asad. To which Atiq replied, "Nahi jaane diya to nahi gaye." This was not the end. 2 seconds after Atiq's statement, Ashraf started saying, taking the name of Guddu Muslim, and suddenly a gunfire happened. A shooter came from behind and smashed a bullet inside the head of Atiq Ahmed right over there, and then 2 other shooters came from this point of this area and they started bullet fire, 17 rounds of fire as per the police, and Ashraf and Atiq Ahmed dead right there. India Today TV cameraman Neeraj Kumar was right there along with me, Samarth Srivastava. It was around 10:40 p.m. right there. It felt like a cracker bursting on a festival of Diwali, but seconds after we realized it is no cracker, it is the bullet gunfire firing. We had no idea at that moment that it is a targeted killing, that they are only targeting those 2 gangsters. ये जो मोमेंट था आपने कैसे डिसाइड किया? नीरज, इंडिया टुडे से पूजा का सवाल आपसे है कि उस वक्त आपने ये डिसाइड कैसे किया कि आपको वहाँ से निकलना नहीं है बल्कि वहाँ रहकर उन पिक्चर्स को, उन तस्वीरों को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करना? नहीं, हालांकि वो स्थिति बहुत वैसी थी, लेकिन इतने साल हो गए काम करते हुए, तो लगता है कि जो काम हम कर रहे हैं उसके प्रति एक डेडिकेशन भी होता है कि वो चीज़ें ना हो, और एक
जो हम काम कर रहे हैं एज अ प्रोफेशनल, वो एक जुनून होता है कि हम कहीं कुछ हमसे छूटे ना। जो काम जब हम स्पॉट पे हैं, अगर हम स्पॉट पे हैं तो हम जो बेहतर कर सकते हैं वो करना चाहिए। तो उस समय जो सबकॉन्शियस माइंड में जो था कि मुझे अपना बेस्ट करना है, तो ऐसा कोई बहुत, हालांकि स्थिति आप भी जान रहे हैं, सभी तितिर बितिर थे, लेकिन एज अ प्रोफेशनल मुझे ये लगा कि मुझे यहाँ डटे रहना चाहिए और मुझे हर वो शॉट कवर करना चाहिए जो मैं कवर कर सकता हूँ। डर नहीं लगा? हाँ, डर जैसी कोई चीज़ थी नहीं। और वो टाइम भी इतना शॉर्ट था कि इससे पहले कि आप कुछ सोचते वो एंड हुआ। और क्या बोलते हैं आप, मैं क्या बोल सकता हूँ, वो आपके सामने ही सरेंडर, हमारे सामने ही सरेंडर हो गया तो लगा तुरंत चीजें कंट्रोल में आ गई। कंट्रोल में नहीं आ गई। जिस तरह से तीनों तरफ से फायरिंग चल रही थी, आप भी देख रहे थे, जिस तरह से तीनों तरफ से फायरिंग चल रही थी, तो वो गोलियां कहीं भी जा सकती थी। पीछे से चली, मैं अशरफ के बगल में था, आप उधर खड़े थे, पीछे से एक बंदा आया। बिल्कुल वो पीछे से गोली चली और जिस पोजीशन में जैसे हम यहाँ खड़े हुए थे तो पीछे से फायर हुआ और पीछे से फायर होकर वहीं से फायर होना शुरू हुआ। तो वो फायर हमारी तरफ था, मतलब मान लीजिए कि वो यहाँ पे पड़ा है लेकिन फायर ऐसे हो रहा था, तो वो ऊपर भी हो सकता था, नीचे भी हो सकता था। तो 3-4 कदम पीछे लिया मैंने, अपनी पोजिशनिंग करी, कैमरे को जो हम अपने उसमें जो बेहतर कर सकते हैं वाइड एंगल किया, उसको खोला और जैसे जैसे मुझे लगा कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए, उसके बाद मैं So these criminals, these killers, shot point blank range, at least 18 to 20 rounds of fire. Then they put their hands up, surrendered, and even started to shout religious slogans of Jai Shri Ram. Here's what had unfolded. Jai Shri Ram! Jai Shri Ram! Jai Shri Ram! Jai Shri Ram! देखो देखो मेरा मोबाइल। देखो देखो मेरा मोबाइल। Remember, this gangster turned politician Atiq Ahmed and his terror was not just about a member of or people of one community. He had terrorized Prayagraj, which was earlier called Allahabad, and for decades. He and his brother Ashraf were killed in that same area. He was shot point blank range. The firing took place near MLN Medical College premises. They were being taken for a medical examination, which is a protocol. This happened in Prayagraj, but what was the timeline? What exactly unfolded? Here's more in this detailed report. 15th April, 10:35 p.m. Dawn-turned Neta Atiq Ahmed and his brother Ashraf, both accused in the Umesh Pal murder case, were being taken for a medical test. India Today's crew on ground, reporter Samarth Srivastav and video journalist Neeraj Kumar approached them for a soundbite. Ashraf, आप लोग कुछ कहेंगे? Atiq starts taking sharpshooter Ghulam's name, who was killed in an encounter just 48 hours ago along with his son Asad. This is when shots begin to fly. 3 attackers fire indiscriminately. Atiq is shot point blank as the shooters chant Jai Shri Ram. हम लोग करीब आधे घंटे से वेट कर रहे थे कि अतीक अहमद आएगा और हम लोग उसकी बाइट के लिए इंतजार कर रहे थे कि एक शब्द वो बोलेगा और जैसे शुरू करना है, यहीं से शुरू करना। बिल्कुल, यहाँ से जैसे ही आप बात करना शुरू करते हैं और हम लोग पीछे पीछे जाते हैं और जैसे ही बोलना शुरू करता है, जैसे ही अतीक अहमद और असद वो उसका भाई बोलना शुरू करता है और एकदम से तड़तड़ाहट की आवाज आती है और ऐसे लगता है कि जैसे पटाखे दगने लगे। The shooters then put their arms up and are apprehended. They have what looks like media cards around their necks and carried a dummy camera and microphone. FSL की टीम है वो यहाँ पर आई हुई है और जो अटैकर्स थे उनके वेपन्स प्रदीप गुप्ता वो आपको दिखाएंगे। जो वेपन्स है उसकी तस्वीर वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट ले रहे हैं और बाकायदा 3 बाइक से जो अक्यूज्ड है वो आए थे। अभी तक ये जानकारी मिली है
ये क्लियर है कि ये जो तीनों अटैकर्स थे वो मीडिया कर्मी बनकर के आए हैं। लीगल रिक्वायरमेंट के तहत में इनको मेडिकल के लिए लाया गया था और मीडिया के लोग, पत्रकार जो है साथ में थे और फाइट ले रहे थे। इसी में प्राथमिक जानकारी के अनुसार 3 लोग मीडिया कर्मी बन के आए और वो मीडिया कर्मी बन के उन्होंने वहाँ पे बाइट लेने का प्रयास किया। उसी के अंतर्गत उन्होंने ये इंसिडेंट हुआ है जिसमें उन्होंने फायर किया है। Within minutes, the Don and his brother had fallen to the ground, dead and lying in a pool of blood. The 3 attackers who had been caught were quickly whisked away. Atiq Ahmed was shot dead 2 days after his son Asad was killed in an encounter in Jhansi, and just hours after his funeral, which the Don could not attend. Both lived by the bullet and died by the bullet. With Samarth Srivastava and Arvind Ojha in Prayagraj, Bureau Report, India Today. High-level meeting is on at Yogi Adityanath's residence. The meeting has concluded just now. It was a 3-hour-long meeting to take stock of the situation. Remember, since this morning and late at night also, there were meetings that were held. We are being told that 5 more senior IPS officers are being sent to Prayagraj to take further stock of the situation, ensure the area remains peaceful and there's no disturbance of law and order. Because after the shocking development that took place in Prayagraj, 3 shooters, 18 to 20 rounds of fire, and 2 men dead. High-profile prisoners, gangsters earlier, one of them even a senior politician, an elected MP and MLA from the Samajwadi Party. So it's been an absolute shocking development. A lot of political showdown as well that has taken place. Charges being thrown at Yogi Adityanath government, saying this is lawlessness. How can those in custody be killed? 3-hour-long meeting has taken place at Yogi Adityanath's residence. It has now concluded a high-level meeting with senior officers from the administration and the police also present. And we are being told 5 more IPS officers, senior officers of the Indian Police Service are being sent to Prayagraj. For clarity on what exactly is expected and why precisely are the at least 5 more IPS officers are being sent. Remember, Yogi Adityanath is now facing an opposition showdown from the Trinamool Congress, calling it Talibani Raj, from the Samajwadi Party saying this was all staged, and the BSP also giving out a statement via Mayawati. But it's interesting to mention how both Atiq Ahmed and his son Asad were associated with the BSP at one time and then elected from the Samajwadi Party at another. And that is why both parties in many ways are now calling this as and charging at the Yogi Adityanath government, saying this was all staged, this was all deliberate. There are communal overtones as well. Asad Owaisi of the AIMIM has jumped in to say that this is because they were from the Muslim community, that is why they were targeted. And they're calling this as a former politician, simply that they were targeted because they were from one community. Ashish Srivastava joining me from Lucknow for the latest. Ashish, go ahead. We are being told a meeting took place at Yogi Adityanath's residence. What all was decided? क्या specific था agenda पे? Ashish. जो मीटिंग है वो पूरी तरीके से ओवर हो गई है, चूँकि इस समय डीजीपी और जो एसएस होम है वो अभी मौजूद है अंदर। चूँकि जिस तरीके से ये एजेंडा पूरा सेट था कि हर एक जिले की एक रिपोर्ट बना के सीएम को सौंपनी थी और सीएम को इस बारे में बताना था कि किस तरीके से ये रिपोर्ट्स को बनाया गया और वहाँ की जो व्यवस्था है, यानी कि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो किस तरीके से सिचुएटेड है, उसकी भी रिपोर्ट एक बना के दी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक धारा 144 लागू है और कई जगह पर ये संवेदनशील जो इलाके हैं वहाँ पर की जो गश्त है पुलिस की, उसके बारे में बताया गया। इसके साथ साथ जो एक शासन ने पूरी एक रिपोर्ट जो मंगाई थी वो अभी तक नॉर्मल आई कि कहीं भी किसी तरीके की विवाद की बात नहीं सामने निकल कर आई है और ना ही किसी प्रकार का कोई उपद्रव अभी सामने आया। हालांकि डीजीपी ने और डीजीपी से साफ तौर से ये मांगा गया था कि इस पूरी घटना को लेकर किस तरीके से घटना हुई, उसके क्या क्या पहलू हैं। तो डीजीपी ने भी ये ब्रीफ किया है कि इस पूरे घटनाक्रम में जो आरोपी थे उनको अरेस्ट कर लिया गया, उसके साथ उनकी इन्वेस्टिगेशन की गई है, उनसे पूछताछ लगातार जारी है और वो सभी अपना जो उन्होंने क्राइम किया है उसको कमिट भी किया है। तो इन सभी चीज़ों की एक विस्तृत रिपोर्ट जो है सीएम के सामने रखी गई है और अब और गहनता से पूछताछ की जा रही है कि आखिर इसके पीछे साजिश
क्या थी, तो उसको लेकर भी क्योंकि अभी ये जो पूछताछ का प्रोसेस है वो चल रहा है और ये कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि ये शाम तक फिर एक बार सीएम ने इस रिपोर्ट को तलब किया है कि आप पूरी डिटेल बताएं कि आखिर शाम तक ये साजिश थी या इसके पीछे कौन था। तो बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से डीजीपी और एसीएस होम को लगातार बैठाया गया था और वो दोनों जो जिले के एसएसपी हैं और जिले के जो डीएम हैं वहाँ से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर और वहाँ के प्रशासन की व्यवस्थाओं को लेकर डायरेक्ट यहाँ से कोऑर्डिनेट कर रहे थे और उसके बाद सीएम को डायरेक्ट रिपोर्ट दे रहे थे। तो ये तो दोनों तरफ से पहलू रहा कि एक तरफ से डीजीपी उत्तर प्रदेश जो विश्वकर्मा जी हैं उनके साथ में और साथ में एसीएस होम हैं, तो ये सारी चीज़ें पूरी हो गई हैं और अब ऐसे में शाम को 5 बजे के आसपास फिर एक बार कहीं ना कहीं रिकॉल किया जाएगा और जिससे स्टेटस रिपोर्ट ली जाएगी कि आखिर इस पूरे मामले को लेकर प्रयागराज में जो हुआ है उसके पीछे क्या वजह बन सकती है। तो वो भी अभी पूछताछ की जा रही है। एक स्पेशल टीम है एसटीएफ की जो प्रयागराज यूनिट की है, जो कि अलग अलग यूनिट होती है उसी यूनिट की, वहाँ पर वो जांच कर रही है, इन्वेस्टिगेट कर रही है और एसटीएफ भी जानकारी करने की कोशिश कर रही है कि इसके पीछे की कोई वजह, ऐसा तो नहीं कोई रिवलरी कोई गैंग हो वो काम कर रहा हो या किसी काफी स्पेकुलेशन है आशीष, because while of course political charges are primarily at Yogi Adityanath, remember there are different angles emerging. He was a gangster earlier. He was in many ways a threat to not simply as rival gangs. There could have been supporters, there could have been anyone who would have wanted him dead. And at a point when Ashraf and Atiq started to say something about one Guddu Muslim, the gun came and the rounds of fire started. Ashish, please keep tracking all the latest coming in from Lucknow. Remember, 3 young men, 3 assailants shot these 2 men dead. Who were these 3 shooters? Their identity has now been identified. We are being told one is Lavlesh Tiwari, who hails from Uttar Pradesh's Banda, one Sunny, a resident of Hamirpur, and one Arun Maurya from Kasganj. This, remember, is important, which means all 3 of them were not from Prayagraj itself, but from outside locations. They surrendered just after killing Atiq and Ashraf. They raised their hands in air and the police came and immediately took them into custody. Now, the shooters in the initial interrogation have confessed, as it appears, that by killing them, who were big mafia once, now these young men wanted to become the big mafia in Uttar Pradesh, and which is why they chose to kill them. All 3 of them have criminal history available with the police. But it's also evident that these criminals, the manner in which they carried the attack was very clear. Their intent was clear. They shot them point blank range, 18 to 20 rounds, and they ensured that they were dead, not just injured, not even critically injured, they were dead. And then they decided to surrender. They came on a bike, they posed as journalists, they were well prepared. They had identity cards, they had a dummy camera and a microphone. And all of this to ensure they could gel in and blend with media persons who were present there asking questions. And when they started to answer Atiq and Ashraf, these men fired at them. Now, interestingly, just to give you a trivia here about the gun that was used that you see on your screens, it's not locally available. It is used and it is made, we are being told, is Turkey-made Zigana pistol, which costs 6 to 7 lakh rupees. Turkey-made gun and costs about 6 to 7 lakh rupees. It's a Zigana pistol. आज आप लोग वहाँ गए थे कि नहीं? आज जनाजे में आप लोग गए थे कि नहीं? क्या कहना आप? मेन बात ये है कि गुड्डू मुस्लिम अशरफ, आप लोग कुछ कहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे? कुछ कहेंगे आप? कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहें भैया, किस बारे में कहें? सर कुछ कहेंगे? किस बारे में क्या कहें? आज आपको जनाजा हुआ था, आप लोग वहाँ गए थे कि नहीं? आज जनाजे में आप गए थे कि नहीं? क्या कहना आप? कुछ कहना? मेन बात ये है कि गुड्डू मुस्लिम Remember, 3 killers and also now caught in this net are the 3 families of these assailants. Listen into what the family members of these shooters have to say, and most of them heard about it when they watched the faces on these cameras on screen. Yogi Kumar. जी? Yogi Kumar.
यज्ञ कुमार। ये बताइए, ये लॉलेस कौन है आपका? लड़का है। आपको कुछ जानकारी हुई है कि कल एक शूट आउट हुआ है, उसमें लॉलेस का नाम बताया जा रहा है? हाँ, टीवी में देखा। कैसा है ये लॉलेस और किस तरह से ये कैसे वहाँ पहुँच गया, कुछ जानकारी आपको? हमें कोई जानकारी नहीं है ना, हम लोगों से इससे कोई मतलब नहीं। ये क्या घर में नहीं रहता था? ना। अच्छा, कब से प्रयागराज में रह रहा है ये? हमें नहीं मालूम। अच्छा, यहाँ नहीं, ये घर में आखिरी बार कब आया था? ये 7-8 रोज 5-6 रोज पहले था। हमसे घर से किसी कोई चीज़ से मतलब गज नहीं आता था। अपना नहा धो के जब भी 4-6 रोज में आता था, नहा धो के अपना निकल जाता था। कोई ना किसी चीज़ से मतलब था। अच्छा, प्रयागराज ये आता जाता था, ये आपको बताता था कभी? ना, कभी हमसे बातचीत नहीं हुई। पूरा मोहल्ला बता सकता है, पूरा घर बता सकता है। हर आदमी के हमसे लोगों से कोई मतलब गज नहीं थे। सालों से बोलचाल बंद है। जब उस लड़की की थप्पड़ मारा था, उसका एक केस चल रहा है। कौन सा केस? अरे एक बिटिया को थप्पड़ मार दिया था इस चौराहे में, उसका मुकदमा चल रहा है। फिर क्या हुआ था? उसमें जेल गया था? हाँ, उसमें जेल गया था। तो जमानत से कब छूट के आया था? अरे हमको याद नहीं, 1-1.5 साल पहले की बात है। अच्छा, अभी ये 5-6 दिन पहले यहाँ घर से निकला है जी। क्या करता है वैसे, क्या काम है इसका? कुछ नहीं, काम नहीं, नशा करता है। नशेड़ी आदमी है, इसीलिए बिल्कुल सब लोगों ने त्याग दिया घर से बहुत पहले से। अच्छा, कितने भाई बहन हैं ये? 4 हैं। बहन नहीं है। ये सबसे बड़ा है? नहीं, तीसरे नंबर का है। एक मिनट थोड़ा। अच्छा, ये बताइए कि अभी आपको जो ये जानकारी कैसे हुई कि कल ये भी साथ मिलता शूट आउट? टीवी देख रहे थे अभी। कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या कहेंगे हम कि जैसे उसने जो वारदात को अंजाम दिया है? क्या कहेंगे इसमें, हम कहने लायक क्या रहे शब्द हैं कि हमारे पास कुछ। पढ़ाई किया था इसने? हाँ, इंटर किया। इंटर के बाद छोड़ दी? हाँ, बीए कर रहा था, बीए में फेल हो गया। इस समय कुछ नहीं करता था? कुछ नहीं। क्या किसी लोगों के साथ इनकी संगत थी जो ऐसे लोग और आते रहे उनके साथ? लड़का है का, जब हमसे कोई मतलब है गजने तो हम क्या बताएं कि किसकी संगत थी, कौन सा था। ये जो आपके भाई है, क्या नाम है उसका? सनी। क्या करता था ये ऐसे घूमता फिरता रहता सर। कुछ मामले भी दर्ज किया उसको? जी सर। कितने लोगों को दर्ज? मालूम नहीं है सर। क्या भाई हैं आप लोग? हम 3 भाई थे सर, एक भाई खत्म हो गया मेरा। अच्छा जी। सनी कब से नहीं रहता है यहाँ? ये काफी दिन हो गए सर। सनी अपराधी कैसे बना? अपराधी सर जाके ऐसे ही जाके घूमता फिरता सर, बस फालतू के काम जाके अन्य बन। और क्या पहले क्या किया करता था? कुछ नहीं सर, ऐसे ही। अपराधी कैसे बना? कैसे उसने पहला कौन सा क्राइम किया? कुछ नहीं किया था, हमको नहीं मालूम सर। जाके हम तो अलग जाके रहते हैं ना, हमने जाके उसको जाके बचपन जाके देखा नहीं है, बस छोटे थे जाके भाग गया था बस। और क्या सर? कल अतीक अहमद जो मारा गया उसमें आपके भाई का नाम शामिल, आपको जानकारी है? जी, हमको नहीं मालूम सर। Take a look at this ground report sent from one of the shooters' residence in Banda. They were not from Prayagraj but from the outskirts. Here's a ground report. देखिए, हम इस वक्त बांदा जिले के शहर कोतवाली इलाके के केवटरा मोहल्ले में मौजूद हैं, जहां लवलेश तिवारी यानी जो कल प्रयागराज अशरफ और अतीक हत्याकांड में जो व्यक्ति शामिल था, उसमें बताया जा रहा है कि ये इसी इलाके का रहने वाला है। मैं कैमरा पर्सन के माध्यम से दिखाना चाहूँगा, ये वही गली है जहाँ पर वो रहता है। ये सामने ठीक जो लाल कलर का ये मकान देख रहे हैं, इसी पे किराए से ये लवलेश रहना है या उसका परिवार रहता है। मैं अभी 4 से 5 दिन पहले पिता के मुताबिक यहाँ से अभी गया है और ये पूर्व में एक किसी मामले में यहाँ से जेल भी गया था, इसका उसमें एक केस भी चल रहा है। Now, the incident and investigation apart, it's a big political showdown. Politics has erupted. Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav is alleging a complete lawlessness in the state. Akhilesh further added that such incidents in the presence of UP police, which was there at location, has created an environment of fear in the state. Hitting out also at the Yogi Adityanath government is AIMIM chief Asad Ahmed, calling this a complete failure of law and order under Yogi Adityanath government. AIMIM chief, who held a press conference earlier this morning, also said that this precisely is with communal overtones because they belong to a certain community.
Bahujan Samaj Party Supremo Mayawati also slammed Uttar Pradesh government led by Yogi Adityanath, saying this is poor security arrangements and demanded that the Supreme Court should take cognizance of the murder. Accusing the cops of organizing allegedly a pre-planned murder of Atiq and his brother Ashraf, Trinamool Congress MLA Babul Supriyo called for a probe into this incident. उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार रूल ऑफ लॉ के तहत सरकार को नहीं चला रही है, बल्कि रूल बाय गन को चला रही है। और ये पिछले 2017 से जब से बीजेपी की गवर्नमेंट बनी ये सिलसिला चल रहा है। कि कभी आपने देखा कि कोई व्यक्ति कचहरी पे पेश होने को आया हो, उसको रात के 10 बजे मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जाए? दोनों व्यक्तियों को हथकड़ी लगी हुई थी। हथकड़ी की डोर किसके हाथ में थी? पुलिस के थी। कहीं भाग भी नहीं सकते, कहीं हाथ नहीं हिला सकते, तो सीधे ये एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, सुनियोजित तरीके से हत्या की गई है। दिन दहाड़े पुलिस के बंदोबस्त में हत्या हुई है तो ये गंभीर बात है ये, लेकिन पुलिस के घेरे में अगर हत्या होती है किसी गुंडे की तो ये लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। अतीक अहमद कोई राज विपक्ष का खोलने वाला था, समाजवादी पार्टी का। अब जांच के दायरे में है कि उसके मौत क्यों और कैसे हुआ है। उसके दो पक्ष हैं, एक पक्ष जो आप उठा रहे हैं, दूसरा पक्ष जांच के बाद पता चलेगा। और मैं समझता हूं कि ये कुदरत का फैसला है और इसमें किसी भी कमेंट की आवश्यकता ही नहीं है। बाकी तो बात जब पूरी परिस्थिति सब सामने आएगी तब हम कहेंगे, लेकिन जितना हमको जानकारी मिली और जो कुछ मैंने इस पर टीवी पर देखा है उस पर हम इतना ही कह सकते हैं कि एक तरीके का आसमानी फैसला है। लगातार जब जुल्म बढ़ता है तो कुदरत भी सक्रिय हो जाती है, वो अपनी तरीके से फैसला करती है। पुलिस की अपेक्षा में अगर इनके हमलावर तीन जो है अतीक की हत्या की, तो जैसा जो है हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस में तो काम कर रही है। अब तीनों हमलावर पकड़े गए हैं और पुलिस से कम धन्यवाद, कम से अब जो पकड़े गए हमलावर हैं वो कैसा उस पर जांच होता, उसका कैसा मामला आता, खुलासा होता, उस पर हम उसके बाद ही हम कुछ कह सकते हैं। खुले रूप से जो ये मर्डर हो रहे हैं ये क्या इशारा करते हैं कि हमारी कानून व्यवस्था क्या है, क्या राजनीति हो रही है उत्तर प्रदेश में और अपने देश में। साफ मर्डर हो रहा है, एक दिन किसी का होता है, उसके दिन भाई का होता है। ये क्या संकेत है इसके? और इसमें मैं सोचता हूँ सुप्रीम कोर्ट इसका खुद नोटिस ले और इसकी जांच ऑर्डर करे। Being killed in an encounter because he is threatening the security of the country. But an individual, a young boy, Asad, whose age is 19, how can he threaten the security of the country? अगर आपको उसने, if you want to catch him, hit him on the leg, prosecute him. Why do you want to kill him? So with regard to this top story, let's take a look at other developments as well. Atiq and his brother were shot dead when they were interacting with media persons and India Today reporters present on the ground sharp at 10:35 p.m. on Saturday night. Atiq was killed point blank range. A total of 18 rounds were fired on both the gangsters. All three attackers immediately raised their hands up and surrendered to the police. They chanted also Jai Shri Ram while firing shots. They have been now identified. Investigation is on, where they have said that they carried out this attack because they now wanted to become the big mafia. Meanwhile, the graves of Atiq and Ashraf are being dug. Burial preparations are on. 13th April, remember, gangster-turned-neta Atiq Ahmed's son Asad was killed in an encounter in Jhansi and buried in Prayagraj. He was accused in Umesh Pal murder case. After the attack, Chief Minister Yogi Adityanath actively monitoring the situation, chairing back-to-back meetings with senior officials. He has ordered 3-member Judicial Commission probe in the matter, taking regular updates.
A massive political war has erupted over the murder, opposition slamming Yogi Adityanath Sarkar over the law and order status. AIMIM chief Asad Owaisi claimed that the two were shot dead because they were from the Muslim community. BJP has hit back over the claim. All right, we'll get to other top stories as well. This one coming in from Karnataka after a very short break. Former Chief Minister and from the BJP leader Jagdish Shettar, we are being told, will quit the BJP after he was denied a ticket for elections. It's the BJP ticket Karnataka exploding. Jagdish Shettar quits the BJP. You are watching India Today. As state of war Karnataka begins, a reminder, who is the true number one? The 5 big voices speak to us before all the others, from Chief Minister Bommai to Chief Challenger Siddaramaiah, from old warhorse Yadurappa to muscleman DK Shivakumar and Kingmaker Kumaraswamy. When it's Karnataka, there's no competition. India's #1 election channel. Piaggio has been in India for 14 years, and is a fantastic country, beautiful country, and also one of the biggest area of the world for our business, for the 2-wheelers and the 3-wheelers. So today I had a conversation with Minister Piyush Goyal, and we have said that Piaggio will invest for next future in India, in mobility, in e-mobility for 3 and 2-wheelers with our brands. And so we are very happy to say also today that India is strategic for us. Good to know now. And also the electric vehicle policy that the government is so keen on. How's Piaggio collaborating on that note? You do have 2 and 3-wheelers, if I'm not wrong, working around in that area. But we have a lot of technical center, engineer center world, and so Piaggio is ready. We had also vehicles already on the market, so we are ready for this transaction, and we have to follow what is happening, and we have to anticipate the trends. What is your expansion plans in terms of the product pipeline in India? Are there any new launches expected in the coming months? It's too early to say time. We are ready. We have already product. Today is a day where we met the government. We met Shri Piyush Goyal, and to say that India is important for the future of Piaggio. Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com. Fine detail as to what Mercedes has done when it comes to fine-tuning the vehicle for Indian roads.
Well, firstly, starting from the E-Class, if you see, we have been able to have a long wheelbase E-Class because we have customers who drive themselves on weekends, but on weekdays they have drivers for parking and others. So we said that for India, the long wheelbase is a great solution. So E-Class, the GLE, for example, comes on a longer wheelbase platform. So that's one customization. The second thing for India is also the entire thing about connected cars. So we were the first to introduce connected cars with embedded SIM. The app provides a lot of usage, and daily usages. For example, you can have you can ring fence the way the car goes in. So if your kid is getting dropped to school, if it goes beyond the perimeter, you get an alert to pre-climate control. It's such hot weather, you want to get the car ready before you get in. So these are a couple of topics there. The third pillar is localization. So we were the first again to localize an electric car in India with the EQS, and we have been continuously investing on localizing also cars for India. Right. Also, thirdly, I'd like to ask you, when it comes to the pricing for this vehicle, about 3.3 crores, it's a bit premium, of course, what the customer gets. Tell us the deciding factor of the pricing as far as this vehicle goes. So frankly, this is a CBU, so the taxes are for sure high, and therefore that reflects in the pricing. But for us, it's beyond price because we are also offering, for example, every customer who books now in this quarter will get a delivery from Lewis Hamilton. Now, this is something a money can't buy experience. And so we are focusing more on some of those aspects. The growth for 2023, how are you witnessing that and the demand, especially you mentioned the top end is in the real game changer for Mercedes right now. How's the demand otherwise for the whole year looking like? No, I think with quarter one, we had 17% growth in this first quarter. So we still maintain our double-digit growth projections for the year. And if that happens, this should be another best ever year for us. So the team is working on it. On the other side, we have headwinds. We have headwinds with Forex because the rupee not being as strong. We had to take the second price increase in April. For that, we have got some financial products now for which the customer can really, because of the high residual values, buy the car at a much lower EMI. So we are trying to come up with some solutions. But on the other hand, we also see geopolitical situations changing. Maybe there is some headwinds there. But when I look at the order bank position, as of 1st of April, we have more than 4,000 customers waiting for our cars. Many of our cars are, the top-end vehicles are waiting for 6 to 16 months. So that gives us confidence that the growth momentum should continue. You are watching India Today. After Jagdish Shettar quit the Bharatiya Janata Party, the Congress party is now trying to woo him and has reached out to Jagdish Shettar, who was a former chief minister, has been a veteran BJP leader. We are being told that the Congress has reached out to him. M.B. Patil, Sivaramaya, D.K. Shivkumar and more are in touch with Shettar. This is after he was denied a ticket for upcoming Karnataka elections. Jagdish Shettar has now decided to quit the BJP and is likely already being spoken to with from the Congress party. We are being told that, and the statement has come from incumbent Chief Minister Basavaraj Bommai as well, who said, we offered Shettar a higher position. B.S. Yediyurappa has said that people of Karnataka will never forgive Shettar. That is precisely that, will not forgive him for jumping ship and maybe can take an offer of the Congress party. Remember, Jagdish Shettar, even though low profile these days, has been a veteran BJP leader for the state of Karnataka, has been a former chief minister as well, and has said that there was no reason that he shouldn't be contesting elections this time. But BJP, according to our sources, did not give him the ticket this time because one, they realized he's not going to be a chief minister. He was also not very keen to become a chief minister, and that there were about 52 new young faces who had to be given an opportunity by the BJP this time. And because of the 52 new faces, many of the old guard were asked to at least hang in their boots. But Jagdish Shettar not yet willing to do it. ನಾವು ಕೂಡ ರಾತ್ರಿ ಹೋಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಎರಡನೇದು ಅವ್ರು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ, ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಅಥವಾ ಹೊರಗಡೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ಅವರು
ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನ ರಾಜೀನಾಮೆ BJP ರಾಜೀನಾಮೆ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ನೋವು ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರದ ಸಚಿವರಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೂ ಸಹ ಹಠ ಮಾಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರುವಂಥದ್ದು ಅಕ್ಷಮ್ಯ ಅಪರಾಧ. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾಡಿನ ಜನ ಇದನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾವೇನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಈ ರೀತಿಯ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದಿರುವಂಥದ್ದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ದ್ರೋಹ. ಇದನ್ನು ಯಾರು ಕ್ಷಮಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. So the moment when former Chief Minister Jagdish Shettar decided to tender his resignation from the Bharatiya Janata Party, here's what he said. I resigned to the MLA. Now I wanted only MLA seat for the Hubli Dharwad Central. I am 67. So many elderly persons are there. 60, 72, 73, 74, 76. Why they are not replaced? Why not replaced? So after Savade, is Jagdish Shettar next, or perhaps the party will be able to stop him just in time? I'm heading into a very short break, but don't go anywhere. Stay tuned, because coming up at 2 p.m, our big story. Gangster turned Neta Atiq Ahmed shot dead with his brother Ashraf after 3 assailants on camera on live television shot them dead with 18 to 20 rounds of fire. All 3 accused have criminal history, wanted to become the big mafia in UP. What happens next? That and more after a very short break. You are watching India Today. May 2022. A normal day that changed to an abnormal day. She was cut into 35 pieces. उसने multiple weapons का use किया. Up against a psychotic butcher and a web of savagery. Now her father fights to put pieces of justice together. This is the story of Shraddha and her father. जब तक इसको फांसी नहीं होगी तब तक मैं इसका अंतिम संस्कार भी नहीं करूंगा. My daughter Shraddha, coming soon.
watching India Today. Very good afternoon, viewers, and thank you for being with us here on India Today. I'm Chaiti Narula, bringing you all the top stories. Let's begin with the headlines first this afternoon. Don Atiq and his brother Ashraf shot dead in chilling execution. Atiq's killers caught chanting Jai Shri Ram on camera. In a big confession to UP police, shooters confess to mafia ambition, say wanted infamy and notoriety. All the shooters have criminal history. CBI heat on Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal in the Liquorgate scam. Aam Aadmi Party workers stage a massive protest in capital. BJP calls Kejriwal kingpin of the scam. BJP ticket Nataka explodes. Former Chief Minister Jagdish Uttar quits BJP after denied ticket for polls. Bomai says tried every bit to pacify him. The Congress reaches out to him. Congress gears up for Karnataka battle. After multiple delays, Rahul Gandhi in Kolar today. Congress Chief Kharge to join Rahul Gandhi's rally. Breaking news just coming in. Ajit Pawar denies rumors of him joining the Bharatiya Janata Party. Ajit Pawar says reports of me meeting Amit Shah are false. Listen to what Ajit Pawar has to say. दादा एक चर्चा चल रही है कि आप बीजेपी से संपर्क में हैं. मी सकाळी माझ्या मीडियाला सगळ्या गोष्टी सांगितलेल्या आहेत. दादा आप संपर्क में है बीजेपी ज्वाइन करेंगे ऐसी चर्चा. अरे मी सकाळी मीडियाशी बोललो सांगितलं ना पुन्हा पुन्हा काय तेच ते. शिक्षण महामंडळ. Dipesh Tripathi is joining us from Mumbai for the very latest. Dipesh, what are these rumors rife with Ajit Pawar joining BJP? Of course, he's denied, but what are you picking up from sources on what the reality could probably be? Yes, Ajit Pawar is considered as the weakest link in the Mahavikas Aghadi, as we have seen in the past that Ajit Pawar had joined hands with BJP and formed the 72 hours government with BJP when Mahavikas Aghadi government was formed prior to that. And right now, once again, there has been talks has been going on in the Maharashtra politics that Ajit Pawar is not reachable and he is unhappy with the internal politics, internal Mahavikas Aghadi. So he might be again do the same thing with BJP like the way he has done in the past. So once again, the talks has been going on right now in the Maharashtra, but Ajit Pawar is clearly denying all these things that whether he is going to join BJP or not. And right now he said that he will not going to join the BJP. But as we came to know from our sources that soon we can see some big changes in the Maharashtra politics in coming days right now. Over the studio. All right, Dipesh, thanks for getting us up to speed with those developments and what your sources are also saying. Now moving on to the other story that is defining our news agenda. This story is defining our news agenda. Gangster Atiq Ahmed and brother Ashraf were shot dead in Prayagraj on Saturday. The killing was caught live on television as Atiq and Ashraf were speaking to India Today reporters. There are sensational visuals on your screens. Viewers reveal how the whole incident unfolded inside Prayagraj's MLN Medical College premises where they were being taken for medical examination by the cops. I just want to say viewer discretion is advised on these visuals of Atiq getting shot. Sounds of indiscriminate fire were heard as Atiq and Ashraf collapsed on the ground.
Chief Minister Yogi Adityanath is holding key meetings with senior officials now. The Chief Minister has also ordered 3-member Judicial Commission probe into this matter, taking regular updates. Just to tell our viewers, Section 144 has also been imposed. बिल्कुल 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 ये सवाल भी मैं ले लेता हूं। ये जो सनी सिंह जो तीसरा हमलावर है उसका सुंदर भाटी गैंग से कनेक्शन सामने आया है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये बड़े गैंग वॉर से जुड़ता है। अगर सुंदर भाटी का ये आदमी बन करके काम कर रहा था और इसने लोगों को मोबिलाइज किया, तो ये कनेक्शन कहाँ निकल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए और अंजना, हमने आप ही को बताया था जब आप बुलेटिन कर रही थी कि जो सनी सिंह है हमीरपुर का रहने वाला है, एक ये बड़े गैंग से कांटेक्ट में है। सुंदर भाटी ही नहीं, सुंदर भाटी के गैंग से और भी गैंग एसोसिएट हैं। तो अभी क्लियर पिक्चर कि कौन सा बड़ा गैंग है इसके पीछे ये कह पाना काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि आप ये याद रखिए सोफिस्टिकेटेड वेपन्स है, टर्की मेड वेपन्स है जिगाना, जो इंडिया में प्रोहिबिटेड है। क्रॉस बॉर्डर से उसको स्मगलर मंगाते हैं, 6 से 7 लाख की कीमत है। आप इनका अगर बैकग्राउंड देखेंगे अभिषेक, तो इतना मजबूत बैकग्राउंड नहीं है कि 6 से 7 लाख की पिस्टल ये खरीद पाए। तो प्रॉपर प्लानिंग है, पहले पिस्टल आता है, डमी कैमरा आता है, डमी माइक आता है और प्रॉपर फिल्मी स्टाइल में प्लॉट तैयार किया जाता है, रेकी करके वारदात को अंजाम दिया जाता है। तो ये कोई सामान्य किलिंग नहीं है, जरूर कोई ना कोई गैंग सामान्य क्लीनिंग नहीं है। लेकिन मैं जरा कैमरामैन को कहूंगा दिखाएं, यहाँ पर बहुत भीड़ होती जा रही है अंजना। ये जो पोस्टमार्टम रूम के बाहर की जो तस्वीरें हैं, मुझे लगता है कि इसकी डेड बॉडी को देखने वालों की भीड़ यहाँ काफ़ी ज़्यादा हो गई है। समर्थ हमारे साथ है। समर्थ, आप देख रहे थे क्या इसके भीतर चल रहा है? क्योंकि कहा जा रहा है बॉडी आई है शायद एक्सरे के बाद। बताया जा रहा है कैल्विन में बॉडी गई है, जहां पर वहां पर एक्सरे होगा, उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए यहां पर आएगी बॉडी। पर जैसा कि आप हुजूम की बात कर रहे हैं और कैमरामैन संदीप जिस तरह से दिखा रहे हैं, हुजूम कितना यहां पर बढ़ रहा है, उनको अंदाजा है कि आज यहां पर पोस्टमार्टम होना है। अब सवाल ये होगा सबसे बड़ा कि असद का जब जनाजा निकला था तब तो पुलिस ने रोक दिया था कि जो खाली परिवारजन है वही उनको ही परमिशन मिलेगी। इस बार अतीक अहमद और असद का जो अशरफ है उनका जब जनाजा होगा तब पुलिस क्या करेगी, क्योंकि वो लेकिन अभी जो खबर मिल रही है उसका असर ये है कि जो चकिया इलाके हैं अंजना, वहाँ पर लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। वहाँ आरएएफ ने बहुत रैपिड एक्शन फोर्स और पीएसी के जवान तैनात हैं और उस इलाके के गलियों में भी लोगों की चहलकदमी बहुत ही कम है। आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, छावनी में तब्दील कर दिया गया उस पूरे इलाके को, अभी की बता रहा हूँ, और जोन वाइज डिवाइड किया गया उस चकिया इलाके को। ज्वाइंट सीपी रैंक के जो ऑफिसर हैं वो सुबह से वहाँ मौजूद है। शहरी के वक्त से, चूंकि रमजान चल रहा है, लोग रोजा रखते हैं, और जब ये पूरी वारदात हुई उसके बाद से ही अलर्ट है। अब जो तस्वीर है, जरा एक बार ये तस्वीर दिखाइएगा। महिलाएं, अतीक अहमद से लेना देना लोगों का नहीं है, लेकिन जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे, कौतूहल लोग जानना चाहते हैं अतीक और अशरफ का जिस तरह का खौफ था, तो खौफ का ये भी आप इससे अंदाजा लगाइए कि एक वक्त ये भी था कि साल 2012 का, जिसका मैं जिक्र भी आपसे कर रहा था, साल 2012 में जब ये जेल में रहकर विधानसभा का इलेक्शन लड़ना चाह रहा था, बिल की सुनवाई के लिए इसने एप्लीकेशन फाइल किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के 10 जज ने बिल पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था, तब 11वें जज ने सुनवाई की थी। तो ये अतीक का खौफ न्यायपालिका में भी था, सिर्फ लोगों में नहीं, न्यायपालिका में था। और शायद यही वजह है कि कौतूहल है लोगों में कि क्या कुछ चल रहा है। अतीक या अशरफ की हत्या हुई उसको लेकर किसी से कोई उनका लेना देना नहीं है, लेकिन जो सुन रहा है प्रयागराज में कौतूहल के लिए आ रहा है। बिल्कुल, और मैं देख रहा हूँ कि जैसे ही कोई हरकत होती है लोगों के कैमरे निकल जा रहे हैं, लोग कोई ना कोई तस्वीर अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहते हैं, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ से उनका शव निकाला जाएगा और उसके बाद चकिया इलाके में ले जाया जाएगा। समर्थ, क्या लग रहा है, रात हो जाएगी, शाम हो जाएगी? क्योंकि उस इलाके में एक तरीके से अघोषित कर्फ्यू जैसा माहौल है, लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे और बहुत ज़्यादा तैयारी बेहद है। और जैसा कि अरविंद ओझा बता रहे थे कि वहाँ पर कर्फ्यू जैसा माहौल इस वक्त है। आरएएफ की टुकड़ियाँ अभी से वहाँ पहुँच गई हैं। जिस वक्त असद का क्रिमेशन था उस वक्त भी हम वहाँ मौजूद थे, तो आरएएफ की टुकड़ियाँ गश्त कर रही थी। अब क्योंकि सीएम योगी ने भी कल ऑर्डर कर दिया है, कल जब बैठक 5 KD मिली, उन्होंने यही इंस्ट्रक्शन दिया कि जो सेंसिटिव इलाके हैं वहाँ पर आपको गश्त बढ़ानी है। तो पुलिस जब गश्त कर रही है तो बहुत बात है कि अपने आप जो वहाँ के लोग हैं वो निकलना कम कर रहे हैं। पर यह बात आपने सही कही, अगर क्योंकि बिस्तरा प्रिजर्व होना है, समय लगना है, पोस्टमार्टम इतनी जल्दी नहीं होगा, बिस्तरा प्रिजर्व होगा, टाइम लग सकता है। तो क्या ऐसा हो सकता है, नंबर 1 एक फैक्टर कि कल सुबह करें,
क्रिमेशन या फिर देर रात का, क्योंकि देर रात में मुझे लगता है पुलिस के पास ज़्यादा चैलेंज होगा अगर वहाँ पर देर रात होती है। इनकी बात से सहमत हूँ इसलिए भी कि देखिए अगर झांसी की बात की जाए तो पोस्टमार्टम के 24 घंटे बाद जो रिलेटिव है वो पहुंचते हैं झांसी और 24 घंटे बाद बॉडी दी जाती है और 1:30 बजे रात को बॉडी झांसी से निकलती है और नेक्स्ट डे सुबह आती है। यानी इनकाउंटर के 36 घंटे बाद जो बॉडी है वो परिवार वालों को। तो एक बात था कि अगले दिन जुमे की नमाज थी, प्रशासन चाहता नहीं था कि जुमे की नमाज में उन्हें लाया जाए। क्या बॉडी यहीं सौंपी जाएगी परिवार को या कहीं और दिया जाएगा? क्योंकि जो जहाँ तक मुझे लगता है इसमें समर्थ भी बताएंगे। आपको क्या लगता है? नहीं, मेरा ये आकलन है कि जहाँ पर हम लोग गए थे जिस कब्रिस्तान में बॉडी जानी है, रात में वहाँ कोई लाइट नहीं है, उस पूरे एरिया में कोई बड़ी फ्लड लाइट है नहीं। तो ऐसे में जो फ्लड लाइट नहीं है तो रात में बड़ा चैलेंज हो जाएगा पुलिस के लिए। अगर रात में जाते हैं, मान लीजिए कोई वहाँ से निकल के कुछ अप्रिय घटना करने की कोशिश करता है तो पुलिस के लिए रात चैलेंज होगी। मेरा जो अनुमान है रात के बजाय अगर रात होती है, अंधेरा होता है पोस्टमार्टम होते होते, तो पुलिस प्रेफर करेगी भले अर्ली मॉर्निंग करे पर उजाले के बाद करे, क्योंकि कब्रिस्तान का जो एरिया आप भी गए हैं अंदर पूरा एक मैदान है, काफ़ी अंदर। आप जब 500 मीटर पैदल चल के जाएंगे वहां से कब्रिस्तान शुरू हो रहा है और कोई फ्लड लाइट वहां पर नहीं है, तो वो बड़ा चैलेंज होगा कि लाइट्स लेकर वहां पर जाना। मुझे लगता है पुलिस सीरियस नहीं लेगी। एक और सवाल है जिस तरीके से अंधाधुंध गोलियां मारी गई, शुरुआत में तो लगता है 2 गोलियों में ही दोनों ढेर हो गए थे, लेकिन 18 राउंड गोलियां चली हैं। तो जब उनकी बॉडी को ले जाया गया है और एक्सरे कराया जाएगा तो गोलियां ही गोलियां निकलेंगी फिर तो? नहीं, वो तो डिपेंड करता है। देखिए जो फायरिंग जिस वक्त जहाँ पर समर्थ खड़े थे, अशरफ पर ज़्यादा फायरिंग की थी। जो शूटर है साइड पर पड़ा हुआ था उस तरफ फायरिंग की थी। अतीक के कनपट्टी पर पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी गई थी। शायद इस वजह से जैसे ही गोली लगी, आपने देखा होगा तस्वीरों में, वो धड़ाम से गिर गए क्योंकि एकदम सटा कर गोली मारी गई थी। ये एक्सरे में ये क्लियर होगा कि कितनी गोली शरीर में फंसी थी। बाकी वहाँ पर जो एविडेंस अगर मैंने देखा होगा तो व्हाइट सर्किल भी बनाया था पुलिस ने, वहाँ से भी कुछ खोखे रिकवर किए थे। बिल्कुल पैर पर भी थी, जितना मैं वहाँ पर देख पाया। पैर पर भी। अंजना देखिए ये All right, as you can see, our reporters are getting you all the details that we know so far as the burial is concerned, and we are the first channel that broke that story inches away from point blank killing. Our reporters were right there getting you up to speed. Now, what happens next as far as the postmortem is concerned, the autopsy is concerned, what they're trying to ascertain in terms of when the burial should happen, whether it should happen in the night, whether it should happen in the morning, our reporters were getting you those details. In fact, let's get you a sequence, and viewer discretion is advised. थोड़ा कहेंगे आप, कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहें भैया, किस बारे में कहें सर? कुछ कहेंगे किस बारे में क्या कहें? आज आपको जनाजा हुआ था, जो आप लोग वहाँ गए थे कि नहीं? आज जनाजे में आप गए थे कि नहीं? क्या कहना आप? कुछ कहना? मेन बात यह है कि गुड्डू मुसलमान मेरा मोबाइल। आज जनाजे में आप लोग गए थे कि नहीं? क्या कहना आप? कुछ कहना? मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम आज जनाजे में आप लोग गए थे कि नहीं? क्या कहना आप? कुछ कहना? मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम And as you can see, the India Today cameras were rolling when Atiq and his brother were shot dead. You saw the full sequence of how Atiq was killed as well. India Today's Samarth Srivastava was one of the very few reporters who has up close and personal, was right there, who witnessed that murder as it took place. And here is a report where he shares a brief account of what all that happened last night. ये है कि गुड्डू मुस्लिम। अशरफ, आप लोग कुछ कहेंगे? कहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे? थोड़ा कुछ कहेंगे आप? कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहें भैया, किस बारे में कहें? सर कुछ कहेंगे? किस बारे में क्या कहें? आज आपको जनाजा हुआ था, जो आप लोग वहाँ गए थे कि नहीं? आज जनाजे में आप लोग गए थे कि नहीं? क्या कहना आप? कुछ कहना? मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम
पॉइंट था, आपने कैसे डिसाइड किया? नीरज, इंडिया टुडे से पूजा का सवाल आपसे है कि उस वक्त आपने ये डिसाइड कैसे किया कि आपको वहाँ से निकलना नहीं है बल्कि वहाँ रहकर उन पिक्चर्स को, उन तस्वीरों को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करना? नहीं, हालांकि वो स्थिति बहुत वैसी थी, लेकिन इतने साल हो गए काम करते हुए, तो लगता है कि जो काम हम कर रहे हैं उसके प्रति एक डेडिकेशन भी होता है कि वो चीज़ें ना हो, और एक जो हम काम कर रहे हैं एज अ प्रोफेशनल वो एक जुनून होता है कि हम कहीं कुछ हमसे छूटे ना। जो काम जब हम स्पॉट पे हैं, अगर हम स्पॉट पे हैं तो हम जो बेहतर कर सकते हैं वो करना चाहिए। तो उस समय जो सबकॉन्शियस माइंड में जो था कि मुझे अपना बेस्ट करना है, तो ऐसा कोई बहुत, हालांकि स्थिति आप भी जान रहे हैं, सभी तितिर बितिर थे, लेकिन एज अ प्रोफेशनल मुझे ये लगा कि मुझे यहाँ डटे रहना चाहिए और मुझे हर वो शॉट कवर करना चाहिए जो मैं कवर कर सकता हूँ। डर नहीं लगा? हाँ, डर जैसी कोई चीज़ थी नहीं, और वो टाइम भी इतना शॉर्ट था कि इससे पहले कि आप कुछ सोचते वो एंड हुआ। और क्या बोलते हैं आप, मैं क्या बोल सकता हूँ, आपके सामने ही सरेंडर, हमारे सामने ही सरेंडर हो गया, तो लगा तुरंत चीज़ें कंट्रोल में आ गई। कंट्रोल में नहीं आ गई, जिस तरह से तीनों तरफ से फायरिंग चल रही थी, आप भी देख रहे थे, जिस तरह से तीनों तरफ से फायरिंग चल रही थी, तो वो गोलियां कहीं भी जा सकती थी। पीछे से चली, मैं अशरफ के बगल में था, आप उधर खड़े थे, पीछे से एक बंदा आया। बिल्कुल वो पीछे से गोली चली, और जिस पोजीशन में जैसे हम यहाँ खड़े हुए थे तो पीछे से फायर हुआ, और पीछे से फायर होकर वहीं से फायर होना शुरू हुआ। तो वो फायर हमारी तरफ था, मतलब मान लीजिए कि वो यहाँ पे पड़ा है, लेकिन फायर ऐसे हो रहा था, तो वो ऊपर भी हो सकता था, नीचे भी हो सकता था। तो 3-4 कदम पीछे लिया मैंने, अपनी पोजीशनिंग करी, कैमरे को जो हम अपने उसमें जो बेहतर कर सकते हैं वाइड एंगल किया, उसको खोला, और जैसे जैसे मुझे लगा कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए, उसके बाद मैं All right, so India Today's Samad Srivastava was one of the few reporters who was there. He witnessed this murder as it took place, and he went back to that crime scene this morning. He also is going to now show our viewers how it all happened, because he was the one who witnessed this murder firsthand. Here's a look. It was 10:30 p.m. yesterday when 3 jeeps of Prayagraj police reached at this particular road. From that point, where you will be seeing a barricade, if my cameraman Neeraj would zoom, from that area 3 police jeeps came in and stopped right here at this particular road with a hospital right there with the name Motilal Nehru Mandaliya Chikitsalaya Prayagraj, which is commonly called Calvin Prayagraj Hospital by the people of Prayagraj. And once the jeep was stopped here, Atiq Ahmed and Ashraf. Number one, Ashraf came out first from this jeep, and then Ashraf, being a younger brother, gave support to Atiq, his hand, and then Atiq came in along with Ashraf. Then, moving from this point, come along with us. This was the point when Ashraf this side and Atiq to his right side. They started moving step by step inside this particular hospital where I am currently moving inside. So once after reaching at this particular point, India Today TV asked Ashraf and Asad. India Today TV confronted Asad and Ashraf right over there and questioned about his unavailability in the final rites of his son Asad. To which Atiq replied, "Nahi jane diya to nahi gaye." This was not the end. 2 seconds after Atiq's statement, Ashraf started saying, taking the name of Guddu Muslim, and suddenly a gunfire happened. A shooter came from behind and smashed a bullet inside the head of Atiq Ahmed right over there, and then 2 other shooters came from this point of this area and they started bullet fire, 17 rounds of fire as per the police, and Ashraf and Atiq Ahmed dead right there. India Today TV cameraman Neeraj Kumar was right there
along with me, Samar Srivastav, it was around 10:40 p.m. right there. It felt like a cracker bursting on a festival of Diwali, but seconds after we realized it is no cracker, it is the bullet gunfire, firing. We had no idea at that moment that it is a targeted killing, that they are only targeting those two gangsters. Well, Samad getting us those chilling details of what happened last night. Now, gangster-turned-politician Atiq Ahmed and his brother Ashraf were killed in Prayagraj. He was shot point blank, as my colleague Samad, who witnessed this firsthand, was just explaining to you. The firing took place near MLN Medical College premises, where they were being taken for a medical examination in Prayagraj. Let's now take a look at this detailed report. 15th April, 10:35 p.m. Dawn-turned Neta Atiq Ahmed and his brother Ashraf, both accused in the Umesh Pal murder case, were being taken for a medical test. India Today's crew on ground, reporter Samarth Srivastav and video journalist Neeraj Kumar approached them for a soundbite. Ashraf, आप लोग कुछ कहेंगे? Atiq starts taking sharpshooter Ghulam's name, who was killed in an encounter just 48 hours ago along with his son Asad. This is when shots begin to fly. 3 attackers fire indiscriminately. Atiq is shot point blank as the shooters chant Jai Shri Ram. हम लोग करीब आधे घंटे से वेट कर रहे थे कि अतीक अहमद आएगा और हम लोग उसकी बाइट के लिए इंतजार कर रहे थे कि एक शब्द वो बोलेगा और जैसे शुरू करना है यहीं से शुरू करते हैं। बिल्कुल यहाँ से जैसे ही आप बात करना शुरू करते हैं और हम लोग पीछे पीछे जाते हैं और जैसे ही बोलना शुरू करता है, जैसे ही अतीक अहमद और असद वो उसका भाई बोलना शुरू करता है और एकदम से तड़तड़ाहट की आवाज आती है और ऐसे लगता है कि जैसे पटाखे दगने लगे। The shooters then put their arms up and are apprehended. They have what looks like media cards around their necks and carried a dummy camera and microphone. FSL की टीम है वो यहाँ पर आई हुई है और जो अटैकर्स थे उनके वेपन्स प्रदीप गुप्ता वो आपको दिखाएंगे। जो वेपन्स है उसकी तस्वीर वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट ले रहे हैं और बाकायदा 3 बाइक से जो अक्यूज है वो आए थे। अभी तक ये जानकारी मिली है, ये क्लियर है कि ये जो तीनों अटैकर्स थे वो मीडिया कर्मी बनकर के आए हैं। लीगल रिक्वायरमेंट के तहत में इनको मेडिकल के लिए लाया गया था और मीडिया के लोग पत्रकार जो साथ में थे और बाइट ले रहे थे। इसी में प्राथमिक जानकारी के अनुसार 3 लोग मीडिया कर्मी बन के आए और वो मीडिया कर्मी बन के उन्होंने वहाँ पे बाइट लेने का प्रयास किया। उसी के अंतर्गत उन्होंने ये इंसिडेंट हुआ है जिसमें उन्होंने फायर किया है। Within minutes, the Don and his brother had fallen to the ground, dead and lying in a pool of blood. The 3 attackers who had been caught were quickly whisked away. Atiq Ahmed was shot dead 2 days after his son Asad was killed in an encounter in Jhansi, and just hours after his funeral, which the Don could not attend. Both lived by the bullet and died by the bullet. With Samarth Srivastav and Arvind Ojha in Prayagraj, Bureau Report, India Today. Samarth Srivastav now joins us live. Samarth, you were right there, who witnessed this particular chilling murder with your camera person. If you can tell us now in terms of what next as far as Atiq and Ashraf are concerned, what we know about the accused, what details are emerging that the viewers need to know at this point of time, and what the police are saying at the moment. Well, as per the police, an FIR has already been registered by the Prayagraj police and 3 persons have been named in the FIR. And as per the FIR, they wanted to become a bigger mafia than Atiq Ahmed, and that's why they plotted this particular attack, the entire shooting. One is from Hamirpur, one is from Lalitpur, so one is from Banda.
We spoke to the families of those who are accused in this particular case. Families have denied, have said that they did not come to home much, and also as per the police they were history cheaters. They have already committed such crimes before, so they were wanted in some ways. So that's a major thing, and it was not a thing that they were not professional. They had idea about the shot. They shot Atiq Ahmed from point blank, also Ashraf, because when we were there yesterday night, it was all of a sudden we were looking for the bite of Atiq Ahmed on Asad's cremation, and just when India Today TV asked the question, suddenly gunfire erupted, and in a moment of 40 seconds I saw Atiq and Ashraf lying in a pool of blood on ground or in the medical college of Prayagraj. Such was the horrific incident that India Today TV reported from the ground. Our cameraman Neeraj Kumar showed the visuals from ground zero, where just after shooting, the 3 attackers surrendered. Right thereafter, the cops of Uttar Pradesh police came in and stopped the attackers and took them via police jeep to the police line. So that was the update. And also, as per the FIR, they said that one of the attackers also suffered bullet injury, as per the FIR registered by the Uttar Pradesh police. So it's going to be very crucial. But now the postmortem thing is on, and we may expect some more time for the postmortem, because viscera preserve and many other factors are still left for this, and it may be expected that the cremation might take place in the night. But it is going to be worth seeing whether police would take risk of cremating the body of Ashraf and Asad in the same cremation ground where Asad was cremated in night hours, in the wee hours, or the police will wait for early morning and will do this in the morning. And you were telling us the reasons why the police would take this decision as well. Stay on with us right there, Samad. Don't go anywhere. All the 3 shooters who killed Atiq and Ashraf have been identified. The killers have been identified as Lavlesh Tiwari, who hails from UP's Banda, Sunny, who is a resident of UP's Hamirpur, and Arun Maurya from Kasganj. They surrendered just after killing Atiq and his brother. Sources have told India Today that the shooters in the initial interrogation confess that they wanted to become big mafia, and that is why they killed Atiq. All 3 of them have criminal history. It is now evident that they were criminals from the way they carried out that particular attack. They shot Atiq dead from a point-blank range. So how did they carry out this attack? Well, they came on a bike, they posed as journalists, they carried fake cameras with them, mingled with the media teams also. Just when Atiq and Ashraf were giving a sound bite, they shot him and his brother, fired 18 rounds at them and surrendered chanting Jai Shri Ram slogans. The pistol used by them was Turkey-made Zagana pistol that cost 6 to 7 lakhs. अशरफ, आप लोग कुछ कहेंगे? कहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे? कुछ कहेंगे आप? कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहें भैया, किस बारे में कहें? सर कुछ कहेंगे? किस बारे में क्या कहें? कुछ कहेंगे? आज आपको जनाजा हुआ था, कुछ आप लोग वहाँ गए थे कि नहीं? आज जनाजे में आप लोग गए थे कि नहीं? क्या कहना आप? कुछ कहना? मेन बात ये है कि गुड्डू मुसलिम आपको कुछ जानकारी हुई है? Listen in now to the families of the shooters and what they have to say about this particular attack. आपको कुछ जानकारी हुई है कि कल एक शूट आउट हुआ है, उसमें लॉलेस का नाम बताया जा रहा है? हाँ, टीवी में देखा। कैसा है ये लॉलेस और किस तरह से ये कैसे वहां पहुंच गया, कुछ जानकारी है आपको? हमें कोई जानकारी नहीं है ना, हम लोगों से इससे कोई मतलब नहीं। ये क्या घर में नहीं रहता था? ना। अच्छा, कब से प्रयागराज में रह रहा है ये? हमें नहीं मालूम। अच्छा, यहाँ नहीं, घर में आखिरी बार कब आया था? ये 7-8 रोज 5-6 रोज पहले था। हमसे घर से किसी कोई चीज से मतलब गज नहीं। आता था अपना नहा धो के, जब भी 4-6 रोज में आता था नहा धो के अपना निकल जाता था। कोई ना किसी चीज से मतलब था। अच्छा, प्रयागराज ये आता जाता था, ये आपको बताता था कभी? ना, कभी हमसे बातचीत नहीं हुई। पूरा मोहल्ला बता सकता है, पूरा घर बता सकता है, हर आदमी के हमसे लोगों से कोई मतलब गज नहीं थे। सालों से बोलचाल बंद है। जब उस लड़की की थप्पड़ मारा था, उसका एक केस चल रहा है। कौन सा केस?
अरे एक बिटिया को थप्पड़ मार दिया था इस चौराहे में, उसका मुकदमा चल रहा है। फिर क्या हुआ था? उसमें जेल गया था? हाँ उसमें जेल गया था। तो जमानत से कब छूट के आया था? अरे हमको याद नहीं, साल 1.5 साल पहले की बात है। अच्छा, अभी ये 5-6 दिन पहले यहाँ घर से निकला है जी। क्या करता है वैसे, क्या काम है इसका? कुछ नहीं, काम में नशा करता है, नशेड़ी आदमी, इसीलिए मेरे सब लोगों ने त्याग दिया घर बहुत पहले से। अच्छा, कितने भाई बहन हैं ये? 4 हैं। बहन नहीं है। ये सबसे बड़ा है? नहीं, तीसरे नंबर का है। कब थोड़ा अच्छा ये बताइए कि अभी आपको जो ये जानकारी कैसे हुई कि कल ये भी साथ निर्देश होगा? टीवी देख रहे थे अभी। कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या कहेंगे हम कि जैसे उसने जो वारदात को अंजाम दिया है? क्या कहेंगे उसने, कहने लायक क्या रहे, शब्द है कि हमारे पास कुछ। पढ़ाई वढ़ाई किया था इसने? हाँ इंटर किया। इंटर के बाद छोड़ दिया? हाँ बीए कर रहा था, बीए में फेल हो गया। इस समय कुछ नहीं करता था? कुछ नहीं। क्या किसी लोगों के साथ इनकी संगत थी जो ऐसे लोग और आते रहे उनके साथ? लड़का है का, जब हमसे कोई मतलब है तो हम क्या बताएं कि किससे संगत थी, कौन सा था। ये जो आपके ये भाई है, क्या नाम है उसका? सनी। क्या करता था ये ऐसे घूमता फिरता रहता सर। कुछ मामले भी दर्ज किया उसको? जी सर। कितने लोगों को सर जी? मालूम नहीं है सर। क्या भाई हैं आप लोग? हम 3 भाई थे सर, एक भाई खत्म हो गया मेरा। अच्छा जी। सनी कब से नहीं रहता है यहाँ? ये काफी दिन हो गए सर। सनी अपराधी कैसे बना? अपराधी सर जाके ऐसे ही जाके घूमता फिरता सर, बस फालतू के काम जाके अन्य बन। और क्या पहले क्या किया करता था? कुछ नहीं सर, ऐसे ही। अपराधी कैसे बना? कैसे उसने पहला कौन सा क्राइम किया? कुछ नहीं किया था, हमको नहीं मालूम सर। जाके हम तो अलग जाके रहते हैं ना, हमने जाके उसको जाके बचपन में जाके देखा नहीं है, बस छोटे थे जाके भग गया था बस। और क्या सर? कल अतीक अहमद जो मारा गया उसमें आपके भाई का नाम शामिल, आपको जानकारी है? जी हमको नहीं मालूम सर। Samar Srivastava now joins us. Samar, from these bites that we are getting of the family members of the accused, it is very, very clear, rather the murderers, it's very, very clear that the families had no idea what the kids were really into, their own kin was really into. There is a lot of disappointment that we can hear in the father's voice as well. So at this point, what more do we know about, number one, the motive, who the killers were, what got them to even carry out a murder of this particular crime, what their intentions were in terms of the larger lay of the land? Because see, the very fact that they surrendered after committing the murder, that just means that did they have any, I mean, that raises a big question. Did they have any bigger plans after that? See, most shooters who commit such crimes don't reveal such things in their houses, and that's why they, after entering into this world of crime, they remain self-centric and don't just go into the family. And that's why, be the family of this particular shooter, as they were saying that they had no idea about his thing, and also accepted that he had many cases against him before also, and that's why he is a shooter. So that has been the revelation coming from Banda. So this is a big thing coming in, and this is what Uttar Pradesh police claimed. In the FIR copy, it is also mentioned that these 3 have previously also were involved in various cases. So it's a big thing coming in, but the major part was the thing that where LIU failed at the moment, because intelligence is something that have the information whenever such incident takes place. Because when we were there in the area, when suddenly the jeep of 3 jeeps stopped at the area, Ashraf and Atiq came out and suddenly gunfire erupted. Does LIU had no idea about this particular thing? Or the question will also be raised whether just an inspector rank officer could be responsible for the entire movement of Ashraf and Atiq kind of gangsters in Prayagraj, where there is one locality which is completely dedicated to Atiq Ahmed. So these are some questions which will be raised, though families of these attackers are in a way saying that they have nothing to do with them and the way they did this crime. The family has obviously kept themselves away from this particular crime, but it's going to be worth seeing whether further things will go, because CM Yogi has already formed the 3-member judicial committee for the entire
probe into this particular killing of Atiq Ahmed and Ashraf, because what we saw during while traveling to Sabarmati jail and various other locations from Gujarat to Banda to Chitrakoot, there were not much, there was force, heavy force deployment, but when we covered this Prayagraj area, not much force was there and only few cops of one particular police station were there. All right, Samar, thanks so much for joining us with those very latest details right there. We'll keep going back to him for more on this story. Politics has erupted over Don Atiq's murder. Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav has alleged a complete lawlessness in the state. Akhilesh has further added that such incidents in the presence of UP police have created an environment of fear in the state of Uttar Pradesh. Hitting out at the Yogi government, AIMIM chief Asad Owaisi called this a complete failure of law and order situation under the Yogi Adityanath government. The AIMIM chief will also hold a press conference in Hyderabad today. BSP chief Mayawati, who slammed UP government over poor security arrangement and demanded the Supreme Court should take cognizance of the murder. Accusing the cops of organizing a pre-planned murder of Atiq and his brother Ashraf, TMC MLA Babul Supriyo called for an investigation into this incident. उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार रूल ऑफ लॉ के तहत सरकार को नहीं चला रही है, बल्कि रूल बाय गन को चला रही है। और ये पिछले 2017 से जब से बीजेपी की गवर्नमेंट बनी, ये सिलसिला चल रहा है। कि कभी आपने देखा कि कोई व्यक्ति कचहरी पे पेश होने को आया हो, उसको रात के 10 बजे मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जाए? दोनों व्यक्तियों को हथकड़ी लगी हुई थी। हथकड़ी की डोर किसके हाथ में थी? पुलिस के थी। कहीं भाग भी नहीं सकते, कहीं हाथ नहीं हिला सकते, तो सीधे ये एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, सुनियोजित तरीके से हत्या की गई है। दिन दहाड़े पुलिस के बंदोबस्त में हत्या हुई है तो ये गंभीर बात है ये, लेकिन पुलिस के घेरे में अगर हत्या होती है किसी गुंडे की भी, तो ये लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। अतीक अहमद कोई राज विपक्ष का खोलने वाला था, समाजवादी पार्टी का। अब जांच के दायरे में है कि उसके मौत क्यों और कैसे हुआ है। उसके दो पक्ष हैं, एक पक्ष जो आप उठा रहे हैं, दूसरा पक्ष जांच के बाद पता चलेगा। और मैं Cutting straight across to Rahul Gandhi in Kolar. Listen to what he has to say live. गरीबों के लिए क्या करेगी? ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರ ಬರಲಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಯುವಕರಿಗೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹಾಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಬೀಳ್ತೇನೆ. हिमाचल में चुनाव हुआ, पहले छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में चुनाव हुआ और मुझसे जो हिमाचल प्रदेश के नेता, छत्तीसगढ़ के नेता, इन्होंने मुझसे पूछा कि हमें क्या करना चाहिए। ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಛತ್ತೀಸ್ಗಢಲ್ಲಿ, ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಚುನಾವಣೆ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಹ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು. और मैंने उनसे कहा कि देखिए, आप 2-3 वायदे जनता से कीजिए और जिस दिन आपकी सरकार बने, पहली कैबिनेट मीटिंग में उन वायदों को आप पूरा करके दिखाइए। ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ, ತಾವು ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಿದೆ, ತಾವು 2-3 ಭರವಸೆಗಳನ್ನ
ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜನತೆಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ನಂತರವೇ ಅದನ್ನ ತಕ್ಷಣವೇ ಜಾರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. वायदों में 6 महीने, 1 साल, 2 साल नहीं लगने चाहिए. जो बड़े वायदे हैं उनको पहले ही दिन सरकार को पूरा कर देना चाहिए. ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು 3 ತಿಂಗಳು 6 ತಿಂಗಳು ಆಗಬಾರ್ದು. ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಏನು 3 ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅದನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿದೆ. और यही मैं कर्नाटक के कांग्रेस पार्टी के नेताओं से कहना चाहता हूं. ಅದೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಯಕರಿಗೂ ಸಹ ಅದೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸಹ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. हमने कर्नाटक की जनता से 4 वायदे किए हैं. ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಗೆ 4 ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. गृह ज्योति 200 यूनिट मुफ्त में बिजली हर परिवार को. ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಅದರಲ್ಲಿ 200 ಯೂನಿಟ್ ಉಚಿತವಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ. गृह लक्ष्मी 2000 रुपए हर महीने महिलाओं को. ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕುಟುಂಬದ ಮಹಿಳೆ ಯಜಮಾನಿಗೆ 2000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. अन्नभाग्य 10 केजी चावल हर परिवार के मेंबर को. ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರತಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಸಹ हर महीने ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. हर महीने ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 10 ಕೆಜಿ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. और सबसे जरूरी युवा निधि 3000 रुपए हर महीने कर्नाटक के हर ग्रेजुएट को 2 साल के लिए. ಮತ್ತು ಯುವಕರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಯಾರು ಪದವೀಧರರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ 3000 ರೂಪಾಯಿ ಭತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. और 1500 रुपए हर महीने डिप्लोमा होल्डर्स को. 1500 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಏನು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪದವೀಧರರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 1500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. और इन वायदों को पूरा करने में 6 महीने, 1 साल, 2 साल नहीं लगने चाहिए. ये वायदा पहले दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरे हो जाने चाहिए. ಏನು ಈ ಒಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದು 6 ತಿಂಗಳು 1 ವರ್ಷ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಈ 4 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. और कांग्रेस पार्टी को कर्नाटका की जनता का और देश की जनता को सीधा मैसेज देना चाहिए. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಂದಿದೆ. ಈಗ प्रधानमंत्री को मैसेज देना चाहिए. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರ ಹಣ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು. कि अगर आप हजारों करोड़ रुपए अदानी जी जैसी कंपनियों को दे सकते हो तो हम गरीबों को, महिलाओं को, युवाओं को पैसा दे सकते हैं. ತಾವು ಅದಾನಿ ಅವರಿಗೆ 1000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡುವಾಗ ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಜನತೆಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಬಡವರಿಗೆ, ಯುವಕರಿಗೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. आपने दिल भर के अदानी जी जैसे लोगों की मदद की. हम दिल भर के कर्नाटक के गरीबों की मदद करेंगे, कमजोरों की मदद करेंगे, महिलाओं की, युवाओं की मदद करेंगे. ಯಾವ ರೀತಿ ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತಾವು ಅದಾನಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದವರು ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬಡವರಿಗೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ಯುವಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. आप अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರೇ, ತಾವು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. कर्नाटक में बीजेपी ने क्या काम किया? ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. क्या काम किया? मैं आपसे पूछ रहा हूं. ತಮ್ಮನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. 40%
कमीशन खाया। ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 40% ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ। काम करवाने के लिए बीजेपी की सरकार ने कर्नाटक की जनता, कर्नाटक के युवाओं, कर्नाटक के महिलाओं से पैसा चोरी किया। ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಸರ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಡವರ, ಯುವಕರ, ಮಹಿಳೆಯರ ಹಣವನ್ನ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಬೀಳ್ತಾನೆ। जो भी इन्होंने किया 40% कमीशन इन्होंने लिया। ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಹ ಅದರಲ್ಲಿ 40% ಲಂಚ ಹೊಡೆದಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, ಇದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ। कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी और कहा कि कर्नाटका में 40% कमीशन लिया जा रहा है। ಇದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ PWD ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗೆ ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಸರ್ಕಾರ 40% ಕಮಿಷನ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ। प्रधानमंत्री ने आज तक चिट्ठी का जवाब नहीं दिया। ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಹ ಆ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ। चिट्ठी का जवाब ना देने का मतलब कि प्रधानमंत्री ने यह बात मान ली कि 40% कमीशन कर्नाटका में लिया जाता है। ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅದರ ಅರ್ಥ ತಾವು ಸಹ 40% ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ। स्कैम्स की लिस्ट है। स्कूल एसोसिएशन ने चिट्ठी लिखी, पुलिस सब इंस्पेक्टर स्कैम हुआ, 80 लाख रिश्वत ली गई। ಹಗರಣದ ಸರಮಾಲೆ ಇದೆ। ಟೀಚರ್ಸ್ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ, ಪೊಲೀಸ್ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತುಳುಕ್ತಾ ಇದೆ। असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब स्कैम, इंजीनियर जॉब स्कैम, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅವರ ನೇಮಕಾತಿ ಹಗರಣ ಮತ್ತು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನೇಮಕಾತಿ ಹಗರಣ, ये सब आपने सहा है। ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಇದೆ। और जब मैंने ये बात पार्लियामेंट में रखी, जब मैंने अदानी जी के बारे में प्रधानमंत्री से सवाल पूछे, ನಾನು ಈ ವಿಚಾರವನ್ನ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದಾಗ, ಅದಾನಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ पहले मेरा माइक ऑफ कर दिया गया। ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವ ಮೊದಲೇ ನನ್ನ ಮೈಕ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರು। मैंने क्या पूछा? ನಾನು ಏನ್ ಕೇಳಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ। प्रधानमंत्री जी, आपका अदानी जी से क्या रिश्ता है? ನಾನು ಕೇಳಿದಿಷ್ಟೇ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳೇ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ಅದಾನಿಗೆ ಯಾವ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ। मैंने पार्लियामेंट में एक फोटो दिखाई, जिसमें नरेंद्र मोदी अदानी जी के हवाई जहाज में रिलैक्स करते हुए दिखते हैं। ನಾನು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ, ऐसे बैठे हैं जैसे वो अपने घर में बैठे हैं। ಅದರಲ್ಲಿ ಅದಾನಿ ಅವರು, ಮೋದಿ ಅವರು ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು। मैंने पूछा क्या रिश्ता है? ನಾನು ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ। फिर मैंने All right, Rahul Gandhi right there taking a jibe at Prime Minister Narendra Modi, and we'll get you more details on his visit to Kolar in moments from now. But for now, we're slipping to a very short commercial break. There's lots more coming up on the other side. Stay with us on India Today. You are watching India Today. As State of War Karnataka begins, a reminder who is the true number one. The 5 big voices speak to us before all the others, from Chief Minister Bommai to Chief Challenger Siddaramaiah, from old warhorse Yadurappa to muscleman DK Shivakumar and Kingmaker Kumaraswamy. When it's Karnataka, there's no competition. India's #1 election channel.
Why does this happen? Let me tell you the science behind it. For more informative videos like this, keep watching India Today News Mo. Kerala's public health, all political parties traveling from different parts. Armed with facts, Looking at political back. she takes the news by its horns. Do you think the future of these students are not hampered? Fierce, bold, and direct, setting the tone for the biggest stories from every corner and every angle. Expect nothing but the unfiltered truth. News first, niceties later. Watch me, Nabila Jamal, on India Today. Yet there's been a lot of talk about the money going to China because of the gap in valuations, reopening of China this year, etc. But how do you see these two? Because you track both carefully. But between China and India, what will suck in most of the emerging market capital which is coming back? You must remember, China has a number of advantages at this stage. As you know, China underperformed India dramatically in the last few years, and now it's beginning to turn. That's number one. Number two, the Chinese market is very large and very liquid. If you compare the market capitalization of China versus India, you'll see that there's a huge difference. So for the large institutional investors, they really don't have much choice but to go to China. So if they have a basket of emerging markets funds, they might put 10% in India and maybe 40% in China. So you can see that China is still very attractive from that point of view, and will continue to be so. Is oil a factor at all, Mark? Because, we have this issue of crude imports, and crude prices have started moving up once again. I mean, do you have a view that crude climbs above $100 once again? And if it does, where does that leave this India versus China question? Well, the good news for India is that they can get cheap crude from Russia as a result of what's happening in Ukraine. So I don't think that's going to have a big impact on India, even if crude does go up. Crude, of course, is not going to go down dramatically, that's for sure, because the demand for crude, the demand for energy generally, as you can see from coal prices, is still very high. But I think India will still be in a good position because of what's happening in Ukraine and the lower supply going to Europe and the higher supply going to places like India and China.
Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com. Why does this happen? Let me tell you the science behind it. For more informative videos like this, keep watching India Today Newsmo. Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com. You are watching India Today. Don Atiq feared son Asad's fate. Hail of bullets made his worst fears come true. 18 bullets end 40 years of Mafia Raj. The chilling murders caught on India Today cameras. Brave India Today reporters report as the bullets flew. जिस वक्त ये घटना हुई है आज तक ग्राउंड पर मौजूद था और कैमरामैन नीरज कुमार बहादुरी से इस पूरे कैमरे से रिकॉर्ड कर रहे थे कि विजुअल जिस वक्त गोली लगी है The fearless gold standard of journalism. The three shooters, Lovelace, Sunny and Arun Maurya, they are in police custody, but the bigger plan, who
funded them? Who paid them? What was the motive for the murder of Don-turned-politician Atiq Ahmed and his brother Ashraf? We'll continue to get to the latest on this big story. I'm Gaurav Sawant. As always, let's get started with the headlines on India Today. Don Atiq Ahmed and his brother Ashraf shot dead in a chilling execution. Atiq's killers caught chanting Jai Shri Ram on camera after murder, taken into custody. In a big confession to the Uttar Pradesh police, the shooters say they harbored ambitions of becoming mafia themselves. Say they wanted to be notorious. All the criminals have a history. BJP ticket Nataka explodes. Ex-Chief Minister Jagdish Shettar quits the BJP after being denied ticket for polls. Bomai says he tried every possible way to pacify him. Congress reaches out to Jagdish Shettar. Battleground Karnataka heats up after multiple delays. Rahul Gandhi is in Kolar, launches a scathing attack on Prime Minister Narendra Modi, says Congress works for the poor, Modi works for Adani. CBI heat on Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal in the Liquorgate case. Aam Aadmi Party workers staged massive protests in the national capital. BJP calls Arvind Kejriwal the kingpin of the scam. Atiq Ahmed's postmortem has been completed. Atiq Ahmed and Ashraf, their bodies are to be buried in Prayagraj. The postmortem was conducted by a panel of doctors. We are told it's also been videographed in detail. I want to cut across to India Today's Abhishek Mishra for more on the story. Abhishek, what more can you tell us? Yesterday we had information about 20 bullets. 20 bullets were fired. One hit, and that was visible on camera. One hit Atiq Ahmed in the temple. What more do we know? Well, absolutely, Gaurav. 20 round of fire happened last night on Atiq Ahmed and on Ashraf, and they both were dead on the spot. Also, it is very important, the development which is coming, that right now both the bodies are at the district hospital in Prayagraj, and there is a procedure of the post-mortem which has begun. Earlier, the bodies were sent for the X-rays, then came back, then brought back, and now the post-mortem procedure is underway. So that will take approximately 2 to 3 hours. And after fulfilling all the formalities, the legalities, the paperwork, we are expecting the body to reach here at the burial ground here where I am right now after 5 p.m. only. So that is something which is a development. But as far as this shootout is concerned, it's very shocking for the whole nation. The pictures, the live recording on India Today's cameras clearly is visible that what was the intent of these three shooters. The first bullet was hit on Atiq Ahmed, then the second one on Ashraf. Stay with me, we'll talk about this in greater detail and also try and find out who from the family will be here, considering one son was buried just yesterday, 2 sons are in jail, 2 sons are in a remand home, his wife is still absconding, but I'll come to you for that. But before that, Atiq Ahmed and brother Ashraf, as Abhishek was telling us, and we saw this on camera, Aaj Tak ke India Today cameras were right there, and it was caught on camera the way 20 bullets were fired at the Prayagraj hospital. The killing was caught on camera. That was the time when Atiq Ahmed and his brother were actually speaking to India Today's Samarth Srivastav. Sensational videos on your television screen reveal how this incident unfurled inside
Prayagraj's Motilal Nehru Medical College premises, where they were being taken for a routine medical examination after the recovery of 2 weapons. This is standard protocol. Now, indiscriminate fire was heard and seen on camera. That's screen number 2 on your television screen. Ashraf and Atiq both collapsed. Atiq had a headshot. Chief Minister Yogi Adityanath has held a series of meetings with top administration and police officers, and the Chief Minister Yogi Adityanath has ordered a 3-member judicial commission to be formed to initiate investigations, and regular updates will be submitted. Section 144 has also been imposed not just in Prayagraj but across entire Uttar Pradesh to ensure the situation does not go out of hand. The graveyard where Atiq and Ashraf are to be buried. Now watch these images, shocking images. This is where the 2 brothers dreaded was there. That's that weapon that comes in, and I'll tell you more about that weapon during the course of this broadcast. The first is a headshot, and all the policemen who were surrounding them actually melt away. They disappear, they run away. Of course, one policeman, he comes forward and grabs both these shooters, but that is after both the shooters had already put their hand up, and it seems there is some kind of a red thing that's trickling out of that policeman's mouth. Whether blood or pan, can't be too sure about that in Prayagraj, but that's the weapon that's lying on the ground. I once again want to bring in my colleague Abhishek Mishra for more on this story. So Abhishek, you were there, Samarth was there when the shootout was taking place. Is there now more clarity on the background of the 3 accused, Lovelesh, Sunny and Arun Maurya? Well, absolutely, Gaurav. But as far as the revelation on these 3 shooters is concerned, the police is not revealing much. But as per the FIR, has been made clear that their intention was to prove themselves a more powerful mafia than Atiq Ahmed, and that is what the police has to say. Although they were not much satisfied with the statement and the cross-checking of the statement of all these 3 accused or the shooters there. But also, what is important is that they did have find some background, criminal background as far as these 3 shooters are concerned, although they all were not related to each other. So that looks like that was it conspired in a way or there was something else to it. Moreover, when we have seen the footage and we were just outside the hospital, and as soon as the shootout happened, we rushed into the inside. We saw the blood over there and the kind of images, and it's on the camera that immediately after shooting Atiq Ahmed and Ashraf, all these 3 shooters surrendered on the spot, and they were like, we want to surrender. See, this kept saying surrender, surrender, and immediately the policeman took them. So that is something which clearly indicates that the intention was to shoot Atiq Ahmed and Ashraf, and that's what exactly happened there. Moreover, the investigation which is underway, CM Yogi Adityanath has set up a judicial inquiry for it. There's also clear indications and instructions to the top officials that the law and order situation should be intact in the whole Uttar Pradesh. And that is the only reason that immediately after this incident, after 12 in the night, CM ordered about the section 144 to impose. The patrolling has begun already, and today we have roamed around in every part, most of the parts of Prayagraj, and specifically the Chakia area, the courtyard area where we are, this area where the graveyard area where we are right now. It's all empty. Nobody is speaking. Nobody is coming on the roads. That Chakia area, which used to be flooded with people. Yesterday we saw the images of people coming, women coming to see Asad's funeral. In fact, that's one thing I wanted to ask you. Who were these women who came? But before that, for the benefit of our viewers who are joining us now, you have to see these images. We, of course, urge viewer discretion. This was the time when Atiq Ahmed and his brother Ashraf, they were being brought to the Motilal Nehru Medical College for routine medical examination, which is standard operating procedure once they'd been taken, in connection with the investigations to locate some weapons. They were brought in, they entered the hospital.
what transpired after that. And you can see India Today's mic, India Today's camera, India Today's Samar Srivastava and Neeraj Kumar, our video journalist. They were asking questions, and then what happened? Take a look. कुछ कहेंगे आप? कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहें भैया, किस बारे में कहें? सर कुछ कहेंगे? किस बारे में क्या कहें? आज आपको जनाजा हुआ था, आप लोग वहाँ गए थे कि नहीं? आज जनाजे में आप लोग गए थे कि नहीं? क्या कहना आप? कुछ कहना? मेन बात ये है कि गुड्डू मुस्लिम मेरा मोबाइल आज जनाजे में आप लोग गए थे कि नहीं? क्या कहना आप? कुछ कहना? मेन बात ये है कि गुड्डू मुस्लिम आज जनाजे में आप लोग गए थे कि नहीं? क्या कहना आप? कुछ कहना? मेन बात ये है कि गुड्डू मुस्लिम देखो देखो मेरा मोबाइल। अशरफ, आप लोग कुछ कहेंगे? कहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे? कुछ कहेंगे आप? कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहें भैया, किस बारे में कहें? सर कुछ कहेंगे? किस बारे में क्या कहें? आज आपको जनाजा हुआ था, आप लोग वहाँ गए थे कि नहीं? आज जनाजे में आप लोग गए थे कि नहीं? क्या कहना आप? कुछ कहना? मेन बात ये है कि गुड्डू मुस्लिम And now we will never know what Atiq Ahmed and Ashraf wanted to say when they began by saying, main baat ye hai ki Guddu Muslim, and that's when the shots rang out. India Today's Samar Srivastava was there. Our video journalist Neeraj Kumar, not only are they eyewitnesses, they've also captured this on camera. And look at their grit, their determination when gunshots were being fired, and not one, not two, not three, 20 rounds were fired. Anybody else would have run away. Policeman ran away from there, but our reporters stood their ground. They captured it all on camera, and not just one. They captured all the three shooters on camera. Listen in to their conversation. ये जो मोमेंट था आपने कैसे डिसाइड किया? नीरज, इंडिया टुडे से पूजा का सवाल आपसे है कि उस वक्त आपने ये डिसाइड कैसे किया कि आपको वहाँ से निकलना नहीं है, बल्कि वहाँ रहकर उन पिक्चर्स को, उन तस्वीरों को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करना? नहीं, हालांकि वो स्थिति बहुत वैसी थी, लेकिन इतने साल हो गए काम करते हुए, तो लगता है कि जो काम हम कर रहे हैं उसके प्रति एक डेडिकेशन भी होता है कि वो चीज़ें ना हो, और एक जो हम काम कर रहे हैं एज अ प्रोफेशनल वो एक जुनून होता है कि हम कहीं कुछ हमसे छूटे ना। जो काम जब हम स्पॉट पे हैं, अगर हम स्पॉट पे हैं तो हम जो बेहतर कर सकते हैं वो करना चाहिए। तो उस समय जो सबकॉन्शियस माइंड में जो था कि मुझे अपना बेस्ट करना है, तो ऐसा कोई बहुत, हालांकि स्थिति आप भी जान रहे हैं, सभी तितिर बितिर थे, लेकिन एज अ प्रोफेशनल मुझे ये लगा कि मुझे यहाँ डटे रहना चाहिए और मुझे हर वो शॉट कवर करना चाहिए जो मैं कवर कर सकता हूँ। डर नहीं लगा? हाँ, डर जैसी कोई चीज़ थी नहीं, और वो टाइम भी इतना शॉर्ट था कि इससे पहले कि आप कुछ सोचते वो एंड हुआ। और क्या बोलते हैं आप, मैं क्या बोल सकता हूँ, आपके सामने ही सरेंडर, हमारे सामने ही सरेंडर हो गया, तो लगा तुरंत चीज़ें कंट्रोल में आ गई। कंट्रोल में नहीं आ गई, जिस तरह से तीनों तरफ से फायरिंग चल रही थी, आप भी देख रहे थे, जिस तरह से तीनों तरफ से फायरिंग चल रही थी, तो वो गोलियां कहीं भी जा सकती थी। पीछे से चली, मैं अशरफ के बगल में था, आप उधर खड़े थे, पीछे से एक बंदा आया। बिल्कुल वो पीछे से गोली चली, और जिस पोजीशन में जैसे हम यहाँ खड़े हुए थे तो पीछे से फायर हुआ, और पीछे से फायर होकर वहीं से फायर होना शुरू हुआ। तो वो फायर हमारी तरफ था, मतलब मान लीजिए कि वो यहाँ पे पड़ा है, लेकिन फायर ऐसे हो रहा था, तो वो ऊपर भी हो सकता था, नीचे भी हो सकता था। तो 3-4 कदम पीछे लिया मैंने, अपनी पोजिशनिंग करी, कैमरे को जो हम अपने उसमें जो बेहतर कर सकते हैं वाइड एंगल किया, उसको खोला, और जैसे जैसे मुझे लगा कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए, उसके बाद मैं
You know, these are our brave reporters and video journalists. They weren't afraid of being shot at. They were very keen that we should not miss the shot, and they got the shot. They got all three shooters. They got the mafia turned political leaders, Atiq Ahmed and Ashraf, down on the ground, and they kept reporting. They kept reporting non-stop. We were all live till 2 in the morning. Samar Srivastav and Neeraj, the eyewitnesses, bullets were flying and they continued to report. This is Samar's first-hand account. It was 10:30 p.m. yesterday when 3 jeeps of Prayagraj police reached at this particular road. From that point where you will be seeing a barricade, if my cameraman Neeraj would zoom, from that area 3 police jeeps came in and stopped right here at this particular road with a hospital right there with the name Motilal Nehru Mandaliya Chikitsalaya Prayagraj, which is commonly called Calvin Prayagraj Hospital by the people of Prayagraj. And once the jeep was stopped here, Atiq Ahmed and Ashraf, number one, Ashraf came out first from this jeep, and then Ashraf, being a younger brother, gave support to Atiq, his hand, and then Atiq came in along with Ashraf. Then, moving from this point, come along with us. This was the point when Ashraf this side and Atiq to his right side. They started moving step by step inside this particular hospital where I am currently moving inside. So once after reaching at this particular point, India Today TV asked Ashraf and Asad. India Today TV confronted Asad and Ashraf right over there and questioned about his unavailability in the final rites of his son Asad. To which Atiq replied, "Nahi jaane diya to nahi gaye." This was not the end. 2 seconds after Atiq's statement, Ashraf started saying, taking the name of Guddu Muslim, and suddenly a gunfire happened. A shooter came from behind and smashed a bullet inside the head of Atiq Ahmed right over there. And then 2 other shooters came from this point of this area and they started bullet fire. 17 rounds of fire as per the police, and Ashraf and Atiq Ahmed dead right there. India Today TV cameraman Neeraj Kumar was right there along with me, Samar Srivastav. It was around 10:40 p.m. right there. It felt like a cracker bursting on a festival of Diwali, but seconds after we realized it is no cracker, it is the bullet gunfire firing. We had no idea at that moment that it is a targeted killing, that they are only targeting those 2 gangsters. And it's a big move by the Narendra Modi government on the back of Atiq Ahmed and Ashraf's shooting. Sources in the government are telling India Today that there's a directive from the Prime Minister's office and the Ministry of Home Affairs to prepare standard operating procedures to ensure safety of journalists. Steps are being taken after 3 shooters pretending to be journalists came close. They also had a dummy camera, a dummy mic, and that's how they gained proximity to mafia don turned politician Atiq Ahmed, and his brother Ashraf came up close and shot at Atiq Ahmed and Ashraf at point blank range, and 20 rounds were fired, killing the 2 on ground. You're looking at these images. These guys came pretending to be journalists, and this isn't the first time that something like this has happened. You'd recall when the Afghan warlord Ahmad Shah Massoud was killed just before 9/11. The Taliban shooters had pretended to be journalists even then, using a camera to gain proximity to Ahmad Shah Massoud and then killing him at point blank range.
क्या कहें भैया, किस बारे में कहें? इस बारे में क्या कहें? So who are the three shooters? While they claimed to be journalists, they pretended to be journalists. They carried a dummy camera, they carried a dummy mic. One of them also wore a media lanyard. But the three shooters have nothing to do with journalism. They've been identified as Lavlesh Tiwari. Lavlesh Tiwari is from Banda. Sunny Singh is from Hamirpur, and Arun Maurya, who's from Kasganj in Uttar Pradesh. They surrendered moments after killing Atiq and his brother Ashraf. Now, Uttar Pradesh police sources are telling India Today the shooters in the initial interrogation, they confessed that they actually wanted to be mafia dons bigger than Atiq Ahmed, and that is why they thought the moment they kill Atiq Ahmed in full media glare, they would be feared. All of them, of course, have a criminal background. It is evident that they had some kind of weapons training before they carried out this attack. They shot and killed Atiq Ahmed and his brother Ashraf at point blank range. How did they carry out this attack? Where did they get the weapons? They came on motorcycles. Where did they get those motorcycles? Who hired those motorcycles for them? There are several questions that the Uttar Pradesh police is still seeking answers to. They also carried fake cameras, mingled with journalists, and just as Atiq Ahmed and Ashraf came out of the police jeep and were answering questions, they first put a mic, came close to Atiq Ahmed, then whipped out a pistol and shot him and Ashraf in cold blood, immediately putting up their hands, throwing away their weapons, chanting Jai Shri Ram. The pistols that were used by them are made in Turkey. The cost of each pistol is 6 to 7 lakhs. Now, the father of Lavlesh says, he claims that his son is a drug addict. His son has also spent time in jail. Where did they get the money to buy weapons worth 6 to 7 lakhs? All of that now is a matter of investigation. देखो देखो मेरा मोबाइल अशरफ, आप लोग कुछ कहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे? थोड़ा कुछ कहेंगे आप? कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहें भैया, किस बारे में कहें? सर कुछ कहेंगे? किस बारे में क्या कहें? आज आपको जनाजा हुआ था, आप लोग वहाँ गए थे कि नहीं? आज जनाजे में आप लोग गए थे कि नहीं? क्या कहना आप? कुछ कहना चाहिए? मेन बात यह है कि गुड्डू मुसलमान So what more do we know of the weapon that's been recovered? It is a Zigana semi-automatic pistol. This is produced in Turkey. The first of these weapons were produced in 2001. This particular model is said to have been made in Malaysia. It's also made illegally, and this is where this story becomes very interesting. While this is a Turkish design, it's made illegally in several workshops in Pakistan. It fires different types of rounds and it has a 15-round magazine. This pistol, incidentally, is banned in India. It is a prohibited bore weapon, and yet these people had access to it. Now, there's another question that's being asked. The weapons that were used to kill Umesh Pal, those weapons had also been smuggled in apparently from Pakistan through the Punjab route. This is what initial investigation had revealed. Is this one of the reasons why Atiq Ahmed was also silenced? That ISI connection, the political patronage. There are several questions that remain unanswered. But let's also quickly listen in to the family members of these three shooters, Lavlesh, Sunny and Arun Maurya. The family members, near identical stories, saying we have nothing to do with them. They weren't staying with us anymore. Listen in. आपको कुछ जानकारी हुई है कि कल एक शूट आउट हुआ है, उसमें लवलेश का नाम बताया जा रहा है? हाँ, टीवी में देखा। कैसा है ये लवलेश और किस तरह से ये कैसे वहां पहुंच गया, कुछ जानकारी है आपको? हमें कोई जानकारी नहीं है ना, हम लोगों से इससे कोई मतलब नहीं। ये क्या घर में नहीं रहता था? ना। कब से प्रयागराज में रह रहा है ये? हमें नहीं मालूम।
अच्छा, यहाँ नहीं, ये घर में आखिरी बार कब आया था? ये 7-8 रोज 5-6 रोज पहले था हमसे। ये जो आपके ये भाई है, क्या नाम है उसका? सनी। क्या करता था ये ऐसे घूमता फिरता रहता सर। कुछ मामले भी दर्ज किया उसको? जी सर। कितने लोगों को दर्ज किया मालूम नहीं है सर। क्या भाई हैं आप लोग? हम 3 भाई थे सर, एक भाई खत्म हो गया मेरा। अच्छा जी। सनी कब से नहीं रहता है यहाँ? ये काफी दिन हो गए सर। सनी अपराधी कैसे बना? अपराधी सर जाके ऐसे ही जाके घूमता फिरता सर, बस फालतू के काम जाके अन्य बन और क्या। पहले क्या किया करता था? कुछ नहीं सर, ऐसे ही। अपराधी कैसे बना? कैसे उसने पहला कौन सा क्राइम किया? कुछ नहीं किया था, हमको नहीं मालूम सर। जाके हम तो अलग जाके रहते हैं ना, हमने जाके उसको जाके बच्चे ने जाके देखा नहीं है, बस छोटे थे जाके भाग गया था बस, और क्या सर। कल अतीक अहमद जो मारा गया उसमें आपके भाई का नाम शामिल है, आपको जानकारी है? जी हमको नहीं मालूम सर। And West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee's all-out attack on the Yogi Adityanath government. Mamata Banerjee says perpetrators in Uttar Pradesh are taking law in their own hands. There is brazen anarchy in Uttar Pradesh under Yogi Adityanath government, where criminals do not fear the law. In fact, TMC Minister Babul Supriyo had joined me on India Today, and he said exactly the same thing, that there is utter lawlessness in Uttar Pradesh. One day, an eyewitness in a murder case, Umesh Pal, is killed in broad daylight and bombs are hurled. And some days later, you have Atiq Ahmed and Ashraf Ahmed. Incidentally, both former lawmakers. Atiq Ahmed has been 5-time MLA from Allahabad. He's also been a member of parliament from Allahabad, from Phulpur. Phulpur, incidentally, is the same constituency that had sent independent India's first Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru, to parliament, and it also sent Atiq Ahmed to parliament. We're slipping into a quick break here, but don't go anywhere. Up next, we get you a first-person account. What exactly happened at the Motilal Nehru Medical College at Prayagraj when Atiq Ahmed and his brother were brought in for regular medical examination. India Today's Samar Srivastav reports and gets you his first-hand experience of covering a murder investigation and capturing on camera murder live. You are watching India Today. As State of War Karnataka begins, a reminder who is the true number one. The 5 big voices speak to us before all the others, from Chief Minister Bommai to Chief Challenger Siddaramaiah, from old warhorse Yadurappa to muscleman D.K. Shivakumar and Kingmaker Kumaraswamy. When it's Karnataka, there's no competition. India's #1 election channel. World 2000 is Miss India. So this is remarkable. This is the 5th time India has won Miss World. It all started with the Miss World crown in 2000, and the celebrity paved way for herself and is now recognized as a global icon. Priyanka Chopra was only 17 when she received the Miss World title, and 2 years later, she made her acting debut with Talapati Vijay starrer Tamiran. It was in 2003 when she stepped into Bollywood and was part of The Hero, love story of a spy, alongside Sunny Deol and Preeti Zinta. The Anil Sharma directorial emerged as one of the highest-grossing films that year. कि प्यार एक किस्म का हार्मोनल इम्बैलेंस है, पर रेशमा को मिलने के बाद ऐसा लगा that love is divine. मैं सोचती थी कि मेरी जिंदगी में ऐसा प्यार आएगा या नहीं, और तभी आप मिल गए. And one more magic happened.
Later that year, she even appeared in Andaz with Akshay Kumar and Lara Datta. Her performance was widely appreciated. मेरी बात सुनिए, क्या कर रही हैं आप? What's next? गाड़ी लाई है? Yup. कहाँ है गाड़ी? Yup. कहाँ है गाड़ी? I don't know. कहाँ है गाड़ी? चाबी कहाँ है? चाबी तुम्हें चढ़ गई है क्या? I think you're drunk. क्यों? You're drunk. Couple of outings that followed thereafter were unable to live up to the mark. She then made a comeback with Salman Khan and Akshay Kumar in David Dhawan's Mujhse Shaadi Karogi in 2004. The romantic comedy was a box office blockbuster. Sameer, I'm here, Sameer. Sameer. Stupid. Later that year, she played a rather unconventional role. Her villainous character amazed the audience and the actress was lauded for taking up complex roles in the early stage of her career. But her next few films were below par. You are watching India Today. Don Atiq feared son Asad's fate. Hail of bullets made his worst fears come true. 18 bullets end 40 years of Mafia Raj. The chilling murders caught on India Today cameras. Brave India Today reporters report as the bullets flew. जिस वक्त ये घटना हुई है आज तक ग्राउंड पर मौजूद था और कैमरामैन नीरज कुमार बहादुरी से इस पूरे कैमरे से रिकॉर्ड कर रहे थे कि विजुअल जिस वक्त गोली लगी है The fearless gold standard of journalism. I was on line of fire when I went down when bullets were fired, but few moments later, I, along with my cameraman Neeraj Kumar, was up to report. Dreaded mafia Atiq Ahmed and Ashraf were shot dead in Prayagraj hospital yesterday. 17 rounds of fire collapsed Atiq Ahmed and Ashraf completely when India Today TV is questioning both of them regarding the cremation of Asad. The visuals on your TV screens are enough to tell you the story, how India Today from ground zero recorded each and every round of fire to the surrender of the shooters against the Prayagraj police. CM Yogi Adityanath held high-level meeting in Lucknow 5KD and instructed all top cops to remain present in the sensitive areas of every district, while Section 144 has been imposed in Prayagraj and Uttar Pradesh as well. कुछ कहेंगे आप? कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहें भैया, किस बारे में कहें? सर कुछ कहेंगे? किस बारे में क्या कहें? आज आपको जनाजा हुआ था, जो आप लोग वहाँ गए थे कि नहीं? आज जनाजे में आप लोग गए थे कि नहीं? क्या कहना आप? कुछ कहना? मेन बात ये है कि गुड्डू मुसलमान
आज जनाजे में आप लोग नहीं थे कि नहीं, क्या कहना आप कुछ कहना हम दे देंगे। मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम आज जनाजे में आप लोग नहीं थे कि नहीं, क्या कहना आप कुछ कहना हम दे देंगे। मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम India Today's camera kept on rolling when gunfire happened. Here is the sequence how Atiq Ahmed and Ashraf shot dead. Ashraf, आप लोग कुछ कहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे? कुछ कहेंगे आप? कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहें भैया, किस बारे में कहें? सर कुछ कहेंगे? किस बारे में क्या कहें? आज आपको जनाजा हुआ था, आप लोग वहाँ गए थे कि नहीं? आज जनाजे में आप लोग नहीं थे कि नहीं, क्या कहना आप कुछ कहना हम दे देंगे। मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम I and my fellow video journalist Neeraj Kumar were present at the spot when gunfire happened and Atiq and Ashraf were shot dead. Listen in to the first-hand account of mine and my cameraman Neeraj Kumar. ये जो मोमेंट था आपने कैसे डिसाइड किया? नीरज, इंडिया टुडे से पूजा का सवाल आपसे है कि उस वक्त आपने ये डिसाइड कैसे किया कि आपको वहाँ से निकलना नहीं है बल्कि वहाँ रहकर उन पिक्चर्स को, उन तस्वीरों को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करना? नहीं, हालांकि वो स्थिति बहुत वैसी थी, लेकिन इतने साल हो गए काम करते हुए, तो लगता है कि जो काम हम कर रहे हैं उसके प्रति एक डेडिकेशन भी होता है कि वो चीज़ें ना हो, और एक जो हम काम कर रहे हैं एज अ प्रोफेशनल वो एक जुनून होता है कि हम कहीं कुछ हमसे छूटे ना। जो काम जब हम स्पॉट पे हैं, अगर हम स्पॉट पे हैं तो हम जो बेहतर कर सकते हैं वो करना चाहिए। तो उस समय जो सबकॉन्शियस माइंड में जो था कि मुझे अपना बेस्ट करना है, तो ऐसा कोई बहुत, हालांकि स्थिति आप भी जान रहे हैं, सभी तितिर बितिर थे, लेकिन एज अ प्रोफेशनल मुझे ये लगा कि मुझे यहाँ डटे रहना चाहिए और मुझे हर वो शॉट कवर करना चाहिए जो मैं कवर कर सकता हूँ। डर नहीं लगा? हाँ, डर जैसी कोई चीज़ थी नहीं, और वो टाइम भी इतना शॉर्ट था कि इससे पहले कि आप कुछ सोचते वो एंड हुआ। और क्या बोलते हैं आप, मैं क्या बोल सकता हूँ, आपके सामने ही सरेंडर, हमारे सामने ही सरेंडर हो गया, तो लगा तुरंत चीज़ें कंट्रोल में आ गई। कंट्रोल में नहीं आ गई, जिस तरह से तीनों तरफ से फायरिंग चल रही थी, आप भी देख रहे थे, जिस तरह से तीनों तरफ से फायरिंग चल रही थी, तो वो गोलियां कहीं भी जा सकती थी। पीछे से चली, मैं अशरफ के बगल में था, आप उधर खड़े थे, पीछे से एक बंदा आया। बिल्कुल वो पीछे से गोली चली, और जिस पोजीशन में जैसे हम यहाँ खड़े हुए थे तो पीछे से फायर हुआ, और पीछे से फायर होकर वहीं से फायर होना शुरू हुआ। तो वो फायर हमारी तरफ था, मतलब मान लीजिए कि वो यहाँ पे पड़ा है, लेकिन फायर ऐसे हो रहा था, तो वो ऊपर भी हो सकता था, नीचे भी हो सकता था। तो 3-4 कदम पीछे लिया मैंने, अपनी पोजीशनिंग करी, कैमरे को जो हम अपने उसमें जो बेहतर कर सकते हैं वाइड एंगल किया, उसको खोला, और जैसे जैसे मुझे लगा कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए, उसके बाद मैं उसमें I was a witness to this shootout. Here I share a brief account of what actually happened that night in that medical college of Prayagraj. It was 10:30 p.m. yesterday when 3 jeeps of Prayagraj police reached at this particular road. From that point where you will be seeing a barricade, if my cameraman Neeraj would zoom, from that area 3 police jeeps came in and stopped right here at this particular road with a hospital right there with the name Motilal Nehru Mandaliya Chikitsalaya Prayagraj, which is commonly called Calvin Prayagraj Hospital by the people of Prayagraj. And once the jeep was stopped here, Atiq Ahmed and Ashraf. Number one, Ashraf came out first from this jeep, and then Ashraf, being a younger brother, gave support to Atiq, his hand, and then Atiq came in along with Ashraf. Then
moving from this point, come along with us. This was the point when Ashraf this side and Atiq to his right side. They started moving step by step inside this particular hospital where I am currently moving inside. So once after reaching at this particular point, India Today TV asked Ashraf and Asad. India Today TV confronted Asad and Ashraf right over there and questioned about his unavailability in the final rites of his son Asad. To which Atiq replied, "Nahi jaane diya to nahi gaye." This was not the end. 2 seconds after Atiq's statement, Ashraf started saying, taking the name of Guddu Muslim, and suddenly a gunfire happened. A shooter came from behind and smashed a bullet inside the head of Atiq Ahmed right over there, and then 2 other shooters came from this point of this area and they started bullet fire, 17 rounds of fire as per the police, and Ashraf and Atiq Ahmed dead right there. India Today TV cameraman Neeraj Kumar was right there along with me, Samarth Srivastav. It was around 10:40 p.m. right there. It felt like a cracker bursting on a festival of Diwali, but seconds after we realized it is no cracker, it is the bullet gunfire firing. We had no idea at that moment that it is a targeted killing, that they are only targeting those 2 gangsters. Gangster turned politician Atiq Ahmed was shot dead in the MLN Medical College of Prayagraj. Gunfire took place for around 40 seconds. Around 17 rounds of firing left Atiq Ahmed and his brother dead on the ground. Here's the detailed report. 15th April, 10:35 p.m. Dawn-turned Neta Atiq Ahmed and his brother Ashraf, both accused in the Umesh Pal murder case, were being taken for a medical test. India Today's crew on ground, reporter Samarth Srivastav and video journalist Neeraj Kumar approached them for a soundbite. Ashraf, आप लोग कुछ कहेंगे? Atiq starts taking sharpshooter Ghulam's name, who was killed in an encounter just 48 hours ago along with his son Asad. This is when shots begin to fly. 3 attackers fire indiscriminately. Atiq is shot point blank as the shooters chant Jai Shri Ram. आधे घंटे से वेट कर रहे थे कि अतीक अहमद आएगा और हम लोग उसकी बाइट के लिए इंतजार कर रहे थे कि एक शब्द वो बोलेगा, और जैसे करना है, शुरू करते हैं। बिल्कुल, यहाँ से जैसे ही आप बात करना शुरू करते हैं और हम लोग पीछे पीछे जाते हैं, और जैसे ही बोलना शुरू करता है, जैसे ही अतीक अहमद और असद वो उसका भाई बोलना शुरू करता है, और एकदम से तड़तड़ाहट की आवाज आती है और ऐसे लगता है कि जैसे पटाखे दगने लगे। The shooters then put their arms up and are apprehended. They have what looks like media cards around their necks and carried a dummy camera and microphone. एफएसएल की टीम है वो यहाँ पर आई हुई है, और जो अटैकर्स थे उनके वेपन्स प्रदीप गुप्ता वो आपको दिखाएंगे। जो वेपन्स है उसकी तस्वीर वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट ले रहे हैं, और बाकायदा 3 बाइक से जो अक्यूज्ड है वो आए थे। अभी तक ये जानकारी मिली है, ये क्लियर है कि ये जो तीनों अटैकर्स थे वो मीडिया कर्मी बनकर के आए हैं। लीगल रिक्वायरमेंट के तहत में इनको मेडिकल के लिए लाया गया था, और मीडिया के लोग, पत्रकार जो है साथ में थे और बाइट ले रहे थे। इसी में प्राथमिक जानकारी के अनुसार 3 लोग मीडिया कर्मी बन के आए, और वो मीडिया कर्मी बन के उन्होंने वहाँ पे बाइट लेने का प्रयास किया। उसी के अंतर्गत उन्होंने ये इंसिडेंट हुआ है जिसमें उन्होंने फायर किया है।
Within minutes, the Don and his brother had fallen to the ground, dead and lying in a pool of blood. The three attackers who had been caught were quickly whisked away. Atiq Ahmed was shot dead 2 days after his son Asad was killed in an encounter in Jhansi, and just hours after his funeral, which the Don could not attend. Both lived by the bullet and died by the bullet. With Samarth Srivastav and Arvind Ojha in Prayagraj, Bureau Report, India Today. After the murder of Atiq and Ashraf, their graves are being dug in the same cremation ground where Atiq's son Asad was cremated, and they will be buried right next to their father and mother, and also to their son Asad Ahmed. Watch out our detailed report from the spot. Let me show you the visuals of the preparations for the cremation of Atiq Ahmed and Ashraf. Now, this is the this is the spot where Asad's body was buried under the soil yesterday, and it's not even 24 hours when the preparations are being done for the cremation of Atiq Ahmed and his brother Ashraf. And you can see how these has been this couple has been dig just near to the Asad's one. You can see the police personnel who are there in front of them. This preparations are being made. Now, what has been said that the cremation of Atiq Ahmed and Ashraf is expected late evening. Although there is no official confirmation about it, that could only is possible after the the postmortem which is happening. All three shooters who killed Atiq Ahmed and Ashraf came with a motive. As per the sources, they wanted to become a bigger mafia than Atiq Ahmed. They posed as a journalist, came with a dummy camera and a mic ID, and came in between few journalists along with India Today TV. And when questioning started, when media persons started questioning Ashraf and Atiq, suddenly they started gunfire. They came on bikes, and after the arrest, during the interrogation to police, they accepted this crime, and also they surrendered after 17 rounds of firing. देखो देखो मेरा मोबाइल अशरफ, आप लोग कुछ कहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे? कुछ कहेंगे आप? कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहें भैया, किस बारे में कहें? सर, कुछ कहेंगे? किस बारे में क्या कहें? आज आपको जनाजा हुआ था, आप लोग वहाँ गए थे कि नहीं? आज जनाजे में आप गए थे कि नहीं? क्या कहना आप? कुछ कहना? मेन बात ये है कि गुड्डू मुसलमान Let's listen in to the families of shooters, like what they have to say about the entire shootout. आपको कुछ जानकारी हुई है कि कल एक शूट आउट हुआ है, उसमें लॉलेस का नाम बताया जा रहा है? हाँ, टीवी में देखा। कैसा है ये लॉलेस और किस तरह से ये कैसे वहाँ पहुँच गया, कुछ जानकारी है आपको? हमें कोई जानकारी नहीं है ना, हम लोगों से इससे कोई मतलब नहीं। ये क्या घर में नहीं रहता था? ना। अच्छा, कब से प्रयागराज में रह रहा है ये? हमें नहीं मालूम। अच्छा, यहाँ नहीं, ये घर में आखिरी बार कब आया था? ये 7-8 रोज 5-6 रोज पहले था। हमसे घर से किसी कोई चीज से मतलब गज नहीं, आता था अपना नहा धो के, जब भी 4-6 रोज में आता था नहा धो के अपना निकल जाता था। कोई ना किसी चीज से मतलब था। अच्छा, प्रयागराज ये आता जाता था, ये आपको बताता था कभी? ना, कभी हमसे बातचीत नहीं हुई। पूरा मोहल्ला बता सकता है, पूरा घर बता सकता है, हर आदमी के हमसे लोगों से कोई मतलब गज नहीं थे।
सालों से बोलचाल बंद है। जब उस लड़की की थप्पड़ मारा था, उसका एक केस चल रहा है। कौन सा केस? अरे एक बिटिया को थप्पड़ मार दिया था इसी चौराहे में, उसका मुकदमा चल रहा है। फिर क्या हुआ था? उसमें जेल गया था? हाँ, उसमें जेल गया था। तो जमानत से कब छूट के आया था? अरे हमको याद नहीं, साल 1.5 साल पहले की बात है। अच्छा, अभी ये 5-6 दिन पहले यहाँ घर से निकला है जी। क्या करता है वैसे, क्या काम है इसका? कुछ नहीं, काम नहीं, नशा करता है। नशेड़ी आदमी है, इसीलिए मेरे को सब लोगों ने त्याग दिया है घर से, बहुत पहले से। अच्छा, कितने भाई बहन हैं ये? 4 भाई। 4 हैं। बहन नहीं है। ये सबसे बड़ा है? नहीं, तीसरे नंबर का है। एक मिनट थोड़ा। अच्छा, ये बताइए कि अभी आपको जो ये जानकारी कैसे हुई कि कल ये भी साहब मिलता शूट आउट? टीवी देख रहे थे अभी। कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या कहेंगे हम कि जैसे उसने जो वारदात को अंजाम दिया है? क्या कहेंगे इसमें, हम कहने लायक क्या रहे, शब्द हैं कि हमारे पास कुछ। पढ़ाई वढ़ाई किया था इसने? हाँ, इंटर किया। इंटर के बाद छोड़ दी? हाँ, बीए कर रहा था, बीए में फेल हो गया। इस समय कुछ नहीं करता था? कुछ नहीं। क्या किसी लोगों के साथ इसकी संगत थी जो ऐसे लोग और आते रहे हों इनके साथ? लड़का है का, जब हमसे कोई मतलब है गजने तो हम क्या बताएं कि किसकी संगत थी, कौन सा था। ये जो आपके भाई है, क्या नाम है उसका? सनी। क्या करता था ये ऐसे घूमता फिरता रहता सर। कुछ मामले भी दर्ज किया उसको? जी सर। कितने लोगों को मामले दर्ज? मालूम नहीं है सर। क्या भाई हैं आप लोग? हम 3 भाई थे सर, एक भाई खत्म हो गया मेरा। अच्छा जी। सनी कब से नहीं रहता है यहाँ? ये काफी दिन हो गए सर। सनी अपराधी कैसे बना? अपराधी सर जाके ऐसे ही जाके घूमता फिरता सर, बस फालतू के काम जाके अन्य बन। और क्या पहले क्या किया करता था? कुछ नहीं सर, ऐसे ही। अपराधी कैसे बना? कैसे उसने पहला कौन सा क्राइम किया? कुछ नहीं किया था, हमको नहीं मालूम सर। जाके हम तो अलग जाके रहते हैं ना, हमने जाके उसको जाके बचपन जाके देखा नहीं है, बस छोटे थे जाके भग गया था बस। और क्या सर? कल अतीक अहमद जो मारा गया उसमें आपके भाई का नाम शामिल है, आपको जानकारी है? जी, हमको नहीं मालूम सर। My colleague Siddharth Gupta has sent a report from one of the shooters, Lavlesh Tiwari's house in Banda. Watch out. देखिए, हम इस वक्त बांदा जिले के शहर कोतवाली इलाके के केवटरा मोहल्ले में मौजूद हैं, जहां लवलेश तिवारी यानी जो कल प्रयागराज अशरफ और अतीक हत्याकांड में जो व्यक्ति शामिल था, उसमें बताया जा रहा है कि ये इसी इलाके का रहने वाला है। मैं कैमरा पर्सन के माध्यम से दिखाना चाहूँगा, ये वही गली है जहाँ पर वो रहता है। ये सामने ठीक जो लाल कलर का ये मकान देख रहे हैं, इसी पे किराए से ये लवलेश रहना है या उसका परिवार रहता है। मैं बता 4 से 5 दिन पहले पिता के मुताबिक यहाँ से अभी गया है और ये पूर्व में एक किसी मामले में यहाँ से जेल भी गया था, इसका उसमें केस भी चल रहा है। Politics has also erupted over the Don's murder. SP Chief Akhilesh Yadav has questioned this particular thing and even claimed lawlessness in the state of Uttar Pradesh, while Asaduddin Owaisi is targeting the Saffron Party for actions regarding one particular community only, while BSP Chief Mayawati is also slamming the Uttar Pradesh government for this shootout in the posh Prayagraj locality, even inside the medical college. उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार रूल ऑफ लॉ के तहत सरकार को नहीं चला रही है, बल्कि रूल बाय गन को चला रही है। और ये पिछले 2017 से जब से बीजेपी की गवर्नमेंट बनी, ये सिलसिला चल रहा है। कि कभी आपने देखा कि कोई व्यक्ति कचहरी पे पेश होने को आया हो, उसको रात के 10 बजे मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जाए? दोनों व्यक्तियों को हथकड़ी लगी हुई थी। हथकड़ी की डोर किसके हाथ में थी? पुलिस के थी। कहीं भाग भी नहीं सकते, कहीं हाथ नहीं हिला सकते। तो सीधे ये एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, सुनियोजित तरीके से हत्या की गई है। दिन दहाड़े पुलिस के बंदोबस्त में हत्या हुई है तो ये गंभीर बात है ये, लेकिन पुलिस के घेरे में अगर हत्या होती है किसी गुंडे की भी, तो ये लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है।
पहचान गए हैं? बोल नहीं सकते। Look at this Sarah's screen, jumping with immense joy after meeting its friend after a hiatus. The bird spread its wings, tried to find a way out of the space to meet Mohammed Arif, while he was patiently standing outside the bird's enclosure, eagerly waiting to meet. The Sarah screen was found by Arif in August 2022 in an unconscious state, lying injured and bleeding. Arif rescued this endangered bird and nursed it back to health. Soon after, the bird began following Arif everywhere, wherever he would go and whatever he would do. But Arif's friendship with crane suffered a jolt when the forest department said that keeping the bird was illegal. The officials took the bird away to Kanpur Zoo. उसे आज़ाद कर दिया जाए और किसी भी जो है जो पक्षी विहार होता है जहाँ अपनी आज़ादी से पंछी रहते हैं वहीं उसको जाके ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो जैसे पहले रहता था वैसे रहने लगे. This beautiful and heartwarming story proves that true love really knows no bounds. Bureau Report, India Today. Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com. Watching India Today. Bullets flew or cameras rolled. Inches away from point-blank killing. 2023's biggest crime story plays out live. The bloody end
of gangster Atiq Ahmed. Up close with terrifying gangster Raj. Fearless, unstoppable, अब जब जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं जहां अतीक और अशरफ को गोली मारी गई थी, unmatched. जो हम काम कर रहे हैं एज अ प्रोफेशनल वो एक जुनून होता है कि हम कहीं कुछ हमसे छूटे ना. India's #1 crime reporters. अगर गोली पार करती तो शायद मुझ पे लगती या मिस करती तो मुझ पे लगती. दूसरा शूटर जो पीछे से आता जहाँ नीरज कुमार कैमरा लेके खड़े थे उससे अगर वहाँ मिस होती तो नीरज कुमार को गोली लग सकती थी. मैं उधर से कम 2-4 कदम 5 कदम पीछे जाता हूँ. वो पूरी घटना मेरे कैमरे में कैद होती है. जो मेडिकल कॉलेज जहाँ पर मैं हूँ और ये देखिए यहाँ पर पिस्टल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर. Nobody reports crime like India Today. India Today's fearless reporters on Ground Zero will continue to get you the latest on Don Atiq Ahmed and his brother Ashraf's killing and much more. I'm Gaurav Sawant. As always, let's get started with the headlines. Dreaded mafia Don turned Neta Atiq Ahmed and his brother Ashraf shot dead in a chilling execution. Atiq's killers caught on camera chanting Jai Shri Ram. In a big confession to the Uttar Pradesh police, the shooters say they harbored ambitions of becoming a mafia bigger than Atiq Ahmed and wanted the killing on camera to make a name for themselves. BJP's ticket Nataka explodes. Former Chief Minister Jagdish Shettar quits the BJP after being denied a ticket for elections. Basavaraj Bommai says he tried his best to pacify him. Congress reaches out to the former BJP Chief Minister. Battleground Karnataka heats up after multiple delays. Rahul Gandhi is in Kolar, launches a scathing attack on Prime Minister Narendra Modi, says the Congress works for the poor, the Prime Minister works for Adani. CBI heat on Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal in the Liquorgate case. Aam Aadmi Party workers stage a massive protest in the capital. BJP calls Arvind Kejriwal the kingpin of the liquor scam. Dreaded mafia Don turned politician Atiq Ahmed and his brother Ashraf were shot dead late Saturday night. Let me get you the top developments in the investigation so far. So Atiq and his brother were shot dead as they interacted with the media. This happened around 10:35 Saturday night. By 10:36, both the brothers were dead. Atiq Ahmed was shot at point blank range. One bullet to the temple and multiple others. A total of 20 rounds were fired at the gangsters. All three attackers surrendered after the murder. They chanted Jai Shri Ram while firing. They have been identified during initial investigations. They said they carried out the attack as they wanted to be bigger mafia than Atiq Ahmed. Atiq Ahmed and his brother Ashraf's graves are being dug in Prayagraj. On the 13th of April, Atiq Ahmed's son Asad was killed in an encounter in Jhansi and was buried in Prayagraj on Saturday morning. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath is actively monitoring the situation. The Chief Minister chaired back-to-back meetings with senior administration and police officers. He's also ordered a judicial inquiry. A 3-member judicial commission is to probe the matter. A massive political war has erupted after the murder. Opposition has slammed the Yogi Adityanath government, saying the law and order situation in the state has collapsed. AIMIM chief and member of parliament Asaduddin Owaisi claimed Atiq Ahmed was attacked because of his religion. The BJP has hit back.
On the instructions of Prime Minister Narendra Modi, the Ministry of Home Affairs has been tasked to prepare standard operating procedures for safety of journalists. The step is being taken after 3 shooters posed as journalists to kill gangster-turned-politician Atiq Ahmed and his brother Ashraf in Prayagraj. The murder most foul was caught on camera, and we will get you those images. Atiq Ahmed and his brother Ashraf, they had been taken out of prison. They had been taken as part of investigation.